जैसे स्टार्ट होगा आपके स्क्रीन पे YouTube ऑनलाइन लिखा हुआ आ जाएगा। आ गया है। It's already is there. Shall we start? Yes, start. अब एक जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। You give me view whenever it will start. Okay, with the permission of principal sir, shall we start it? Dr. Satel, shall we start? हम स्टार्ट करें? Dr. Satel, shall we start? Yes, please start, madam. We are online. Please start. Okay. Hello, namaskar, good afternoon to all. I am Dr. Poonam Bhandari, Organizing Secretary of the International Content in Physical Education, and Sports, which is being organized by Shahid Mangal Pandey Government Girls PG College, Madhupuram, Meerut, under the patronship of Dr. Vandana Sharma, Honorable Director, Higher Education, Uttar Pradesh, and under the guidance of Dr. Dinesh Chand, Principal, Shahid Mangal Pandey, Government Girls PG College, Meerut. I, along with my senior coordinator of the event, Dr. Lata Kumar, Associate Professor, Department of Sociology, Dr. Radha Rani, and the organizing team, on behalf of my college, welcome all the esteemed guests from different parts of the world and all the viewers on YouTube who have joined us. Today is a special day. Today happens to be the International University Sports Day. So it's a special day, and it's good that we are organizing this event on this day. So to seek the blessings of Ma Saraswati, let me invite my friend Dr. Radha Rani for Ma Saraswati Vandana. Ma'am, please. And it's good that we are organizing this on this day. Dr. Radha Rani, over to you for Vandana. हम स्टार्ट करें? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज इस शुभ दिन पर मैम को पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ। कृपामयी देवी सरस्वती वीणा पाणी पालय मां। गुरु कृपामयी देवी सरस्वती वीणा पाणी पालय मां। गुरु कृपामयी देवी सरस्वती वीणा पाणी पालय मां। बुद्धिजाड्यं दूरीकृत्यं तं सह सिन्धु मे अभर्त्वं ज्योतिर्मार्गं दर्शय देवी वीणावादिनी पालय मां। गुरु कृपामयी देवी सरस्वती वीणा पाणी पालय
धवला धवलांबरा शारदा वीणा मंडित करा ज्ञानदा वरदे देहि परम्य देवी वीणाधारी देवी सरस्वती वीणा पाणी पाले वीणा पाणी पाले वीणा पाणी पाले. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर राधा. हम सभी के प्रयास सफल हो, हम सभी सफलता के नए परचम फैलाएं, ऐसी माँ सरस्वती से सभी की ओर से वंदना. एंड नाउ फॉर द फॉर्मल वेलकम ऑफ द गेस्ट, डॉक्टर लता कुमार जी, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी एंड द कोऑर्डिनेटर ऑफ द इवेंट. मैम प्लीज, डॉक्टर लता कुमार. थैंक यू पूनम. सुमन अर्पित हैं, सुमन के गुच्छ प्रस्तुत हैं. सुमन अर्पित हैं, सुमन के गुच्छ प्रस्तुत हैं. आपके आने से हम सब आज हर्षित हैं, आपके आने से हम सब आज हर्षित हैं. अंतरताना के माध्यम से जुड़े हमारे सभी सम्मानित अतिथि, वक्ता, हमारे प्राचार्य, हमारी संरक्षक उच्च शिक्षा निदेशालय से प्रोफेसर वंदना शर्मा, YouTube के माध्यम से जुड़े हमारे सभी प्रतिभागी, आप सभी का मैं लेफ्टिनेंट डॉक्टर लता कुमार, वेबिनार कोऑर्डिनेटर के रूप में महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ. स्वागत की है परंपरा और स्वागत है संस्कार, स्वागत की है परंपरा और स्वागत है संस्कार. आप सभी ने स्वीकारा आतिथ्य, आप सभी ने स्वीकारा आतिथ्य, आपका स्वागत बारंबार, आपका स्वागत बारंबार. हमारे मध्य अपने प्रभावी और विद्वत व्याख्यान हेतु मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर गुलाब सिंह रोहल जी का, जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं. डॉक्टर धीरेन्द्र झजारिया, एसोसिएट प्रोफेसर LNIE ग्वालियर से, आप एक्सरसाइज फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर. लेफ्टिनेंट डॉक्टर श्याम नारायण सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष शारीरिक शिक्षा विभाग, SDPG कॉलेज मुजफ्फरनगर से, और आप PFI से उत्तर प्रदेश संभाग के अध्यक्ष हैं. आपका बहुत बहुत स्वागत है इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में सर. लेफ्टिनेंट डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी, सहायक प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा, सरस्वती PG कॉलेज हाथरस से हमारे बीच उपस्थित हैं. सभी महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ. हमारे इस वेबिनार से जुड़ेंगे डॉक्टर अर्चना चहल, प्रोफेसर और विभाग प्रमुख शारीरिक शिक्षा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से. मैं आधिकारिक रूप से आपका भी मैम यहाँ पर बहुत स्वागत करती हूँ. आप जब भी हमारे बीच जुड़ेंगी मैं आपका स्वागत करती हूँ. अंतर्राष्ट्रीय मंच से हमारे बीच जुड़ेंगे हमारे सम्मानित अतिथि और वक्ता के रूप में डॉक्टर राकेश तोमर जी, शारीरिक शिक्षा विभाग से, किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम मिनरल्स, सऊदी अरबिया से. सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप जब भी हमारे बीच उपस्थित होंगे मैं आधिकारिक रूप से आपका यहाँ बहुत स्वागत करती हूँ. डॉक्टर श्रद्धेय राठौड़ जी, प्रवक्ता मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, ऑस्ट्रेलियन कैथोलिक यूनिवर्सिटी सिडनी से, ऑस्ट्रेलिया से हमारे बीच अभी आई थिंक उपस्थित नहीं है, लेकिन जब भी हमारे बीच जुड़ेंगे मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस मंच से करती हूँ. महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपका अभिनंदन है, स्वागत है. डॉक्टर GS रोहल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. मेरे बड़े भाई हैं और एक हमारा लंबा संबंध है, बहुत पुराना. इस मंच पर आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ हैं.
आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज समय की मांग और उपलब्धि है, आज समय की मांग और उपलब्धि है, अंतर ताना एक्चुअली मैं मैडम अभी एक जर्नी में हूँ, ऑन द वे हूँ, अभी गाड़ी से ही मैं मोबाइल से कनेक्ट किया है जी। अभी ड्राइव कर रहा था मैं अभी। एक फ्रेंड है मेरे, उनको दिया है मैंने अभी, तो मैं अभी ज्वाइन किया है। जी जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। मांग और उपलब्धि है, आज समय की मांग और उपलब्धि, अंतर ताना का आभास, योजन दूरी रही नहीं अब, योजन दूरी रही नहीं अब, ले आया हम सबको पास, ले आया हम सबको पास। इन शब्दों के साथ आपका बहुत स्वागत है भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। स्वागत आपका। हमारा जैसा कि आज विषय है कंटेम्प्रेरी ग्लोबल सिनेरियो इन फिजिकल एजुकेशन, योगा एंड स्पोर्ट्स हमारी वेबिनार का विषय है। और निश्चित तौर पर आज इस विषय पर बहुत ही गंभीर और उपयोगी व्याख्यान हमारे सामने आने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही विद्वत मंच हमारे साथ जुड़ा हुआ है और बहुत ही सारे हमारे विद्वत प्रतिभागी भी हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं। उन सभी का मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में बहुत स्वागत और बहुत अभिनंदन करती हूँ। हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि तंदुरुस्ती हजार नियामक है, यानी जो हमारा स्वास्थ्य है वो हमारे लिए ईश्वर की बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और भी हम सुनते आ रहे थे कि जो पहला सुख है वो निरोगी काया होती है। तो निश्चित तौर पर ये जो शब्द हैं इनको हम आगे बहुत दूर तक ले जाने वाले हैं और इसको आप सभी विद्वजनों के माध्यम से हम लोग सुनेंगे और कहीं ना कहीं इन सब चीजों से हम सीखेंगे, क्योंकि जीवन है, शरीर है, स्वस्थ है, तो हम बाकी सब चीजों को भी कहीं ना कहीं जो है उनसे आनंद ले पाते हैं, उनको महसूस कर पाते हैं, उनके प्रति कार्य कर पाते हैं। तो शारीरिक शिक्षा, योग और खेलकूद ये सब हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग है। और इस विषय पर ये जो वेबिनार होने जा रहा है, अभी हम आप सबकी बातों को, आप सभी के विचारों को, आप सभी के जो अनुभव हैं उन सबको सुनेंगे और बहुत दूर तक जाने वाले हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार है। और जैसा कि हमारी आयोजन सचिव डॉक्टर पूनम भंडारी ने बताया कि बहुत एक लंबी संख्या में प्रतिभागी यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में एक बार पुनः सभी का बारंबार स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। स्वागत आपका। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर लता। ये डॉक्टर लता कुमार हमारी सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर, हमारे वरिष्ठ प्राध्यापकों में से सबसे पहले इनका नंबर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर बीइंग विद मी टुडे। और बड़े हर्ष का विषय है कि जैसे आपने भी अभी कहा कि हमारे साथ लगभग 1000 रजिस्ट्रेशन इस वेबिनार के लिए अभी तक हो चुके हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी अच्छी बात है, सुखद बात है। So the main motivation for conducting this webinar came from the present challenges due to pandemic and how physical education, sports and youth can be more beneficial for the masses. What is its present portfolio and what else we can learn from it in near future. So to make this world a better place to live in. So for this online session today, we have in total 7 eminent speakers. As our first speaker, sir has right now here joined us. As our first speaker, we have Dr. Gulab Singh Dhugalji, Sports Director, CCS University Meerut with us. As our second speaker, we would be having Dr. Rakesh Tomarji. He would be speaking on sports culture in higher education. Then we have Dr. Virendra Jhajaria ji from LNIT Gwalior, followed by Dr. Shraddhe Rathod from Sydney, and he will be speaking on fitness for elderly. Then at our fifth moderator, we have proud company of Professor Archana Chahalji from Central University, Allahabad, followed by a presentation by Dr. S.N. Singh ji, President UP Chapter of PEFIC. And as our seventh speaker, we have with us Dr. Satendra Singh from Saraswati Degree College, Hathras. So without taking much time, let me invite our first speaker, Dr. G.S. Ruhal ji. Ruhal sir, on my personal behalf, on behalf of my college, I once again welcome
Dr. this Poonam? platform. Yes, sir. हाँ जी sir. Yes, Dr. sir. Poonam, if it is possible, Rakesh has joined or not? Yes, sir. He's already with us. He joined us. Okay, if you want, I can invite. Because Rakesh. I'm on the way. Okay, fine, sir. Fine, sir. I'm on the way. No problem. It's So, take okay, sir. 15 to 20 minutes to reach my venue. I'm reaching. No problem, sir. So, Sir, we have our second speaker also and third speaker also. if it is Whenever you possible, be comfortable, you just invite let me know. Dr. Yes, sir, Rakesh. it's possible. Okay, fine, sir. Okay, so as the first presenter with permission of Dr. Gulab sir, as the first presenter for this session, we have Dr. Rakesh Tomarji. Let me briefly introduce him to the viewers we have. Going through his biodata, believe me, it's all full of woos and wows. Dr. Rakesh Tomar, presently working at Physical Education Department, King Fahd University of Petroleum and Minerals, Saudi Arabia. 22 years of teaching experience, including Arunachal Pradesh, NNIT Gwalior, South Africa, USA, and now Saudi Arabia. A diligent researcher in the field with extraordinary research scientist award at his credit, Northwest University, South Africa. He happens to be a national level athlete in 800 meters and a proud cyclist. He has conquered mighty Hardungla Pass by cycle, which is the highest motorable road in the world. Coming to this. List is very long and time is limited. In short, we are really proud to have shared this virtual platform with you, sir, today. Today, you'll be talking about sports culture in higher education. So now, sir, Dr. Rakesh, it's over to you. Dr. Rakesh Tomarji. Yes. Thank you so much, Dr. And thank you so much for inviting me to this wonderful webinar. And it's a very wonderful day also today that we are having International University Sports Day. And just before I begin, I would like to again thank you, and also my gratitude to Dr. G.S. Ruhalji, who has always thank you, sir. Thank you so much. And the entire organizing team led by the principal of the college, Dr. Dinesh Chandji, who is there, leading the organizing team and promoting. And it's a very good that we can see the principal of the college is there, and this is a very great, again a great moment, for all people involved in sports and physicians that the authorities are behind this such a wonderful event. So thank you so much, Dr. Dinesh Chandji. And all my fellow, learned speakers who are with me, the Dr. Birendra Jhajaria, Archana Chahalji, and who others are, who will be joining, later on in the program. So without taking much time, since we have very short time, for presentation, so let me just quickly go to my screen and share my screen with you all. I hope everything is okay. Okay, great. Dr. Rakesh, Dr. Rakesh. Hello, yes, sir. Hello. Namaskar, sir. Good morning and welcome. Thank you so much, sir. Thank you so much. Good morning and welcome. And I'm sorry, I'm on the way. I'm going to Agra actually. Okay, I will be there when you reach. I will be there. I will stay back, till you reach there. Okay, so my today's actually there is a issue of connectivity. So I'm sorry. I asked her to invite you first before me. I'll talk later. Thank you very much, and thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. I will keep listening to you. Wish you all the best. Always. Thank you. My pleasure, sir. Okay, go ahead. Okay, so my topic of today's presentation is sports culture in higher education, time to act now. And what a, as I said, what a coincidence that we are having this, this webinar, and my topic is, on a day when we are celebrating International Sports Day, at the world level. So as you can see here, this is, like UNESCO has declared, this day as an International Day of University Sports.
and which is very important. I always feel that university sports and universities are very important, any nation, any country. And my experience, like even where I am working, and whenever I travel abroad, I can see that universities are actually a place for innovations, place for, like in every field, including the sports. So, and that's what, we want our youth, to be active. And if you want to spread this message of sports, or maybe the message of, living a physically active, and a healthy life, it has to be, through our university. And how we can develop this university, sports culture in our university is, that's what I'm going to, deliberate in next, 10 minutes or so. So why should we have, at first instead, why should we have a sports culture, in university? The question comes. And the first and foremost reason is, of course, there are many reasons which we can list, but the first and foremost reason is to have a physically active citizens. And I don't think anything is more important, to any nation than, having their their citizens as physically active. And we have learned this during this coronavirus pandemic for last 6 months. We have realized, we have understood, not only, like India, basically everywhere in the world has understood and realized how important physical activity is for us. And we know that the people, those who are physically active, those who are, involved in exercise program, they are in a better position to fight this, this coronavirus. And so that's why developing a sports culture in university and higher education is very, very important. Other than this, of course, there are many other things which we know that, the sports, when when the people play sport, they get themselves involved in exercise and all, they develop values. It gives us a lessons, and the lessons from Michael Jordan, we all know, how, his story is so inspiring, and again, his story, again tells us that we should never give up. So that's what you get again from the sports. And that's what you want in the youth of the nation, to never give up and always aspire, and, go higher, in their, in the prospects. Then fundamentals, we all know that fundamentals are very important, not only in sports, on physical activity, but every aspect of life. And that's what the sports teaches us, to focus on the fundamentals. And once your fundamentals are right, then everything will fall in its place. So that's very important. That's what all these lessons I'm sharing basically from the very inspiring story of Michael Jordan. And I think most of us know. And maybe I'm sure Dr. Virendra Jhajaria, who is a basketball player, he must be inspired, from such legend. And of course, the success, we all know that, the success is, that's what you, and sports always, for me, I never see sports as a failure. Whenever you do any exercise, or whenever you play any game or sports, whatever it is, you always succeed. There's nothing like a failure in sports. You always, achieve something. You may lose like to another team. That's the official status of when you play a game. Okay, I lose but you always win. Like, for example, if you play basketball and you score 70 points and you lose by 20 points to other team, but you scored 70 points, right? So you succeed in scoring 70 points. So there's always a success, which comes with the sports and which comes with, any sort of physical activity, basically. And of course, the commitment you get from the sports is commitment. And that's what, if we have seen, the ultra marathon runner, Jack Bitter, he run 100-meter miles, like 100 miles, on the treadmill during this pandemic. So that shows the commitment, that if you're committed towards exercise, if you're committed towards physical activity, no matter what the conditions are, you will do it and you will follow, your passion and dedication. So there is an example again from one of the 5th, grade child from US, that she has to run 800 miles, in a school year, but because of the pandemic, she could not. So she decided to run, that required distance around her house, along with her father. So once you are on your goal and you are dedicated towards that, again, any condition, whatever conditions are there, you will follow it, and you will lead to your dreams. So that's what the sports teaches us, and that's why I say that let the 21st century be the century of university sports. So let us promote sports. We need to promote this idea and tap one of the largest untapped reservoir of talent available in universities. In universities, there's a lot of talent, not only in other subjects, but also, in the sports, and physical education also. So we have to untap, those reservoir of talent, through various programs. And I'm sure, some policies which have been recently, are in the same direction.
And what IOC thinks, this is again what's happened, what has happened, globally, basically at, in this last 2-3 months, probably this is this agreement between the International Olympic Committee and World Health Organization has been signed in the month of May, where these both organizations, WHO and IOC, they signed and they come to a joint statement that promotes health through sports and physical activity. That's a very big statement. I think all our university authorities, vice chancellors, the stakeholders, those who are involved, they should understand that once IOC and WHO they make a statement that we should promote health through sports and physical activity, it assumes a lot of importance. It's a very heavy-weighted statement, and we'll see a lot of new things happening post-pandemic around the world, especially in this direction. And also the president of IOC, he gave one statement that sports can save lives. Very important, again, these are all single liners, but they will have a lot of meaning when going down to the lowest levels. And also the sports can also prevent, helping us to prevent incommunicable diseases. We all know the beneficial effect on the NCDs, but now they are moving forward and saying that it will have a beneficial effect in prevention of communicable diseases also. And this is very alarming situation, and that's why we should promote sports culture at university level in higher education. WHO estimates that 1 in 4 adult is not active enough. So that's that's a big percentage, and that's why the new partnership between IOC and WHO will bring together the sports and health sectors at international, regional, and national levels to reach the global goal of increasing physical activity by 15% as set out in the Global Action Plan on Physical Activity. So again, things will be changing in coming years. Now, what we can do? What's the next? So of course, an important thing is that we have to develop the sports culture in university. We have to focus on the regional culture. This gives us belongingness, and last and most important is reach to each concept. And we can achieve these things, by having few things, in our, institutions, like we should preserve our sports heritage, preserving the sports legacy, creating sports museums. I always say every university should have a dedicated sports museums, not like a sports hall. We should use the word museum. When you use the word museum, it leave a long-lasting impact, on the people, and it create, a positive, positive vibes among the youth of the universities. And of course, sports exhibitions, which are already, taking place at many levels. So just by giving a representation of sport in the media may not be enough and may not lead to favorable contribution. Sports culture not necessarily mean playing sports. It's not that you have to just, play a, very, like a structured and in rules and regulation. When we say sports culture means, it could include all kinds of acts, all kinds of morals, products which are related to sports, or even the behavior, the sports behavior. So a well-known fact is that sports is a social phenomenon which is influenced by both social and cultural settings. So remember this social and cultural settings. And that is why it becomes pertinent to integrate the sports culture with a regional or more specific to a local culture. So when we integrate, the sports culture with a regional culture or a local culture, then it gives a sense of belongingness to the people, to the youth, and you can promote this idea, in more efficient way. So when we integrate sports culture with a regional culture, it will lead to transformation into a society. The society gets transformed. So generally in society, people like watching sports. They like, they like talking about the sports activities than doing or playing sports. So we talk about sports, we watch sports, but the problem is, are we doing or not? Are we playing? That is more important. So therefore, we have to change this approach. And this can be achieved by development and promotion of sports culture in universities. Sports and sporting activities actually reflect characteristics of society. Therefore, as I said in the previous slide, also traditional and local games. So, and now if you see the new policy in India, NEP 2020, there's a lot of focus on traditional and local games. So this can help to create again a vibrant sports culture, in universities.
and why we have to integrate the local culture with the the sports culture with the local culture is because you can't have a same model for entire country. So we should adopt a model according to the regional requirements, according to the regional aspirations of the youth. So students should feel belongingness to the programs offered to them, and once they feel that it belongs to them, then they will continue it, and they can even continue it for the life. So there is another idea to develop and promote sports culture is to establish sports museums in the universities. And we know that museums are the place where our heritage and legacy is preserved. So therefore, why not preserve sports heritage and legacy in universities in order to bring attachment and promotion of sports culture? So this sports museums basically can provide place where we accumulate and revive our memories. So let's use the word museums and bring more attachment of the youth towards the sports. So this will allow youth in universities to enrich their knowledge, enjoy the legacy, and it will be an effective medium to transfer sports culture to the future generations so that we can have a sustainable sports culture in universities. So there is another important aspect to develop sports culture at universities, which is the transfer of sports heritage. Sports heritage can bring, again, sustainability in sports culture. Sports also represents national legacy, so which we get from the past. So sports legacies can also contribute in building sports culture in universities. Sports is very much connected to society, and when we develop sports culture, we bring both universities and society together on one platform in a more engaging and effective way. So involvement of society is again very important if you want effectively to develop sports culture in university. Another thing is that we have to bring, when we talk about the proper structured sports, then we should bring more professionalism to university teams. So we should have a team of skilled staff. We have to find ways to bring sponsorship for university teams, and the role of media should be explored to promote sports event. And remember, any program, if it is not enjoyable, whatever program you offer, if it is not enjoyable, it cannot be incorporated into daily life, and it will not be easy to be followed for a longer period of time. So the sports program should be able to generate enthusiasm and necessary interest among youth. The program should be accessible to students so that they can embed it into their lifestyle. And these programs must add value to their lives. Then only they will be able to carry it forward for the life. And we want them to carry them for life. So this interest in sports should not be casual and of least priority. And for this, we need more structured programs in our universities. The sports culture in the universities, as I said before, it has the power. It has the power to translate the sports culture to the entire country. And that's what we want. So youth at universities are full of energy and new ideas. So just if you give them one concept, and they will come up with so many ideas how to implement it. So if they understand, so important thing is to make them understand and convince. So if they understand the value of sports and their concepts are clear, they can act as a great ambassador to spread awareness in society. So we have to channelize the energy of youth in right direction through sports culture in universities. And again, in the last few slides, we have to change the approach of followers and doers. That's what we have to change. As a major characteristics of modernity in sports, the followers have gradually and massively outnumbered the doers. So there are more followers in sports than there are the doers. So one does not have to play even 1 second of football in one's life to develop into a highly knowledgeable football fan. And so we don't need followers. So we need more doers than followers in sports in university in particular. And there are some major obstacles also there. Of course, there are many, but one of the major obstacles is that we need to host major international tournaments at universities. I don't know. I know it is difficult, but it can be. It is possible. It will take some time, but we have to move in that direction. So we have to develop universities as a hub of international events. So this can be done by having a better sports infrastructure and facilities, and both in terms of quality and quantity. Now we have so many professional leagues, going on in different games and sports. So why can't universities can be home ground for these professional leagues? Of course, for that, for this, you need infrastructure, development. But that's where we have to think and move in this direction. And the last one is mass participation.
along with the, we are focusing on elite, but other than focusing on elite sports person, we have to focus on mass participation, and reach to each student is necessary to develop sports culture in universities. Sports, as I said, not necessarily means playing a specific sport. Sports may refer to exercise. Sports may be just a means of doing any exercise for the promotion of health and health in masses. So we should not aim to reach only specific section of students in universities that we have few teams and that's all. It's not like that. We have to focus, we have to involve each and every student of university. And why only student? We should focus on each and every teacher also. Every teacher, every staff should get, access to living a physically active and healthy life. So we should focus on reach to each and everyone through mass promotional exercises. Now, before I, end my talk here, I'd just like to give an example where I'm working. I'm working in a King Fahd University of Petroleum and Minerals. This is a purely engineering university. But to surprise for all of you, we are offering compulsory 4th semester of physical education and sports program for all the students. Any student who has to graduate from the university, he has to undergo 4th semester, of physical education and health education programs, and which is included in their grades. And that's very important. Every engineer, who graduate from my university, their grades in PE classes is added in overall GPA, and that's why they take all those things very seriously. So we are doing it in our university. We are promoting physical education and sports by making physical education compulsory in their curriculum. And so why not everyone do that? So let's talk, let's change, and make university sports embedded deep inside our life. So with these words, I would like to conclude my talk here. Thank you so much for giving me this opportunity, Dr. Poonam Bhandari ji and Dr. Gulab Singh Ruhal sir. Thank you so much, sir, for listening and giving me this chance again. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you very Wonderful much, Dr. Rakesh. Wonderful talk. Nice to hear your thoughts. And definitely, sports has been a culture of humankind, has the potential to lead us to excellence. Sir, we have picked Dr. Rakesh. Yes, ma'am. Okay, we have picked a question from the viewers for discussion. And the question is, I'm asking in Hindi because the question is asked in Hindi. So, आपने बहुत अच्छे लेवल की साइकिलिंग की हुई है, एज आपने कौन सा पास है, खारदुंगला पास, जो कि सबसे हाईएस्ट रोड है पूरे विश्व भर में, आपने उसको फतेह किया है. You have done a good level cycling. So question is that how we can pursue cycling as a competitive sport, especially in India, क्योंकि अभी जो हमारे यूनिवर्सिटी में जो हमारा यूथ है वो स्पोर्ट्स के प्रति बहुत जागरूक तो हो चुका है, लेकिन कॉम्पिटिटिव साइकिलिंग और सिर्फ साइकिलिंग को एज अ फिटनेस लेवल पे करना, इसको मींस हाउ वी कैन परस्यू इट. Yeah, very actually to be how we can pursue cycling as a sport, competitive sport. Poonamji, before he answered the question, let me tell you, he is a marathon runner. Still, he is running marathons. Yes, sir. I introduced him. I know, sir. So, sir, Rakesh, thank you. Yeah, actually, as Dr. Gulab Singh Ruhal Sirji has said that, I'm a marathon runner and that's my passion, that's my profession. Cycling, if you don't believe me, this Khardungla Pass, this is after 32 years, I have first time. 32 years के बाद मैं पहली बार साइकिल मैंने टच की थी जब मैं मनाली पहुंचा था, without any preparation. So after 32 years, मैंने कभी गियर साइकिल अपनी लाइफ में नहीं देखी, गियर साइकिल होती क्या है. So बेस कैंप पहुंच के मैंने वो साइकिल टच की है, और अगर मैंने खारदुंगला को फतेह किया है तो it is all just the pure conviction and with my self confidence which sports gives us. हम जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, मुझे पता है कि मैं मैराथन रनर हूं और मैंने स्पोर्ट्स किया है, तो साइकिलिंग क्या चीज है हमारे लिए. So it's all about the conviction, So why I'm saying is that because you asked me a question, how can I pursue my competitive cycling? So if you want, अगर आप चाहते हैं कि आपको साइकिलिंग में अपना कैरियर परस्यू करना है, तो सबसे पहले आप अपने आप को कन्विंस कीजिए, आप समझिए कि आप करना क्या चाहते हैं, आपका गोल क्या है, और वंस यू कन्विंस्ड एंड यू डिसाइडेड कि ये मेरा गोल है, फिर उसको आप पूरी शिद्दत के साथ निभाइए. और अगर आप उसमें लगन से लग गए, ऑनेस्टी से लग गए, तो साइकिलिंग क्या चीज है, आप तो इंटरनेशनल पहुंच जाएंगे. So it's all depends upon योर कन्विक्शन. So this is what I learned from the sports.
Of course, facilities नहीं है अभी. If you look at in the country, there are not much facilities, but still we still have facilities. ऐसा नहीं है कि हर जगह नहीं है, लेकिन बहुत जगह पर है. आप दिल्ली में जाएंगे और बहुत, मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है साइकिलिंग के बारे में कहाँ पर फैसिलिटीज है, बट इंडिया में still we have facilities. And once you decide, you will find the way. There are so many people here. Dr. Gulab Singh Ruhal ji हैं, मेरिट यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं. वो आई एम श्योर he is the right person who can guide the students कहाँ जाना है, किधर जाना है, कैसे करना है. So the basic thing is आप अपना फोकस कीजिए and अपने आप को कन्विंस कीजिए, honestly pursue कीजिए, and you will find your ways. Okay, thank you, Dr. Rakesh. Thank you very much once again. So, गुलाब सर, आप हम सभी के गुरुजी हैं. आपने कहा था कि पहले राकेश सर बोलेंगे, तो अभी सर वीरेंद्र इज रेडी विद हिज स्पीच. तो आपकी परमिशन हो तो मैं वीरेंद्र. ओके फाइन सर. आई विल झाझरिया जी को बोल दो. हाँ, ओके फाइन सर. हाँ, वीरेंद्र झाझरिया जी को बुला लो. फाइन सर. वीरेंद्र सर, यू आर विद अस. ओके, अगेन excellent cyclist with us. So many fit people all around today. So as our next speaker we have Dr. Virendra Jhajaria ji, excellent orator. I myself have heard him so many times. He is associate professor in Department of Exercise Physiology, LNIT Gwalior. More than 16 years of teaching and training experience. Excellent orator. As a source person on varied platforms with more than 30 published research papers. He has coaching diploma in general conditioning from Hungary. He is a national level sports person and a professional squash player, and represented India in South Africa in 2016 in squash. For his sports promotion, he was awarded Major Dhyanchand and Gulab Utkarsh Khel Ratna Award in 2015 and 2016. Again, a great cyclist, as I mentioned before. Having Super Randonneur Award of Odox Club to his credit for completing 200 kilometers, 300, 400 and 600 kilometers cycling expedition in 2019. Commendable, sir. Very nice job done. Pleasure to have you here, sir. And now over to you, Dr. Viren, for your presentation. Sir, please. Thank you very much, ma'am. Am I audible? Yeah, perfectly. Okay, so it's a wonderful thing that I am sitting with all my seniors. Super seniors are there. Madam, you are my senior. Satendra sir, SP Rathod sir is my immediate senior. So, and everybody is here. So I am feeling very homely. So first of all, I would like to congratulate the organizers for having this excellent webinar on this special occasion of International University Sports Day. And I would like to thank the principal, Dr. Dinesh Chand, who is constantly sitting in this webinar from the beginning. Thank you very much, sir, for calling me and inviting me. I'm seeing Dr. Lata ma'am and all the invited guests, Dr. Rakesh Tomar, my teacher, and special thank to Dr. Poonam ma'am for scripting this whole webinar. So as time is very less, I have been asked to talk for 15 minutes. So I'm quickly sharing my screen. Yes, the screen is visible, ma'am. Yes. Yes, Virendra, we can see your screen. Okay. Thank you very much. So, thank you very much to the Sahid Mangal Pandey Government Girls College, and you have organized this international webinar in collaboration with Physical Education Foundation of India on the theme Contemporary Global Scenario
in physical education, yoga and sports. So Dr. Rakesh just talked about the culture of sports in university system. So I'll be focusing my talk on specifically on physical education. So I'll be talking on contemporary global scenario in physical education. Means my talk will be only related to physical education. We know that we are going through this pandemic, and one of the greatest positive advantage of this pandemic is everybody has now learned and understand the importance of our health. We are now more focused about our health, about our nutrition, and specifically the exercise regime. Everybody has started participating in some or other way in exercise regime. It may be walk, it may be run, it may be cycling, maybe yoga or dancing, whatever the form is there, but everybody has started something. Those people who were not doing, who were sitting in the office and coming back and not doing their sedentary life, they have also understand the importance of physical activity and physical education. So this is wonderful thing. WHO also has recommended different guidelines for primary kids. WHO has recommended 30 minutes of physical activity per day, and for upper primary or middle school, WHO has recommended 45 minutes of daily physical activity. That is the minimum they have recommended. And for high school and secondary school, 1 hour of physical activity, that is the minimum requirement, is set by WHO. So why everybody is concerned about sports? Because we are going through this pandemic, and sport is an important tool for our personality, because education, earlier the concept was कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन खेलने कूदने से भी और पढ़ने से भी इन दोनों का अगर मिक्स हो, then also you can have a good personality. That's how आजकल जितने भी engineers हैं, you are seeing in engineering field, in software field, they are asking the experience of some sporting background, because that's an important integral part of the personality. So physical education has become now the need of the hour. Even as Dr. Rakesh also talked about the new education policy. New education policy has recognized the importance of physical education and have given due importance in its draft. This is a study that was done in 2010 and 11, which says the children born in early part of this millennium are known as I generation. I generation means internet generation. So, but that I generation is now shifting towards physical activity, because internet, sitting on the internet and doing daily tasks on the internet is not fulfilling your health requirements. So today we'll be talking on these 4 aspects. This present status of physical education in India, will be highlighting few aspects. Then across the world, what is going on in physical education, will be taking few countries, what is what they are doing in their respective countries. Then we'll be talking about components of ideal physical education program में क्या चीजें होनी चाहिए. Then we'll put certain suggestions and recommendations on the basis of these things. Now, if we talk about Indian condition, that there is a lot on nomenclature differences. We say BPEd, MPEd, and BSc in physical education. So I'm just highlighting. The other speaker will be talking in greater detail on this. Then we have we don't have a uniform curriculum. Then we have limited quality physical education institutions. If you ask your child, and if you ask your students that which college or university you should study in India, so you will have on tips. If you go to other field, you go to management field, you ask for MBA, you ask for engineers, you ask for medical line, you have n number of institutions where you can go. But in physical education, you have very limited options where you can get quality education.
Then inclusion of compulsory physical education curriculum in school and higher education. Both in school and higher education, we do not have the compulsory physical education. We are doing it from class 10 to 12. That is okay, but from the beginning, from the very inception stage, we do not have a structured physical education program. Then availability of trained faculty and support staff is not available, whether it is on ground and whether it's on theoretical aspect. We don't have good supporting staff. Even the faculty, they don't have training after their job. Means like if you go to IITs, IIMs, they continuously train their faculty. So that should also be, that is also missing in Indian scenario. Objective assessments are there, but these assessments are always challengeable. So we should adopt some criteria when we can enhance the objectivity. Then placement is another issue. Those degrees which we are providing, they have a placement issues. Our students, they are getting jobs, but they are not paid that in comparison to other fields. So the placement is another aspect that India is lacking in our physical education field. So what other countries are doing? Let us take an example of China. They have recently introduced new physical education policy. The old PE curriculum was its sports performance oriented criteria. They were having sports performance oriented criteria before, but now new curriculum puts the emphasis on health and fitness. Means sports performance is required, but at the same time we should more focus about health and fitness, so that the particular child can live a healthy life with a strong personality. So which can be reflected in the change of name. Like earlier they were having the name of the policy was physical education, but now the name has changed to physical education and health. So health component has incorporated in China. The new concept, the concept of new health physical education curriculum requires PE teachers to change their professional perspective and pedagogic approaches. Means they need to also upgrade themselves. They need to change what they were doing before and what is the requirement of the present situation. So a great shift is required, and that has China made some changes. Now let us take the example of Germany. They have a special focus on the long-term community-based intervention project, Healthy Children in Sound Community. Again, they have focused on long-term development of their child, in which health is a prime component. A unique curricular program for primary school children. They have again talked about the grassroots level sports. That's why they have focused and developed a unique curricular for primary school children. Because when your base is strong, you can have a strong building on that. And it also includes monitoring system that I talked about, the assessment part. A stringent monitoring system for motor and health development and social well-being of children. Continuous assessment of children on the aspect of their physical health and on the aspect of their mental health has incorporated in the German physical education policies. Let us talk about the Hungarian policy. Hungarian policy I have seen very closely because I have been there for almost more than 3 months. I did a diploma from there, from Budapest. So I found that Hungarian physical education can be considered as one of the best physical education in the world. So what are their focus area? Daily physical education from beginning to high school. Means from beginning means when the child enters to the school in the class of nursery or under KG classes, and to the when they pass out from the school. So they have a structured program from the beginning to end. Along with other adapted physical education, they also have introduced adapted physical education
in India also we have adapted physical education, but the difference between India and Hungary, they have more practical oriented approaches in their curriculum. In India, we have adapted physical education as a subject. We do little bit of practicals, but more practical approach is required in adapted physical education. Next is in Hungarian physical education that I have seen personally, compulsory activities to be upgraded in the next stage. Like I give you an example. I was sitting in the gymnastic hall in Budapest during my course. So there was exam going on. A teacher was conducting the exam, and there was an event to climb the rope. One girl, she climbed the rope twice, but she couldn't get success. So the teacher said, fail, come next year, because it is a compulsory event. So we need to have some, because climbing a rope develop your shoulder strength, your arm strength, your abdominal strength. It is required. So it is required that the child, when goes to the next stage, the minimum bare strength is required. So we should have, we can incorporate such things like compulsory activities to upgrade to the next stage. Next is, let us take an example of Kenya. It's a small country. Currently, the physical education curriculum for school is developed centrally by the Kenyan Institute of Education. The teaching of physical education in school is mandatory but not examinable. Means they have the physical education curriculum, they have compulsory physical education program, but they are lacking in examination system. So that is a lacuna at their part. They are not conducting exam to measure the physical education. Now let us take the example of Mexico. Mexico is a place where you will have high number of diabetic and hypertension. These are lifestyle diseases, and having prevalence of overweight and obesity across the world. सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाई जाती है. So they again have understood the need of physical education and sports. So different health models has been incorporated, and innovation in the physical education profession are being implemented at school level. And they have incorporated with families, with the communities. So they have not only concerned about the students, they are concerned about their faculties, they are concerned about the families, community, staff, everybody, in order to promote more and active people. The purpose is everybody should be active. So these are the few different scenarios that is going across the world. Now let us talk about an ideal physical education program. What are the basic requirements of ideal physical education that is gathered from different sources? One is age appropriate. Whatever activity, whatever classes you are planning, that should be age appropriate. Our Sports Authority of India and Ministry of Youth Affairs and Sports is running a program, community and PE coaching program. In that they have talked about age appropriate activities. Means every shoes cannot fit for everyone. So same way, a particular activity that is suitable for me is not suitable for you. So for structured for that, almost 8 to 10 years before, we have developed a program that is known as PEC card, physical education cards. It was designed age appropriate, different activities for primary classes, for middle classes. So similar things can be incorporated in schools. Then movement education at the initial level is very important. That should be incorporated in our PE programs. Then sports education is required. Sports science, as we know that whatever top performance we are seeing, that because of the involvement of sports performance. So sports science education is required. Then fitness should be incorporated. Proper fitness assessment should be there. Health and nutrition education is required. Nutrition education we have few topics in our syllabus if you go through the 11th and 12th class syllabus, but it should be incorporated from the beginning itself. Then a active school concept is a wonderful concept. Active school are those schools
in which your students are participating in activity, your staff, your teachers are participating in the activity, and sometimes you are calling the parents also. They are also participating in the activities. Next, how you can make your school active? You can you can make your corridors active. You can do some marking on your corridors. So when students are passing through those areas, they will automatically do certain kind of activity. The ultimate purpose is to get the 1 hour active sporting time that is recommended by WHO. So if you are not getting from your regular PE period, you should do in your free time. Then integrate with educational outcomes. जो भी आप class अगर उनको अगर if you are teaching something on the field, that if you can correlate with your classroom teaching, so that can help you in your PE program. Then it should be inclusive. Inclusive means adapt those child which are gifted child. Those child which are disabled term is not used these days. They are gifted. They are lacking in some ability, but they are good in certain other abilities. So how to involve them? Every child is important. That should be the concept. Then regular assessment and feedback is required, whether it's a fitness, whether it is skill or health. A health, just few days back, we talked about this concept. Like you, after the end of your semester or your year, you are getting a report card in your hand that you got this much marks in your in mathematics. This is in science. Similar way, you should get a fitness and health card in which you will be giving grades on your fitness. Okay, so this is another concept that should be incorporated in an ideal PE program. Then as this pandemic has come, so online physical education and sports activity should be promoted. That is the need of the hour. So this is the last slide I'm talking about. So if you want to conclude from these, we can say the current trend in physical education instruction has focused on fun and team sports. Means child should come to your class voluntarily. It should not be forced. So first and foremost, we should provide an opportunity to the child that he should come and play. And next is it should be fun oriented. And next is more on getting children healthy. Your plan, your curriculum should be providing a healthy atmosphere for the child. The inclusive program, which require everyone to be active, are the biggest shift in physical education today. Means we want that child should be active. That is that should be the prime focus for physical education in today's scenario. Then we should have a structured and uniform PE curriculum that I talked about. Then objective and stringent assessment criteria should be included so that the student and parent and teacher, everybody should know the level of the students in their fitness and in their health aspect. Parent teacher association is much required these days, because it is not the job of a teacher to convince the student to take part in physical activities. Same, if the parents and teacher both are convincing the child, then only the child will take part in physical activity. Then involvement of classroom teachers, that pack cards I talked about. There are another, like if you go to London, they have TOPS card. Similar on the similar lines, we have developed this physical education card. So that they are available online. If you type in Google pack cards, you will get cards, age appropriate activities. You can get on your internet, and they can be used. The next important aspect is health, hygiene, and nutrition. It is important that should be incorporated. Age appropriate, I talked about. Then an important area is infrastructure and funds. We have very less part of GDP is given to education. Now the government has said that they will be giving 6% of its GDP to education. So
that I don't know when it will come into effect, but right now we are having almost 3 to 3.5% of fund given to the education, and that is to the total education. It's a school and college and university system, and what we are getting for physical education and sport, that is a different aspect. So infrastructure is required and fund is required so that we can think of a good PE program, a healthy PE program, so that our generation can become healthy. So I finish my talk with this quote: whatever has happened is happened, yesterday is gone, tomorrow has not yet come. So we plan our today. We have only today with us. Let us begin, let us do something productive so that our future, the future of the country, the future of our children can be better. Thank you very much. And with this, thank you very much, organizers, for giving me this opportunity. If you have any questions, please. Dr. Poonam. Surrender, sir. Dr. Poonam. Very nice presentation, Dr. Jhanjaria. Thank you, Ruhal sir. Thank you. आज मैं क्या असल में रास्ते में आगरा पहुंचा हूं अभी। जी दिख रहा है सर। आगरा मैं रास्ते में था अभी बीच में, अभी मैं आगरा पहुंचा हूं। तोमर सर मैं रुहल सर के बारे में भी बताना चाहूंगा कि इन्होंने भी पिछले साल लगभग 20 kg अपना वेट रिड्यूस किया है, तो दैट इज अ कमेंडेबल थिंग। वापस वहीं आ गया। बहुत बढ़िया सर। ऐसे आई थिंक आई कैन सी आपकी जो फेस से थोड़ा लग रहा है शायद कि आपने काफी कम किया है, एंड दिस इज वेरी गुड स्पेशली फॉर मी, फॉर पीपल लाइक मी लाइक हु प्रमोट दिस थिंग्स। सो आप अगर कर रहे हैं तो ये किया है आपने, बहुत बढ़िया है। इट्स वेरी गुड न्यूज। मैं क्या है, पैंडेमिक से पहले मेरी साइकिलिंग चल रही थी, मैं करीब 40 किलोमीटर पर डे कर रहा था। ओके। अभी पैंडेमिक में थोड़ा कम हो गया है, वापस वेट इंक्रीज हुआ है। Yeah, that's बहुत बढ़िया है। That's very great. I can see that Birender is there, you know, you are there. We three, like, we are from the same field and we all want to live a physically active life. And that's, we have to be role model for, you know, the people. हम कल जो आप कन्विंस कर पाएंगे। कल जो आप बात कर रहे थे ना, लोग क्या कैप्सूल की तरह काम करते हैं। Yes. उसमें भूल जाते हैं, फिर वो कंटिन्यूटी नहीं रह पाती लोगों की, और हम भी उन्हीं में शामिल हो जाते हैं। Okay, Dr. Poonam, Virender Jhanjaria is waiting for the question. Okay, I'm so sorry, it was a technical hitch. So it was very nice, though I couldn't hear it properly. The whole, it was very interesting. Yes, ma'am, please. Virendra, you represent LNIP, prestigious LNIP. So a question भी मैं आपको हिंदी में पूछूंगी, because this question is from the viewers, okay, from a student probably. क्या जो हमारा अभी का present curriculum है, does it fit our uniqueness as a nation? Because most of the things I think we have copied from the other nations across the world. So जो हमारा present curriculum है, क्या ये हमको fit करता है हमारे socio economic conditions को देखते हुए, cultural जो हमारी conditions इसको देखते हुए, does it fit to us? And how LNIP as an institute can contribute in a more better manner in this regard? So this was a question for you, sir. Over to you. Okay, thank you very much, ma'am, for a very genuine concern that I also have discussed in my talk. A uniform curriculum is required across the country. We are having different, if you go to state, you will find differences in the syllabus and curriculum. So LNIP is constantly upgrading its syllabi, its curriculum, and like we have started almost 6 to 7 years before this teaching practice in theory. Earlier it was on ground
only. Yes. But now we have started for theory also, that is getting a huge response and appreciation across the country, and students are also getting good motivation and good experience through that. And few things still I feel that can be incorporated. Lot of things are required, means government should be involved in that, because providing a uniform curriculum, all the state bodies, all the national our national body should sit together. Now this NCERT has developed a syllabus, uniform syllabus, but it is not followed everywhere, because we have 2 years courses, we have 4-year courses, we have 3-year bachelor's program. So a one curriculum is not setting in all situations. But first and foremost, we should have, like if you go for engineering, if you go for medical science, you have structure, whether 3-year program or 5-year program. So we have to decide, like in our new educational policy, they have recommended 4 years of graduation. Yes. So that we are running in our institute. So if other universities are also, or other state bodies also incorporate 4 years of bachelor's programs in physical education, so we can have a unified syllabus across the country. And I have been part of many syllabus review committees. We are constantly upgrading the syllabus by seeing what other countries are doing and what is the need of the hour. We recently have incorporated sports management and sports journalism in our event management in our curriculum, and we are also thinking on skill development part, how means students are motivated to develop their skill in developing different training modules, developing different etc. So this is we are doing, and we can take suggestion from the panelists. I can see Shraddha Rathod, my immediate senior, sitting from Australia, and Gulab sir and Rakesh Tomar sir can also contribute on this particular question if they want, sir. See, Jajaria ji, is very, very good that the LNIP has started teaching practice in theory classes. I want to add one thing. This the students should given the chance to be internship also during the courses. Sir, we have we have started already in internship program. Means Right. The 4th year student, they go for 45 days of internship, and now we are upgrading it to 6 months. Means Very good. Yes. So Very good. Another things I want to tell you, that recently the new policy has come, and LNIP has to play a vital role in the new policy, because if you see the draft, I'll come in my presentation now. I'll show you what are the lacunas in the draft and what are the responsibility has come to the physical education fraternity, and the role model will play by the LNIP. If now you will not wake up, then you will go behind. The physical education word is very, very less used in the draft of the NEP. Yes. If you just read the draft, they have more given emphasis on the sports. So sports and physical education, I understand it goes side by side. We cannot separate between the two, but foundation and the base is physical education, and that to be from the grassroots, and that has to be understood by the physical education teachers and physical education fraternity, those who are involved in framing the syllabus for coming new policy. So be careful. The LNIP play the vital role in this, and keep your eyes on that. I hope that you are in the more core committees in the syllabus and all. So please take care of this for the future of the profession. I'll let you know what are the lacunas and what are the. I have given some recommendations also in my presentation. Let it come to me. Okay. Thank you. Thank you, sir. Dr. Viren, yes, ma'am. कुछ और बोलेंगे आप? नहीं, thank you, ma'am. बस मैं बताना चाह रहा हूँ कि sir, your suggestions are always well taken, and will definitely the institute is doing its part. I have given one slide.
I have given one slide, recommendation slides. Please take the screenshot. You can add many more things on that. Yes, My sir. suggestions I'll do that. particularly, I'll do as that. far as my experience is concerned, and what is the present scenario of the physical education in our country. Sir. And you are in Poonam, the core committee of the syllabus framing with the LNIP and NCRT. So my humble request will, the frame, whatever the curriculum will be framed now, it will decide the future of the profession. Yes, sir. Definitely, sir. Definitely. So Poonam, Understood. Thank you very much, Dr. Brain. It was so informative and so interesting talk we had and then discussion also. Thank you to you. And thank Dr. you for Poonam, being. हाँ जी मैम। डॉक्टर पूनम भंडारी, प्रोफेसर अर्चना चहल मैम जुड़ गई हैं हमसे, तो उनका हम स्वागत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर अर्चना चहल मैम, आप हमारे बीच हैं और महाविद्यालय परिवार की तरफ से हम सभी आपका इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद मैम। थैंक यू लता मैम। और डॉक्टर श्याम नारायण धन्यवाद सिंह जी भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं और मैं उनका भी इस मंच पर बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर माधुरी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे महाविद्यालय परिवार से जो लोग इस मंच पर जुड़ चुके हैं उन सभी का भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर लता कुमार जी एंड सभी का एक बार पुनः अभिनंदन और स्वागत इस वर्चुअल मंच पे। सर विद योर ड्यू रिस्पेक्ट गुलाब सर, shall we proceed with श्रद्धे और आप बोलना पसंद करेंगे अभी? मैं अभी बोलूंगा क्योंकि मेरे को अभी थोड़ा सा यहाँ टाइम लग रहा है। मैं पहुंच गया हूँ वेन्यू पर, तो पर दूसरे जो मेरे को वर्कर हैं वो नहीं आए अभी। So let me give everybody knows you sir, but as part of the program let me introduce everybody to Dr. G.S. Mukherjee, Sports Director, Chaudhary Tehsil University, Meerut, and his involvement all the year round with sports and sporting events. The kind of hard work he puts into his administrative and organizational commitments, sir, it's really commendable. I have seen you personally doing your work with so much personal interest you put into it. It's really commendable. A well-known name in sports in North India, a renowned speaker in various national and international level conferences with many published research papers at his credentials. When I told him about this webinar that, sir, I wish to do this, so the kind of motivation and concern you showed, sir, it was so very refreshing. Thank you very much for that. So without taking much time, let me invite Dr. G.S. Mukherjee for his presentation. Sir, please, over to you. Thank you, Poonam. Let me share the screen. I'm just doing this on mobile. That is it possible on mobile or not, I don't know. The first time I'm doing on through mobile. So let me share my screen. Aniket, please get it. Okay. I'm sorry, getting late. All right, sir. Searching for my presentation. Yes. Is it visible? Yes, sir. Hello? Clear. Yes, sir. Clearly, it's My slide is visible. Yes, sir. Yes, yes, sir. Thank you very much. So here as goes physical education in India. Though the topic is a little wider of this topic, but I have taken a part of that because I'm more concerned with the physical education in India rather globally. I don't
want to go what globally is going on. I want to know what is the physical education scenario in our country, and what is the things and what are the policies has come, and what are the lacunas, what are the chances to have physical education in the future. The plan of the talk is introduction, the traditional education system and physical education and sports education and aims of physical education. This is the part of the introduction. And I have just touched the global scenario of physical education and sports also. Then I came to the historical part of the educational policy and the National Education Policy 2020. Then higher education, what are the reform and what are the changes in the higher education in the NEP, and what is the position of the physical education and sports in NEP, and few recommendations from my side. Introduction. If we see the current system of the education, it focus on the mental development of while ignoring the physical growth. As we see the the education system, हम जो भी Dr. Poonam, if you will allow me, I can speak in Hindi also in between. Bilingual I use. Hello. Yes, Dr. sir. Yes, Poonam. sir. Yes, sir. It will be better in If you bilingual. allow me to bilingual. Okay, thank you. अगर हम आज के सिस्टम को देखते हैं, इस एजुकेशन सिस्टम को, तो वहाँ पर ज़्यादा मेंटल डेवलपमेंट की बात करते हैं और उसमें फिजिकल ग्रोथ की हम इग्नोरेंस है। और हम ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये इंटीग्रेटेड पार्ट जो रहा हमारा एजुकेशन सिस्टम का, और हमको जैसे दिख रहा है कि हमारे देश में जो सिनेरियो है, आप अपने स्कूल टाइम की बात करते हैं हम लोग, हाउ द फिजिकल एजुकेशन क्लासेस इज हाईजैक्ड बाय द साइंस और मैथ टीचर्स इन to complete to give the pretext to the completion of the syllabus कि भाई फिजिकल एजुकेशन की क्लास है, स्पोर्ट्स की क्लास है, उसको साइंस वाले टीचर्स को दे दी जाएगी कि उनका सिलेबस बाकी है, उनका थोड़ा सा टफ सिलेबस. व्हाई फिजिकल एजुकेशन इज इग्नोर्ड बाय द अदर सब्जेक्ट, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट नाउ आई कैन अंडरस्टैंड how what the happened in the past with us. Sports education, physical education is the prevalent misconception that sports only helps towards physical development. अगर हम ये बात करते हैं या हम लोग ये सोचते हैं कि फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स एजुकेशन केवल हमारे फिजिकल ग्रोथ को काम करती है या फिजिकल डेवलपमेंट की बात करती है, ऐसा नहीं है. और हम अगर स्पोर्ट्स की बात करते हैं, मैंने नीचे कैप्शन लिखा है, आपने अगर दिख रहा हो, मैंने कहीं से मिला मेरे को ये कैप्शन, इफ द फिजिकल एजुकेशन इज द मिल्क देन द स्पोर्ट्स इज बटर. हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते. इसको अलग करने के लिए हम स्पोर्ट्स को जब करते हैं तो हमको फिजिकल एजुकेशन पहले दूध आता है, फिर उसको हम चर्न करते हैं, देन बटर कम्स, देन द स्पोर्ट्स विल कम. सो वी कैन नॉट सेपरेट बिटवीन द टू. आप बात कर रहे थे कि स्पोर्ट्स एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन की जो क्लास हाईजैक होती है या उस समय स्कूल के लेवल पर, और उसमें फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस को इग्नोर किया जाता है, वो सिस्टम चला आ रहा था. और पेरेंटल सपोर्ट भी हमारा नहीं था. पेरेंटल सपोर्ट्स के भी कारण हमारे कुछ इस तरह की चीजें होती थी. पेरेंटल भी, जो पेरेंट्स भी थे वो भी ज्यादा हमारे कोशिश करते थे या कि उसके बच्चे के कितने मार्क्स आ रहे हैं, परसेंटेज कितनी आ रही है, एकेडमिक उसका कितना जा रहा है, बट दे नेवर आस्क अबाउट द फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इन द स्कूल. The aims of physical education, how it goes, just as I said, the physical education is the foundation, is the ladder system. If I see in the bottom ladder is the physical education, then sports, and then performance, then elite performance, and then Olympic gold. This goes like that. It's made by me, this ladder system. अगर हम फिजिकल एजुकेशन को फाउंडेशन बनाते हैं, then only the Olympic gold तक हम रीच कर सकते हैं. This is the ladder system. And in how it will be developed and how it will be achieved, these different ladders, because it is not the sky jump. We can come from the aircraft and we land through पैराग्लाइडिंग और समथिंग लाइक दैट. डायरेक्ट हम ओलंपिक गोल्ड पे नहीं जा सकते, तो हमको नीचे से लैडर से जाना है और स्टेप बाय स्टेप अपने सिस्टम को डेवलप करते हुए, अपने परफॉर्मेंस को डेवलप करते हुए हम इस तरह से डेवलप करते हैं. तो मेरा यहाँ पे ये कहना है, जो फिजिकल एजुकेशन की बात करूंगा, आगे सिलेबस के बारे में बात करूंगा,
कि हमको, जैसे बेस की बात कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन करिकुलम शुड बी सच which reach to the each and every individual or each and every student of the school, whereas the elite performance when comes here we can have the filtration and few, because in schools we have lakhs of students in our country, so we have to develop a physical education program for the lakhs of lakh, whereas the athletes are in hundreds, elite sports are 100, and Olympic gold medalists are 1 or 2. So how we will filter in the different stages, this has to be taken into consideration and is have to taken into care by the developing of the curriculum. As I said, global scenario of the physical education, we see the globally, the sports is an industry has already exist in other countries. The sports industry boosts the dynamic appeal that many others, even bigger industries, look at the. It has a power to define nation as a whole. Sports offer a perfect opportunity to explore scientific concepts such as force, motion, potential, energy, velocity, and torque. हम इन डिफरेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो ग्लोबली अगर हम देखते हैं तो दूसरी हर कंट्रीज में अभी, जैसे डॉक्टर राकेश तोमर जी ने कहा कि कल्चर हमारे देश में अभी तक नहीं है, और जो आजकल ड्यूरिंग द पैंडेमिक सिचुएशन में भी हमने देखा है कि लोग कैप्सूल के रूप में फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम्स दे रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ये 40 डेज, ये 10 डेज योगा प्रोग्राम है, 10 डेज कैलेस्थेनिक प्रोग्राम है, 10 डेज एरोबिक प्रोग्राम है, 10 डेज डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइज प्रोग्राम है, ये फिटनेस प्रोग्राम है। नो, दिस विल नॉट वर्क। आई एम टोटली डिसएग्री विद दिस। It has to be a continuous program. It has to be a continuous system of the education so that the students and schools take the advantage and take the full advantage of that curriculum. Now we come to the education system or the education policies of our country. अभी तक जो हमारे पास अभी जो नई पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, दिस इज ओनली द third draft in our country. Before that, there was first time after independence, University Education Commission was formed in 1948, and the Secondary Education was formed in 1952, and the famous Kothari Commission came in the year of 1964, and the first policy of education came in 1968. Then the education was came into constitutional amendment 1976 in concurrent list, which has become the state jurisdiction. Education become the state list. The national policy of education 1986, second draft has come, and few amendments again in 92 and in 2006, and now finally the Kasturi Ranjan committee. Kasturi Ranjan is the former director of ISRO. Under him, the committee was formed in 2019, and the new policy of 2020 has been given by this report. If we talk about the sports in our country, the scenario, the different government schemes, the current government has announced 2 schemes, very important schemes is going on nowadays. I'm not talking about the earlier scheme, the STC and all. First is Khelo India, to revive the sports culture in India, as Professor Rakesh has said, कि culture की थोड़ी सी अभी कमी है, we have to develop the culture. तो खेलो इंडिया का जो पहला एम है वो यही है कि स्पोर्ट्स कल्चर की बात कर रहे थे कि स्पोर्ट्स कल्चर को हमको रिवाइव करना है इन अवर कंट्री, एंड टू सपोर्टिंग द डेवलपमेंट एंड स्पोर्ट्स इन ग्रास रूट लेवल इन फॉर्म द इंफ्रास्ट्रक्चर, इन द फॉर्म ऑफ द ट्रेनिंग, इन फॉर्म ऑफ द एक्सीलेंस सेंटर्स एंड ऑल. It was announced by our worthy PM Sri Narendra Modi ji on October 19, 2017. The former sports minister Vardra Rathore Sahab. And recently, last year, in 2019, before the pandemic period, again, Sri Narendra Modi ji announced on the Sports Day, 29th August 19,
Fit India movement. And the Fit India movement is to encourage the people to remain healthy and fit by including physical activities and sportsing in their daily life. As recently during the pandemic, as WHO and IOC was mentioned by Dr. Rakesh Tomar, they have uh, signed an agreement to save the life through sports, save the life through physical activities. So this is the big statement, as he said already. I'm not going in that. So these two schemes is running now in our country, but what I find in the Halo India and Fit India movement, Fit India movement is the general fitness program for all the citizens of the country, and the Halo India is the specifically to first another aims to catch the young to train the future. इस तरह का कुछ उन्होंने स्लोगन दिया था उनको, और यहाँ मैं थोड़ा सा उससे इत्तेफाक नहीं लगता, या हमारे जो कुछ सजेशंस करता है खेलो इंडिया में थोड़ी सी कमी है जहाँ तक मैं समझता हूँ. दिस इज नॉट द टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, रादर इट इज अ टैलेंट सिलेक्शन. हम खेलो इंडिया से टैलेंट को कोई आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, हम कोई टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, हम केवल वहाँ से विनर्स को पिकअप कर रहे हैं. इसका मतलब है कि हम सिलेक्शन प्रोसेस कर रहे हैं खेलो इंडिया के थ्रू, और उन पर हम पैसा खर्च कर रहे हैं. नो डाउट कि व्हेन वी विल सिलेक्ट द टैलेंट and we will spend the money on the training, we will get the result. But it is not compulsory because we are not identifying this talent. हो सकता है कि आज का विनर हम उस पर स्पेंड कर रहे हैं, और वो जिस स्पोर्ट्स में आज खेल रहा है वो नहीं, मैं नहीं समझता कि आगे चल के वो उसमें उस लेवल तक जाए, या एलिट लेवल तक जाए, या इंटरनेशनल लेवल तक जाए जिसकी हम उम्मीद करे बैठे हैं कि उसमें उतना टैलेंट है या नहीं है. तो हमको यहाँ पर एक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की कुछ बातें करनी होगी, और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की वो स्कीम चालू करनी पड़ेगी along with the Hello India, then we will success in our mission. So this is the schemes. Fit India movement is very good movement. It is for the general people and to maintain their fitness through daily life. The new policy की बात करते हैं हम, तो इसका जो फॉर्मूला भी आया है वो 5+3+3+4 फॉर्मूला है. इसको लोग कुछ किसी तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, कुछ किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं. फ्रॉम लास्ट 1 month after this announcement of this new policy, I have also attended so many webinars on this topic, and different people have their different opinions, but I'm not going that much detail. Few things I want to tell you. This system is through the age system. Agar we calculated, the first 5 years is the fundamental age stage, and the second stage is the preparatory phase, where the student will learn through the play and through the activities, purely through the interactive classroom only, no burden on the academic side. And the next 3 years, that is middle age, that is experimental learning in the science, mathematics, and social science and humanities. And how nowhere is the sports and physical education has been mentioned in this picture, if you see this. And after that, the 4 year after secondary education. So here, if you see this picture, nowhere is physical education and sports is given. Only one stage is given. First and second stage is a play activity based learning, and the play activity discovery. But what kind of play activity will be there, and what kind of program will be there for the small kids like 3 years and this stage particularly. So I will later on I will give the recommendations. If we talk about the higher education system, the higher education system will be again changed with 3 to 4 years UG program and 1 or 2 years PG program. MPhil program is completely stopped, and no MPhil degree will be awarded now. MPhil degree everywhere will be shut down. And the 3-year and 4-year UG program, and all the education system of higher education will come under the one umbrella that will be regulated, that is Higher Education Commission. And this all UGC and NCT and NSTC, जितनी भी हमारी
उनकी वो चल रही हैं, तो वो सारी जो कमीशंस हैं या सारे जो हमारी बॉडीज हैं उनको एक अम्ब्रेला के नीचे आना है अभी, तो इनको रिफॉर्म करने में अभी समय लगेगा। एंड हाउ दे विल वर्क, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि यूजीसी खत्म हो जाएगी या एनसीटी खत्म हो जाएगी या एआईसीटी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। दे विल एग्जिस्ट बट दे विल वर्क अंडर द वन अम्ब्रेला दैट विल बी द हायर एजुकेशन कमीशन। एंड हाउ दे विल वर्क, दैट frame draft will yet to come, and it will come through the state level, and the state has already started working on that, and they have made the committees for development of the curriculum for the particular state. So these are the different level. And अगर हम इसमें बात करें थोड़ा सा चेंजेस की कि क्या क्या चेंजेस आएंगे, स्टूडेंट्स को यहाँ पर सेंट्रलाइज रखा गया है, सेंटर फोकस किया गया है, और उसके हिसाब से ही ये पॉलिसी बनाई गई है। स्टूडेंट इज द किंग, वहाँ पर उसको लेटरल एंट्री, लेटरल एग्जिट, उसको मल्टीपल चॉइस दी गई है। एंड एक और बहुत बड़ी अच्छी चीज बनी है, ऑल द सिस्टम विल बी ऑन क्रेडिट बेस एंड दे विल हैव द क्रेडिट अकाउंट। जैसे कि हमारा बैंक में अकाउंट होता है और हम उसमें पैसे डिपॉजिट करते हैं, उसी तरह क्रेडिट अकाउंट होगा जिसका नाम उन्होंने दिया है ABC, एकेडमिक बैंकिंग क्रेडिट, एकेडमिक बैंक क्रेडिट। तो वो उस बैंक में अपने क्रेडिट जमा करेगा और जब उनकी जरूरत पड़ेगी तब वो अपनी डिग्री के लिए अप्लाई करेगा। और उसको हो सकता है कि 1 साल के बाद या 2 साल के बाद या 3 साल के बाद किसी को ड्रॉप करना पड़ रहा है, रीजंस आर मैनी। 1 साल के बाद किसी बच्चे को नहीं पढ़ पा रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो एग्जिट करता है, तो वो उसका 1 साल वेस्ट हो जाएगा। अभी तक क्या हो रहा था कि अगर किसी ने BSc फर्स्ट ईयर कर ली या BA फर्स्ट ईयर कर ली और किसी कारण से छूट गई तो उसको फिर नए सिरे से दोबारा शुरू करना पड़ता था आगे चल। अब ऐसा नहीं होगा, उसके क्रेडिट जो है उसके स्कोर रहेंगे और उसको एक साल की कोर्स करने के बाद उसको एक सर्टिफिकेट अवार्ड होगा एंड ही कैन गो एनीवेयर ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही विल गेट द जॉब on the basis of the certificate. After 2 years, he will get a diploma, and after 3 years, he will get degree, and after 4 years, he will get the honors degree, and with the experience of the research. And after 4-year degree, honors degree, he can directly go for the PhD program or he can go for the master's program. If he want to go for the master's, then he will go for 1-year master's, and if he want to go for PhD, then he can go for the PhD. After 3 years also, one can go for the master, but he has to go for the 2 years master. So duration of the courses will be the same, either 3 years degree course or 4-year degree course. Both have the same duration for the PhD level. So these are the different things. As already mentioned by Jhanjariya ji, the public का जो टोटल GDP है उसका 6% अब एजुकेशन पर खर्च होगा, एंड एम्फेसाइज विल बी गिवन मोर ऑन द रिसर्च। एंड एक और चीज आएगी कि इसमें जो हमारे जो कॉलेजेस हैं उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी, और उसके लिए कॉलेजेस को अपने को अपग्रेड करना पड़ेगा। और जैसा कि अभी पैंडेमिक पीरियड में एक नई चीज सिखाई है हमको कि ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आने वाले समय में भी उसी तरह से ऑनलाइन सिस्टम होगा। और कितना होगा, क्या होगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट कमेटीज एंड स्टेट गवर्नमेंट कि कितना उनको ऑनलाइन पढ़ाना होगा, कितना कंटेंट होगा। एक और चीज है कि उसमें टीचिंग मेथड भी चेंज होगा। अभी तक जो लेक्चर मेथड हमारे देश में चल रहा है, दैट मेथड विल आल्सो बी चेंज। हाउ मच इट विल बी चेंज, इट्स येट टू कम, but definitely is going to be changed. A Philip method, these interactive method will be used in the future. Coming generation will learn, they will get the content from the teacher, and then they will study that content and they will come and discuss in the classroom. There will be interactive classes, no lecture method will be there. How much it will be, how it will be implemented, that draft is yet to come by the state governments. Now I talk about the sports skills and education research for the new EP. The draft has unveiled after 27 years, and the National Research Foundation has created an integrated fund and for the research. So fresh focus on the skill development in artificial intelligence, IoT, in robotics, उसकी बात कर रहे हैं। नीचे Fit India movement launched by promote fitness and reduce lifestyle disease,
नेशनल स्पोर्ट्स एजुकेशन बोर्ड, ये एक नया चीज आ रही है, नेशनल स्पोर्ट्स एजुकेशन बोर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन अंडर द खेलो इंडिया। उसके साथ एक नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनेगा जिसके अंदर सारे हमारे कंट्री का स्पोर्ट्स उसके थ्रू चलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो अभी करंट सिस्टम है, जो करंट एसोसिएशन फेडरेशन सिस्टम है, वो सब चीज बंद हो जाएंगी, बट दे विल बी मॉडिफाइड, reframe, and how it will be reframed, it is that draft is yet to come. Now come to the physical education sports in new NEP. If we look at the draft, as I said, in new AP, the more emphasis has been given on the sports. Physical education word, I think, if I'm not wrong, it is came only 3 or 4 places only, whereas the sports has come more than 30 places in the draft itself. Word, I'm telling this word, physical education and sports. So here we can clearly understood the more emphasis has been given on the sport. So now we have to prepare a complete and comprehensive roadmap to complete that. That comprehensive roadmap, performance in sports can only be achieved through collective wisdom. As I already said, the physical education is the foundation, it is the milk, and the sports is the butter. So physical education and sports cannot be separated each other, though it is the two sides of a single coin, but we cannot separate the two. Then identifying the talent and nurturing the talent. As I earlier said, when Khelo India was discussed, we have to identify the talent, not to select the talent. We have to identify the talent for the particular sports, and then we nurture the talent for that particular sport. Training and updating coaches with at least trends in training in scientific manner. Now the system of the total training has been changed. This I take the example of simple hockey. Right from the equipments to the playing fields and the playing system, everything is changed. New gadgets, new rules, new system, everything is changed. So coaches must be updated and they have to up, abreast with the new scientific manner of the training, how training should be given. The broad basing is only possible through holistic approach in physical education professionals. As I said, डॉक्टर झांझरिया को मैंने बताया कि ये सबसे अहम रोल, वाइटल रोल जो होने वाला है वो LNIP को होने वाला है, बिकॉज इन इंडिया फिजिकल एजुकेशन स्टार्ट फ्रॉम LNIP and it is end in LNIP. So their responsibility becomes more on that to make a roadmap, complete comprehensive roadmap for the coming future generation. The collective wisdom, I have told that the infrastructure and the based equipments, we have to have a good quality of equipments, good infrastructure. As Dr. Tomar said, university sectors के अंदर अगर infrastructure develop करेंगे international level पे, तो definitely the culture will be promoted from there. Then physical education teacher at the grassroots level in the school, and then athlete, then coaches, then sports scientists. यहाँ थोड़ा सा मिसकंसेप्शन करते हैं कि लोग पहले स्पोर्ट्स साइंस को लेकर आते हैं, फिर बात करते हैं कुछ फिजिकल एजुकेशन की, ऊपर नीचे करते हैं. स्पोर्ट्स साइंस को कब यूज करना है? जब हमारा एथलीट एलीट पोजीशन में आ जाएगा, देन वी हैव टू यूज द साइंटिफिक अप्रोच एंड देन वी कम टू द फाइनल परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस हमारा क्या होगा, तो हम एलीट परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं. These are the few recommendations I have made my personally to the system of the new NEP. I want to take attention of the Jhanjariya ji and other those who are involved in developing the curriculum. I may be wrong, but many things may be added in this. A physical education professional has to design a comprehensive curriculum for the new NEP. The system for 5, 3, 3, 4 separately. The first 5-year play school, kindergarten, nursery classes of a child is a very crucial for motor development. Please take care. Please note it. Very crucial for the motor development in the early age. So physical education program for this stage should be given more emphasis on the development of locomotive and non-locomotive and manipulative skills. I'm not going on the details. What is locomotive, non-locomotive, and manipulative? It's a simple running, jumping, throwing, and catching, and all these things, manipulating the skills. So these are the
skill should be added at this part of the game. The next 3 years, that is class 3, 4, 5. Just take into consideration 3, 4, 5. Class 3, 4, 5, the primary school. Emphasis should be given to develop the fundamental and motor skills. Fundamental skills, again, I tell you, that is running, jumping, throwing, catching, and all these things. That more emphasis should be given on that while developing the curriculum. The next 3 years, 6, 7, and 8, 6, 7, 8 classes, sports skill can be introduced. Sports skills can be introduced. Students should be allowed or free to play different games and sports. वो कुछ लोग ये कहते हैं कि हमको बहुत ही अर्ली एज में 5 साल या 6 साल की एज में उनको स्पोर्ट्स सिखाना चाहिए। मैं नहीं समझता, उनको स्पोर्ट्स सिखाना चाहिए। उनको डिफरेंट स्कूल्स स्पोर्ट्स में जाए so that they can develop the multiple motor abilities and motor skills in their ability. Then after this period, when he come to the 9th class, then the training and specific or particular sports can be selected, and these 4 years is the exhaustive training, including particular sports and purely on scientific based. Then only we can think of the future elite performance. Then he will come to the university after 12, then he will be in the elite group of the athletes. And one thing must be remembered while developing curriculum, student must be centrally figured and consider 100% population. As I tell you earlier also, we must frame the syllabus, we must frame the curriculum for the 100% population involvement, not for the elite. Keep in mind, not for the elite athlete. We have to have the curriculum for the 100% population, rather keep in mind and only for the few. So this is my few recommendations. I may left many things in that. You people are more expert, more experienced. You can add many more things in this. This is my humble suggestion. I may be wrong on some of the part. And thank you very much. This is the final. Over to Poonam. Let me stop my share. Thank you very much, sir. And congratulations for one more excellent presentation as usual. It was super. And sir, there is a question which a viewer has asked. This is a question for you. Sir, can you hear me, please? Hello? Yes. Okay, sir, there is a question for discussion with you. Sir, what do you think about... Let me stop my this sharing. Hello. Okay, sir. Sir, shall I proceed? Hello. Yes. Proceed. Okay. Sir, there is a question from one of our viewers for you. What do you think about physical education, yoga, and sports as an academic discipline in the syllabi of various administrative services exams? For example, please repeat. I PCS could not hear. Please repeat. Yes, sir. What do you think about physical education, sports, and yoga as an academic discipline in the syllabi of various administrative services exams? For example, PCS or IS examinations. What is a scope for us as physical education students? Definitely, Poonam, sports and physical education is a completely an academic subject now, and this is not now, it is from the last century. If we go for the past history, and we are working on the basis of the academic part only. And if we talk now, if we are in the doubt still, whether it is a academic subject or it is a practical subject, practical cannot be possible without academic. So this is very much academic field, academic subject, whether it is a physical education or it is a yoga, both are integral part. So my notion is both are academic
as well as practicing. Yes, sir. So, sir, because Yes, like Rakesh, Can I add here one thing? Yeah, Ruhal sir, fantastic presentation, and you have explained everything very clearly. And what you have said, it's very important for us to understand that it's not just a physical activity. And I would like to quote here, like one sentence, for the knowledge of the viewers, like what's happening, across the globe, basically. That PE, physical education, is supposed to contain components of cognitive learning in a physical activity setting, and not just physically activate students through games, sports, and other activities. So here we have to understand that it's not only about playing a games and sports की बच्चों को हमने फुटबॉल दे दिया, उनको गेम खिला दिया. Yes, exactly. Cognitive part of learning is very important. Yes, So exactly. especially we are only giving them physical part. We are not giving them the cognitive part of that physical activity, which is very, very important, for any learning, any sort of a learning. And once we approach in that way, I think what Dr. G.S. Surji also is saying, that then only we can flourish, as an academic subject, and that's what we want. This is not a co-curricular. This is a pure academic subject. It's not just doing a physical activity. Even if you want to do some running, there has to be a cognition behind that. Cognitive learning has to be behind that. And once we approach in that way, and and what Dr. Rohal has said, the presentation is fantastic. This approach is very important. And one more thing I want to add here, for all the viewers, since I got this platform, that in India especially, there are so many things, there are so many views are there. Even my views may not be correct. I may be wrong in many ways, but we have to sit and discuss. Like what I feel personally is that we have to differentiate between a physical education teacher and a coach. Yes. टीचिंग और कोचिंग दोनों अलग अलग चीज है बिल्कुल. हमारे यहाँ क्या हो रहा है, व्हाट वी आर डूइंग इज, जो टीचर है वही सब कुछ है, टीचर ही कोच भी है, वही कोचिंग दे रहा है, वही टीचिंग कर रहा है. इट्स नॉट लाइक दैट. If when I was in LNIP, I'm not against any institution, but when I was in LNIP as a lecturer, my job was to teach as a lecturer, but I was doing in the evening match practices, like we are preparing the teams. So जब आप दो नाव में सवार होते हो तो आप कहीं भी सक्सेसफुल नहीं होंगे. आप इस रोड टू बी क्लियरली डिफाइन कि आपका काम पढ़ाने का है, आप पढ़ाइए, रिसर्च कीजिए, पढ़ाइए. जिसको टीम बनानी है, जिसको गेम्स एंड स्पोर्ट्स में कोचिंग देनी है, उसका काम कोचिंग का है, उसको वही फोकस करने दीजिए. हम लोग क्या है कि हर चीज को अपने हाथ में लेते हैं. मैं टीचिंग भी करूंगा, मैं कोचिंग भी करूंगा, मैं सारे काम करूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी करूंगा. That's where we have to divide our responsibilities and roles, and once we are clear in these processes, I think we can go ahead. Thank you for Yes, sir. Exactly. That's why I'm telling that LNIP has to play a vital role in this framing the curriculum for the country. And as earlier I mentioned the same thing, misconception of physical education. It teach only the physical growth. It is not like that. You have said rightly. Thank you very much. Thank you, sir. Definitely, sir, and very proudly we say हमको हटन वाला है. This thing has to be stopped. Someone has to initiate it. Very well said, sir. Thank you very much. So now, so Poonam ji, I want to be quick because I have to do some assignment here. Thank you very much for giving me opportunity. Okay, sir, I understand. Thank you very much. Sir. And I'm sorry that I'm putting this in between. And my best wishes. My best wishes for the speakers to go coming ahead. Thank you very much. Thank you once again. Namaskar, sir. Thank you, sir. Namaskar ji, namaskar. जी, let's proceed further. हाँ जी. एसएन सिंह जी बोले बीच में. Yes, fine, sir. Okay, एसएन सिंह जी, now ball in your court to play. Thank you very much. Okay, so I'm just leaving. Thank you very much. Okay, okay, thank you, sir. Thank you. Okay, now moving on with our fourth speaker, Dr. Shraddha Rathod. Dr. Shraddha, are you here? Okay, I can see him now. Dr. Shraddha, a brief introduction about him. A very versatile, multi-talented young professional with vast and vivid experience of teaching physical education in prestigious MIT School, Noida, to renowned Taj Hotel, Jaipur, Rajasthan, to working as marketing coordinator at Royal Automobile Club of Australia, then has worked as data administrator at the Institute of Chartered Accountants, Sydney, and at present he is working in Australian Catholic University, Sydney.
passing away. Speaking of fitness for elderly, Shraddha ji, पुनः आपका हार्दिक स्वागत. And over to you, sir. Hello, Shraddha, Poonam ma'am. please tell Thank you very much. I hope you can hear me clearly, ma'am. Yes, it's very Okay, that's clear. great, ma'am. My topic is health and fitness after 60, but before मैं इसके बारे में बात करना चाहूँ, उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, मंगल पांडे कॉलेज के जितने भी स्टाफ मेंबर्स यहाँ पे उपस्थित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा मैं जितने भी मेरे साथी स्पीकर्स हैं, रुहाल सर तो अभी चले गए, लेकिन तोमर सर हैं, स्वतेंद्र सर हैं, झांझरिया सर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। श्याम नारायण सर हैं और अर्चना चहल मैम भी अभी अपन से जुड़ी हुई हैं, तो उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा टॉपिक तो हेल्थ एंड फिटनेस आफ्टर 60 है, लेकिन मुझे जब झांझरिया सर बोल रहे थे कि बजट और इम्पोर्टेंस ऑफ मनी की, तो मुझे याद आया कि कुछ साल पहले जो अपने पूर्व स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहे हैं राज्यवर्धन सर, उन्होंने कहा था कि भारत में हर आदमी के ऊपर 3 पैसे पर दिन का एक्सपेंडिचर है स्पोर्ट्स के लिए। 3 पैसे में इंडिया में माना कि सस्ती चीजें मिल जाती हैं, लोग 10-10 रुपए में खाना मिल जाता है, लेकिन 3 पैसे का स्पोर्ट्स एक्सपेंडिचर काफी कम है। अभी करंट बजट के अंदर इसको बढ़ा के 3 से 6 पैसे कर दिया गया है, लेकिन अगर आप उसका कंपैरिजन करें जो छोटी कंट्रीज हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया से करें, बेल्जियम से करें या नीदरलैंड से करें, जहाँ जो अपन को हॉकी अपना एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो कि अपने काफी दिल के करीब है, राष्ट्रीय खेल होने के नाते, और अपन उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब आप उसका कंपैरिजन करिए इन सब कंट्री से, तो 800 गुना ज्यादा उनका बजट है। एक छोटी छोटी कंट्री जैसे हॉलैंड है, बेल्जियम है, ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ पे 500-600 एस्ट्रोटर्फ के हॉकी के फील्ड्स हैं, छोटी पॉपुलेशन होने के बावजूद। मुंबई से, दिल्ली से कम पॉपुलेशन है इन तीनों कंट्रीज की, उसके बावजूद जो स्पोर्ट्स पे इनका एक्सपेंडिचर है वो काफी ज्यादा है। और ये एट द एंड ऑफ द डे मैं ये नहीं कहूंगा कि पैसा ही सब कुछ है, हमारी संस्कृति, हमारी मेहनत, हमारी जो परसिस्टेंस है और प्रिजर्वेंस है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, अगर हॉकी प्लेयर्स के पास खेलने के लिए एस्ट्रोटर्फ नहीं है, अगर रिसोर्सेज नहीं है, फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है, तो फिर काफी मुश्किल है फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में दोनों में ही आगे बढ़ना कंट्री के लिए। तो जैसे रुहाल सर बोल रहे थे 6% एजुकेशन बजट, झांझरिया सर ने भी इसका जिक्र किया था, तो उसमें उसकी काफी इंपॉर्टेंस है, लेकिन अगेन देखना ये होगा कि उसमें से कितना पैसा एक्चुअली ग्राउंड लेवल तक पहुंचता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इंडिया में करप्शन का भी एक इश्यू है, जिसमें पैसा तो गवर्नमेंट अनाउंस करती है, लेकिन वो एक्चुअली कितना ग्रास रूट लेवल तक के लोगों के पास पहुंचता है, वो भी काफी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। तो उसके उसके वो भी काफी ध्यान देने लायक चीज है कि कैसे होता है। एक छोटा सा सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, अगर आप YouTube पे भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको पता ही होगा कि जो करंट बजट है इंडियन गवर्नमेंट का 2827 करोड़ समथिंग जो बजट अनाउंस किया गया है स्पोर्ट्स बजट, LNIP का बजट एक्चुअली 5 करोड़ से बड़ा है, 50 से 55 करोड़ किया गया था इस बजट में, और बाकी के इंस्टीट्यूट्स ने काफी पैसा खोया है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि LNIP जो स्पोर्ट्स का बजट है इंडिया का, वो BCCI की एनुअल इनकम से कम है कि ज्यादा है? अगर ये गैस करना होगा, तो आप अगर जूम में या यूट्यूब पे ये बता पाएं कि आपका क्या ओपिनियन है, आपको बिना इसको गूगल के बिना देखे क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि BCCI की इनकम इंडियन एनुअल बजट से कम है या ज्यादा है? तो आपको आश्चर्य, आप जवाब दे चुके हैं या नहीं, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअली BCCI की एनुअल इनकम 900 करोड़ रुपए ज्यादा है इंडिया के एनुअल स्पोर्ट्स बजट से। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इंडिया में प्राइवेट स्पोर्ट्स जरूर इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्पोर्ट्स जो इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं वो सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए, एलीट एथलीट्स के लिए और प्राइवेट बिजनेस के लिए ला रहे हैं।
तो एट द एंड ऑफ द डे इंडियन में देखना होगा कि जो ये पैसा ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस लेती हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ग्रास रूट लेवल पे सही तरीके से होता है या नहीं। ओके, तो मैं क्विकली अपने टॉपिक हेल्थ एंड फिटनेस आफ्टर 60 के ऊपर कुछ पॉइंट्स देना चाहूंगा। आप जैसे स्क्रीन देख पा रहे हैं, पहले भी फिजिकल एजुकेशन को अगर आप देखें तो हॉलिस्टिक व्यू ऑफ फिजिकल एजुकेशन, हॉलिस्टिक व्यू ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में अपन बात करते हैं। और हॉलिस्टिक व्यू ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस में अपन फिजिकल ही नहीं बल्कि मेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर भी जोर देते हैं। तो अगर आप ये देखना चाहें कि जो लोग 60 से ऊपर हैं वो अपनी फिटनेस को बनाए रखना चाहते हैं, हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उनमें डिफरेंसेस क्या हैं? क्या हम एडल्ट्स और 60 प्लस लोगों को एक तरीके से ट्रीट कर सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ डिफरेंसेस हैं जो दोनों के बीच में हैं, तो हम उनको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला डिफरेंस तो गोल का डिफरेंस है, क्योंकि जो 60 प्लस एज ग्रुप है, इन लोगों के इस ग्रुप में जो गोल्स हैं वो ओलंपिक में पार्टिसिपेशन या यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेशन या मैराथन अंडर 2 आवर्स 10 मिनट्स दौड़ना नहीं है। इनका गोल है अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना, अगर कहीं एक्स एंड पेन्स हैं तो उनको रिड्यूस करना, ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करना उनका गोल हो सकता है। अगर वो डायबिटिक हैं तो डायबिटिक मेडिसिन से ऑफ नहीं लेना उनका गोल हो सकता है। तो जो उनके गोल्स हैं वो काफी अलग हैं। तो और जो दूसरा है वो उनका एक सोशल एस्पेक्ट भी रहता है। अपन अभी जैसे कह रहे थे कि सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट नहीं, मेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट के ऊपर भी ध्यान देना है। तो वो गोल 60 प्लस लोगों का जो फिजिकल एक्टिविटी में अगर उसमें सोशल एस्पेक्ट हो तो उसका भी उन्हें काफी बेनिफिट मिलेगा। दूसरा डिफरेंस उनकी कैपेबिलिटीज में है, जो कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस से रिलेटेड है, जो कि मेरा तीसरा पॉइंट है। एक एज के बाद अपनी बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है फिजियोलॉजिकल चेंजेस के कारण। कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, बोन्स एंड फ्रेल्स हो जाती हैं। अपनी बॉडी की यूज बाय डेट है, जैसे जॉइंट्स की वो पास आने लगती है तो उसमें एक्स एंड पेन्स हो जाते हैं। कई ऐसी बीमारियां हैं जो कि एक सर्टेन एज के बाद आती हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, नॉर्मल आर्थराइटिस है। तो इन इश्यूज के कारण जो उनकी रिक्वायरमेंट है फिजिकल एक्टिविटीज से वो डिफरेंट हो जाती है। तो उनकी हेल्थ एंड फिटनेस के लिए अपन को डिफरेंट अप्रोच रखनी होगी। उसके अलावा अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि हेल्थ और फिजिकल एक्टिविटी और डाइट, अगर आप इन दोनों में से सिर्फ एक को चुन सकें, अच्छी डाइट, बैलेंस डाइट और फिजिकल एक्टिविटी, तो आप किसको चुनेंगे? मैं फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशन से हूं, आप काफी लोग यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशन से हैं, लेकिन आपको ये एडमिट करना होगा कि डाइट की जो इम्पोर्टेंस है वो एक्चुअली एक्सरसाइज से भी ज्यादा है। अगर आप बहुत अच्छा वर्कआउट करते हैं और उसके बावजूद आप हाई फैट, हाई शुगर कंटेंट की डाइट लेते हैं, तो आपकी बॉडी कुछ टाइम तक तो उसको सस्टेन कर पाएगी, बट इन लॉन्ग रन आप को उससे इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। बट अगर आप बैलेंस डाइट और कम खाना खाते हैं और अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं भी करते हैं, तो भी आप अपनी हेल्थ और फिटनेस को अच्छा रख सकते हैं। तो इसके ऊपर डाइट के ऊपर आपको डाइट की इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी, बैलेंस डाइट। और ये टॉपिक और ये टाइम अपने पास काफी कम है, तो मैं बैलेंस डाइट में डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जितनी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, डाइट उतनी ही इंपॉर्टेंट है, अगर ज्यादा नहीं तो। और अगर दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो वो सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और जब अपन डाइट की बात करते हैं तो इंडिया में आपने देखा ही होगा कि काफी लोग वेजिटेरियन हैं, काफी लोग कुछ चीज खा सकते हैं, कुछ चीज नहीं खा सकते हैं। और इसके कारण और दूसरे एस्पेक्ट भी हैं जिसके कारण अपनी बॉडी को रिक्वायर्ड मिनरल्स एंड विटामिन्स प्रॉपरली नहीं मिल पाते हैं। तो उसके लिए सप्लीमेंट्स के ऊपर भी ध्यान देना होगा। मल्टीविटामिन्स जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। करंटली अगर आप देखें तो कोरोना वायरस की कोविड की बात चल रही है, तो लोग कह रहे हैं कि जिंक लीजिए, विटामिन सी लीजिए, विटामिन डी लीजिए। तो ये सिर्फ कोविड के टाइम ही नहीं, एनी टाइम अगर आपकी बॉडी में इसकी लैकिंग है। अपनी साइंस इतनी एडवांस नहीं है कि कई ऐसे मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स हैं जो अपन अभी भी नहीं जानते कि वो कैसे अपनी बॉडी में
यूज आते हैं और उनसे क्या अपने को बेनिफिट मिलता है, बट उनका होना नहीं होने पे क्या होता है ये अपन को ज्यादा पता है। लेकिन अगर आप उनको बॉडी में सही लेवल पे नहीं रख पाएंगे तो उसके आपके लॉन्ग टर्म हेल्थ और उस पे फिटनेस पे उसका इफेक्ट हो सकता है। अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि कैसी एक्टिविटीज आप 60 प्लस लोगों के लिए यूज करें, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला तो नो इम्पैक्ट और लो इम्पैक्ट एक्टिविटी। नो इम्पैक्ट में अगर आप बात करें तो एक्वा एरोबिक्स, जैसे अगर आपके पास पूल है या आप एक 4 फीट हाई 4 to 5 फीट डीप वाटर आपके पास अवेलेबल है, आप छोटा टैंक बना सकते हैं या पूल में जा सकते हैं, तो उसमें जो एरोबिक्स वगैरह आप करते हैं तो उसका काफी बेनिफिशियल है। और दूसरी एक्टिविटीज जो कि लो इम्पैक्ट या नो इम्पैक्ट हैं, उसमें आप योगा को कंसीडर कर सकते हैं। योगा में इम्पैक्ट होता है लेकिन आप जेंटली करते हैं तो इम्पैक्ट काफी कम है। उसके अलावा आप साइकिलिंग, स्टेशनरी बाइक यूज कर सकते हैं, रोइंग मशीन यूज कर सकते हैं, बैंड्स वगैरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसमें बॉडी पे इम्पैक्ट कम हो या बिल्कुल ही लो इम्पैक्ट हो। उसके अलावा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग काफी जरूरी है। आप सोचेंगे कि 60 प्लस के बाद वेट्स लोगों को नहीं करने चाहिए, तो जो साइंस कहती है वो उसका एक्चुअली अपोजिट है कि वेट ट्रेनिंग ज्यादा एज में जरूरी हो जाती है। जैसे मैंने कहा आपको पहले, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बॉडी का कम हो जाता है, बोन डेंसिटी कम होने लग जाती है। तो अगर आप वेट ट्रेनिंग करेंगे तो आपकी बोन की डेंसिटीज है वो डेंसिटी है वो सही रहेगी, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो सही रहेगा, तो वो करना काफी जरूरी है। और जितना हो सके वो टीम एंड ग्रुप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन हो उतना बेटर है, क्योंकि अगर वो टीम एंड ग्रुप एक्टिविटीज नहीं है तो मोटिवेशन नहीं होता है। अगर बारिश हो रही है तो मन नहीं कर रहा, बट अगर आपने किसी ग्रुप में और किसी दूसरे से कमिटमेंट कर रखा है तो आप मोर लाइकली हैं उस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए। और रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड का जो बैलेंस है वो आपको देखना पड़ेगा। आप नहीं चाहते कि आप किसी को इतना पुश करें कि उनकी कोई इंजरी हो जाए जिससे वो अगले हफ्ते 2 हफ्ते के लिए कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर पाए। तो पुश करना, कौन सी एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है, हफ्ते में कितनी बार ट्रेनिंग करनी है, और इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और जितना स्लोली हो सके उतना बिल्डअप करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ रिवॉर्ड के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो आप रिस्क को इग्नोर करेंगे, और इस एज ग्रुप में रिस्क काफी सीवियर हैं, क्योंकि अगर कोई भी इश्यू होता है तो फिर वो हीलिंग में टाइम ज्यादा लगता है, तो आपको उसके लिए भी अवेयर होना पड़ेगा। एक दूसरी जो चीज है, जो लास्ट चीज है इस पे टॉपिक के ऊपर, वेट मैनेजमेंट के हिसाब से अगर आप देखें तो आपको फोकस करना चाहिए मोर कार्डियो एक्टिविटीज पे और सम वॉट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे। वीक में एक बार आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करिए और 3 से 4 बार अगर आप कार्डियो वर्कआउट करिए तो वेट मैनेजमेंट में उससे काफी आपको हेल्प मिलेगी। कुछ और चीजें जो मैं कहना चाहूंगा, जिनके बारे में आपको आपसे बात करना चाहूंगा इससे रिलेटेड 60 प्लस और हेल्थ एंड फिटनेस आफ्टर 60 के लिए, प्रिवेंटिव मेडिसिन काफी इंपॉर्टेंट है इस एज ग्रुप में। एनुअल टेस्ट एंड चेकअप्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मैं भी ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा हूँ, यहाँ पे जनरली 60 प्लस के बाद पीपल 4 से 5 एनुअल चेकअप डेली साल में करते हैं, जिनमें डेंटल चेकअप साल में 2 बार, आई का चेकअप साल में 1 बार, आईज टेस्ट होती हैं जिसमें प्रेशर टेस्ट और विजन का टेस्ट, मैकुलर डिजेनरेशन वगैरह का टेस्ट होता है। उसके अलावा हार्ट स्पेशलिस्ट का चेकअप साल में 1 बार, और जनरल प्रैक्टिशनर जो डॉक्टर हैं वो एक थोरो ब्लड टेस्ट लेते हैं साल में 1 बार। तो इन सब चीजों को करने से एक तरीके से ये प्रिवेंटिव मेडिसिन है। आप कोई भी बीमारी होने से पहले आप उससे बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे टेस्ट अपने इंडिया में भी अवेलेबल हैं। इट्स जस्ट दैट कि इंडिया में प्रिवेंटिव मेडिसिन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। लोगों के दांत में दर्द होता है तो वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं, दिखने में दिक्कत होती है तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। ऐसा करने पे कई सिचुएशंस में आपको ज्यादा दिक्कत होती है। जैसे इंग्लिश में सेइंग है, ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अगर आप एक टांका भी लगाते हैं तो बाद में पूरी कपड़े की सिलाई करने से आप बच सकते हैं। तो उसी तरह प्रिवेंटिव मेडिसिन एक्ट करती है कि अगर आप अभी रेगुलर चेकअप करते हैं तो डेंटिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट है, आपका जनरल डॉक्टर है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, ये इश्यूज को पहले ही पकड़ सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बजाय कि वो काफी एडवांस लेवल पे पहुंच जाए।
इस एज ग्रुप में स्लीप का एक इशू जरूर है। स्लीप का इशू, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, एनुअल टेस्ट एंड चेकअप में ऑस्ट्रेलिया में स्किन कैंसर काफी बिग इशू है। ऑस्ट्रेलिया में काफी लोग आयरलैंड और इंग्लैंड से आके बसे हुए हैं, तो उनकी स्किन वाइट होने के कारण वो यहाँ के जो सनी इन्वायरमेंट से यूज टू नहीं है, उनकी बॉडी जनरेशन, इट टेक्स जनरेशंस ऑफ टाइम। अगर आप इंडिया में देखेंगे तो अपनी बॉडी में मेलानिन है जो कि सन को रिफ्लेक्ट करता है काफी अच्छे से, इसलिए इंडिया में स्किन कैंसर होने के चांसेस कम है। बट अगर आपकी स्किन वाइट है, आईज ब्लू है, तो आप सन को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो स्किन टेस्ट जो है वो कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में मोस्ट लोग साल में 2 बार या 1 बार करते हैं, और अगर हाई रिस्क ग्रुप होने पे 1 बार स्किन कैंसर होने के बाद हर 3 महीने से टेस्ट होता है, तो वो भी एक तरीके से एनुअल टेस्ट और चेकअप में शामिल है। ये टॉपिक स्लीप से रिलेटेड है। अपनी बॉडी में मेलानिन की सॉर्ट ऑफ काफी होने से, मेलानिन होने से और सन को रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी होने के कारण अपनी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना काफी कॉमन है। इंडिया में अगर आप देखें तो काफी लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जाती है। एक प्रॉब्लम यह है कि लोग टेस्ट नहीं कराते हैं, तो डेफिशिएंसी होने के बावजूद उनको पता नहीं चलता है जब तक कि वो एक्सट्रीम लेवल पे नहीं आ जाए, और तब उनको पता चलता है, और उस टाइम तक उनको काफी इश्यूज हो सकते हैं। और एक इशू जो इसका है वो है स्लीप का। अगर आपकी बॉडी सफिशिएंट दिन के टाइम सन में नहीं रहती है, तो आपको स्लीप डेफिशिएंसी होने के चांसेस हो सकते हैं। एक्सरसाइज आप जब सेलेक्ट कर रहे हैं, तो अगर आप फंक्शनल एक्सरसाइजेस सेलेक्ट करें जो कि लोग खुद करने वाले हैं और उनकी बॉडी दिन में यूजुअली करेगी, तो ज्यादा बेनिफिशियल है। एक्सक्यूज मी। फंक्शनल एक्सरसाइज से मेरा मतलब है, अगर आप एक्सरसाइज करवा रहे हैं तो ऐसी एक्सरसाइज करवाइए जो कि वो डे टू डे एक्टिविटीज में यूज करते हों। फॉर एग्जांपल स्क्वाट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, पुशअप्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, और पुलअप्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन तीन एक्टिविटीज को कर लें तो काफी सफिशिएंट है 60+ एज ग्रुप के लिए। और ये बॉडी वेट एक्सरसाइजेस हैं जो कि आप घर पे कर सकते हैं। और जब आप ये एक्सरसाइजेस प्लान करें तो इसमें ग्रेजुअल बिल्डअप और वेरिएशन काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुअल बिल्डअप से मेरा मतलब है कि एक्सरसाइजेस एक लेवल से स्टार्ट करिए और धीरे धीरे आफ्टर ऑल्टरनेट डे करिए, जैसे भी करिए उसको धीरे धीरे आप बढ़ाइए। और वेरिएशन से मेरा मतलब है कि काफी लोग स्ट्रेट अप पुशअप नहीं कर पाएंगे, स्ट्रेट अप पुल अप नहीं कर पाएंगे, स्क्वाट्स नहीं कर पाएंगे, तो उसका वेरिएशन आप डेवलप करिए। अगर मैं स्क्वाट का एग्जांपल दूं तो स्क्वाट्स, जो बॉडी वेट स्क्वाट्स है वो काफी सिंपल है। आपको जस्ट एक चेयर पे बैठ के खड़े होना है, तो आप पीछे चेयर पे ही बैठिए, आप खुले में नहीं करिए ताकि पीछे गिरने का डर ना रहे। और फिर आप उसको ग्रेजुअली बिल्डअप कर सकते हैं। चेयर के ऊपर बैठने की जगह सिर्फ आप चेयर के टच हों और वापस खड़े हों। उसके बाद आपको काफी कॉन्फिडेंस आ जाए और आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाए, तो आप चेयर हटा के सिर्फ बिना चेयर के कर सकते हैं। फिर आप उसमें एक्स्ट्रा वेट्स ऐड कर सकते हैं, जो कि आप अपने हाथ में, अगर सिर्फ आप 5-5 किलो की वेट्स ले लें तो भी उससे काफी फर्क पड़ेगा। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में देना चाहिए। अगर आप 60+ ग्रुप के लिए एक्सरसाइज बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, या आप खुद 60+ एज ग्रुप में हैं, तो आपको इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और मेरे हिसाब से ये सब आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो इसी के साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करूंगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो यूट्यूब पे यहाँ जूम पे आप पूछ सकते हैं, और मुझसे जितना हो सकेगा मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। Okay, thank you, Dr. Shraddhi Rathod ji. My pleasure, ma'am. It was indeed very interesting and relevant presentation. I have picked a question from one of our viewers, sir, for you. As you know, today our youth are getting more and more aspects of the fitness and as a trend. Sir, what do you think about dietary supplements? Who was dependent on them? What is your take on it? Like, are they very good to take, especially after 60? Should we consider the supplementary, the dietary supplements?
मैम श्योर मैम, डाइटरी सप्लीमेंट्स मैम अभी कोरोना के कारण काफी इसको न्यूज में भी बोला जा रहा है, बात की जा रही है। अगर मैं कहूँगा जैसे इसमें ऐसा है मैम, जो मोस्टली विटामिन्स हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं, तो एक्स्ट्रा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैक होने से काफी रिस्क है। तो अगर अपन माना कि अपन लोग अभी आईटी से जुड़े हुए हैं, अपने पास कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, इंटरनेट कनेक्शन है, तो अपन इस फाइनेंशियल कंडीशन में है कि अफोर्ड कर सकते हैं। इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि 30 से 40% लोग ऐसी सिचुएशन में नहीं है, लेकिन जो लोग इस सिचुएशन में हैं उनको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मैं इस सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँ क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, बट आप इसके ऊपर रिसर्च करिए, अपने डॉक्टर से पूछिए कि मैं क्या। लेकिन जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, विटामिन ए, बी, सी, जो भी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, अगर बॉडी में अगर एक्स्ट्रा होते हैं तो ये यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं, तो कोई हार्मफुल साइड इफेक्ट्स इनके नहीं है एक्स्ट्रा होने के का। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं उनका आपको ध्यान देना होता है कि वो ज्यादा ना लें आप, क्योंकि वो बॉडी में ही रहेंगे, वो डिस्पोज नहीं होंगे। तो उसमें विटामिन डी भी है, लेकिन विटामिन डी अगर आप 2000 IU भी लेते हैं दिन का तो भी वो काफी कम है, क्योंकि रिसर्च कहती है कि आप अप टू 5000 to 10,000 IU ले सकते हैं, उससे भी हार्म नहीं होता है। तो अगर आप रीजनेबल अमाउंट में लेते हैं तो उसके काफी हेल्पफुल आउटकम है। और विटामिन डी का तो मैम ऐसा है कि आजकल एक इंजेक्शन भी आता है जो कि 600,000 IU का इंजेक्शन लगता है, साल में एक बार आपको लगवाना होता है, और देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। साल भर की गई और आप जस्ट उसको फोन में सेव करके रखिए और साल में एक बार वो इंजेक्शन लीजिए। तो ये जितने भी विटामिन्स हैं इसमें लॉस कम है और आप प्रिवेंशन ज्यादा कर रहे हैं। स्पेशली अगर आप बैलेंस डाइट नहीं खा पा रहे हैं, अगर आप योगर्ट, प्रोटीन, दूसरे मिनरल्स, हरी सब्जियां, फ्रूट, ये सब चीजों को आप कंज्यूम, most of us don't take help of nutritionists to prepare our diet, so it's obvious कि कुछ ना कुछ लैक हो सकता है। तो ये एक तरीके से बेस कवर करना है उस चीज को। मैम एक यूट्यूब पे और क्वेश्चन था कि व्हाट रेजिस्टेंस एक्सरसाइज यू वुड सजेस्ट टू पर्सन्स एज मोर देन 60, तो मेरे ख्याल से मैं उसको आंसर कर चुका हूँ कि स्क्वाट्स है और पुशअप्स है। पुलअप थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, तो पुलअप करने की जगह अगर आप स्ट्रेच बैंड्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे पुशअप्स वगैरह है तो पुशअप्स आप सीधा फ्लोर पे नहीं कर पा रहे हैं तो वॉल की हेल्प लेके पुशअप करिए। स्टार्ट फ्रॉम 5, व्हेन यू कैन डू 20 तो आप नी पे करिए, नीज फ्लोर पे रख के करिए। स्टार्ट फ्रॉम 5, व्हेन यू गेट टू 20 देन यू कैन लिफ्ट अप योर नीज एंड यू कैन डू स्ट्रेट अवे। तो जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं उन सब के वेरिएशन है। और द अमेजिंग थिंग ये है कि आज की तारीख में यूट्यूब पे और गूगल पे हर एक्सरसाइज का वेरिएशन आपको मिल जाएंगे। तो जो बेसिक एक्सरसाइज है, स्क्वाट है, पुशअप है, पुलअप है, इनके वेरिएशन अगर आप डेवलप देख लें और बेसिक लेवल से स्टार्ट करें और उसको धीरे धीरे डेवलप करें। अगर कोई भी 60 प्लस की एज में 20 पुशअप, 20 पुलअप और 20 स्क्वाट्स, बॉडी वेट स्क्वाट्स भी कर लेते हैं तो दैट्स बेसिक फिटनेस जो कि आपको that will just keep you going and you would be able to enjoy your life in a better way. So that's what I think, ma'am. I have one query or adding one thing. Sure, ma'am. It is very nice presentation in very cool state. I want to say only one thing. Actually, I do practice in my home also. Is all these things I try to do with my mother or my grandmother like this. Even they are not with us or not, it is not a matter. Thing is, whenever we motivate them with the help of testing measurement method, they are so happy. Because when I start with the 5 chair squat, she's told me that day, no, it is not possible to me. But whenever she performed 5 and we have give the target 6 for next week. So and he or she completed that. Oh, what I imagine. They are so happy. So through the activity, we give the happiness to them, the coziness to them. Especially one bonding is there. Someone is there to feel or think for my health. It is not only based on the nutrition.
nutrition is very good. Maybe we are offering milk or good raw foods also, or multigrain diet. Even we can say our original or mota khana. We are on जी this, मैम but whenever it is with the humbleness, it is the quality is increased. So with the exercise also, उनको अलग से exercise नहीं कराइए, उनको अपने साथ involve करना है. And secondary test and measurement को apply अगर हम करते हैं, तो they are so happy. I think so. It is the main thing, and your topic is fantastic because it is our root. Thank you. या मैम डेफिनेटली मैम. मैम इसीलिए मैंने डिटेल में नहीं गया जब मैं कह रहा था कि ग्रुप और सोशल एक्टिविटी हो तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एज यू सेड वेरी वाइजली दैट द सोशल एस्पेक्ट इज सो इम्पोर्टेंट. अगर सोशल एस्पेक्ट है, अगर साथ में कर रहे हैं, और उसका अगर कोई आप अगर इवन टू टेक इट ए स्टेप अहेड, इसका कोई गेम आप बना पाए तो वो इवन बेटर है कि इट्स लाइक ए गेम. यू डू इट वन, आई विल डू इट वन एंड सी हु कैन डू मोर. बिकॉज जो गेम का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी एज में भी काफी इंटरेस्टिंग रहता है और मोटिवेट करता है. तो आज जैसे मैं थका हुआ था, लेकिन टेनिस खेल रहे हो तो उस बॉल को आप चेज करोगे. फुटबॉल खेल रहे हो तो कितने भी थके हो, बॉल आपके पास आएगी तो आप भागोगे, यू विल स्प्रिंट, एंड देन व्हेन द बॉल इज गॉन यू आर लाइक टायर्ड अगेन. सो दैट जो स्पोर्ट्स की जो साइकोलॉजी है मैम कि आई वांट टू डू दैट, आई वांट टू गो दैट वे, तो वो अपने से थोड़ा एक्स्ट्रा निकाल पाती है. जो टीम है, टीम स्पोर्ट्स हैं, वो और भी एक्स्ट्रा निकाल पाते हैं. तो वो कंजम्पशन ऑफ डाइट इज आल्सो गुड दैट टाइम. उनका इंटरेस्ट भी डाइट के लिए बढ़ता है. नहीं तो वो लोग कहते हैं कि नहीं हम तो लेटे रहते हैं, पड़े रहते हैं, हमें क्या करना है खा के. तो इट इज नॉट लाइक दैट. थैंक यू सो मच. या श्योर मैम. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू पूनम मैम. Thank you, Satinder sir. Thank you all of you for listening to me. Thank you, Dr. Shade. It was so nice presentation, and it was so nice to have you here with all of us. And thank you, Archana ma'am. और अब वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं Professor Archana Chaturvedi. Okay, am I audible, Dr. Patel? Hello. Am I audible? Yes. Now you're audible. We just missed your few sentences. Okay. Okay. So next स्पीकर के तौर पे वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं प्रोफेसर अर्चना चहल जी. बहुत संक्षेप में मैं उनको सभी व्यूअर्स के साथ उनका परिचय करवा दूं. अर्चना मैम HOD डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, प्रयागराज, इंडिया से हैं. A very well known lifestyle and motivation expert in physical education and sports. With great academic scores, she has also done coaching diploma in basketball and sports sciences from NSNS Patiala. Once honored University Best Athlete Award and a vivid keynote speaker in various conferences at the various national and international platforms. Represented country in 12th International Commonwealth Sports Conference held at Manchester Metropolitan University, United Kingdom. Her contribution for sports upliftment is commendable, and also worked as independent observer at National Anti-Doping Agency NADA and special member of NCERT. Commendable, ma'am. So very nice to have you here. She happened to secure second place in national level cross-country event recently and has completed many stages of advanced cycling events. So very proud to have you here, ma'am. I hope and I wish it's going to be a great session with you. So for your presentation, ma'am, now it's over to you. Welcome again. Thank you. Sure. रुको. Thank you so much.
Thank you. The management group patron. First of all, I would like my greetings to Dr. Vandana Sharma ji, the patron of this event. Secondly, the principal and the convener of this great occasion where we are together. Thirdly, our organizing secretary, co-organizing secretary, and the persons behind this curtain of the Zoom webinar, especially Swetendra sir. You gave the boost to this webinar in a nice way. And of course, our golden speakers, eminent speakers, who gives the route to me to make our things easy. And dear participants and the viewers and the audience, I am here with a few things to share with you. This is a very great, just a minute, I'm going to start. This is very simple. There is a time to say there is nothing cheating or like that, or we are offering our thanks and give the courtesy which things are used in this presentation. Maybe in the reference or rec, data, pics, XYZ. It is very simple presentation today because we have very much lack of time and it is already delay. And we have talking about the physical education, sports, and even the yogic exercise also, and all things which are come into the physical activity during and after this crucial period. But whenever the crucial things has come, so many gates are open. And one of this, it is a golden opportunity. It is a true opportunity to all the physical educationists, coaches, administrators, or sports or physical education policy makers. Just awake yourself. Even it is the time to give the prime contribution to our society. It is not a time to just check what is physical education. It is the time of how we can serve our society, our nation, in a fantastic way, in a healthy way, in an energetic way. So this is a little bit the background of this. And one is, this phrase is also cover all the things. If we are failing to encourage physical development progress, we will undermine our capacity for thought. So this is a tricking point here. ये एक signal है where we just awake yourself also, me, you, and all. So in the present scenario, I have divided into the two period, during Corona period and after Corona period. During Corona period, we have listened lots of things continuously. Three things are there. I give the name, Avni. What is that Avni? A for activity, V for vaccine, N for nutrition, and I for immune system. The total from mouth to ear or ear to mouth, the whole society is discussed about this. And after then the other things has come. Even the prime things also go behind. This Avni gives the lots of things to us, but in this I have taken especially our activity part. So physical activity is it's a great muscular activity, effort activity to give the produced by the skeletal muscles in the formation of the required energy expenditure. So normal routine work is also a physical activity, but whenever we're talking about the physical activity with emphasis, this is the produced by skeletal muscles that required energy expenditure with particular task. This physical activity is life is characterized by movement because the human body is not nothing can do without our body. Even the good thinking, the good even your embryo is not going well if the movement is not there. So physical activity is related with our movement, and it is characterized by the all movements, bodily movements.
The human body is made for the physical activity and movement. We have never forget, and this time especially, the people understand this thing without saying anything. Whenever the physical educationist start to suggest something, ऐसा मत करो, ऐसा बैठो, ऐसा करो, तो कोई ज्यादा सुनता नहीं था. सबको ये लगता था कि एक पर्टिकुलर एज में हमें डॉक्टर तो हैं ही, डॉक्टर हमें रिकमेंड कर देंगे एंड वी आर हियर टू सर्व अवर. तो वो सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हुआ है, स्पेशली इस पेंडेमिक टाइम पर हमने फिजिकल एक्टिविटी की जो इम्पोर्टेंस समझी है, तो उसके लिए मेन हम सोच सकते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ने वाली है. And the physical inactivity is a national health risk. And we are very much lucky कि अभी लॉन्च भी हुआ हेल्थ सिक्योरिटी के लिए. आप देख रहे हैं कार्ड सिस्टम से लेके, लेकिन मैं इससे भी कहीं ज्यादा की बात बोलने वाली हूँ. और मैंने यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम ये जानते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी इज अ नेशनल हेल्थ रिस्क, तो हमारा जो टोटल बजट होता है वो जाता कहाँ है, स्पेशली हेल्थ के लिए जो बात होगी. तो वो मैं आगे अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी. एंड वी नो ऑल और नो व्हाई फिजिकल एक्सरसाइज और ऑल दीज थिंग्स. तो इसको मैंने थोड़ा सा ब्रॉडली ऐसे ही जस्ट एक बैकग्राउंड देने के लिए स्टार्ट करना चाहता कि बिकमिंग मोर एंड मोर वे ऑफ लाइफ, स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज को आज अपने आप को इस टाइप से प्रेजेंट करना है कि दीज आर द लाइफ स्टाइल, क्योंकि स्पोर्ट्स अपने आप में एक लाइफ स्टाइल होता है. जो स्पोर्ट्स है, अगर आप, क्योंकि विवेकानंद जी ने ऐसे ही नहीं कह दिया होगा, या शरीर साधनम खलु धर्म साधनम ऐसे ही नहीं आ गया होगा, यथा पिंड तथा यंदा की बात हमने करी, तो वो कहाँ से आई चीजें, यानी कि लगभग 4500 साल पहले का तो हमारे पास रिटन स्क्रिप्ट है और हम उसको भूलते जा रहे थे. तो हमें कहीं ना कहीं है कि यही एक जीने का सही तरीका हम खेलों के तरीके से या एक्टिव रहने से, योगासना से हम प्राप्त कर सकते थे. हाउ इट इज, बिकॉज विवेकानंद जी ने जैसे अपनी बात में भी कहा कि अगर आप किसी की अच्छाई बुराई को जानना चाहते हो तो आप उसके साथ 1 घंटा खेल लो. आप उसका वे ऑफ स्टाइल, आप उसका चीटिंग, आप उसका गुड थिंग, आप उसका बिहेवियर, सारा कुछ आप एक खिलाड़ी के तौर पर उसमें देखते हैं, तो आप उसके साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं, ये आपके लिए बड़ा अच्छा जजमेंट है. इवन छोटे छोटे बच्चों को देखिए, और दैट्स व्हाई द वन फ्रेज ऑलवेज कम कि बच्चों की लड़ाई में कोई किसी को नहीं बोलना चाहिए, बड़ों को तो बिल्कुल नहीं एंटर करना चाहिए, क्योंकि बच्चे खुद वो करके सीख रहे हैं और फिर वो भी सीख रहे हैं. मैंने इसको बोला, कल ये मेरे को बोलेगा, तो वो भी लाइफ की बहुत सारी स्किल सीख रहे हैं. तो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज और एजुकेशन इज इटसेल्फ अ लाइफ स्टाइल, इट इज अ वे ऑफ लाइफ. ग्रेटर द पोटेंशियल फॉर लाइफ एफिशिएंसी, हम सब जानते हैं हम जितना जिए. आज अगर कोई ओल्ड पर्सन भी है, वो दवाइयों के सहारे अपने आप को जी रहा है, तो उससे भी अगर आप पूछेंगे, या जो हेल्दी है, उस हमेशा हमारे मुंह से एक ही नाम निकलता है, हे भगवान बस इस चलती काया से उठा लेना, किसी के सहारे हमें ना रहना पड़े. व्हाई दिस? क्योंकि हमारे अंदर जीन्स में है ये चीजें. तो हम इसको इतना प्रायोरिटी क्यों नहीं दे, हमने इसको इतना ज्यादा डल क्यों रखा, इसको हमने सबसे पीछे क्यों कर दिया. इवन वी आल्सो हम भी जब स्पोर्ट्स करते थे तब हम अपने आप को रखते थे फिट रखने की कोशिश, और वी आर द मिरर. जब हमें लोग देखते हैं कि आप फिजिकल एजुकेशन के हो, जब आप ही फिट नहीं हो तो आप दूसरों के लिए क्या उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि वो हमसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगते हैं. बट हम यहाँ ये कहना चाहते हैं, दिस इज द प्राइम ड्यूटी ऑफ ऑल द सिटीजन्स टू give the time to your body, and the body is the best medium to do all the things. There is no drug. अभी जैसे डॉक्टर श्रद्धेय बता रहे थे कि भाई आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं, आपके न्यूट्रिशन के लिए सप्लीमेंट्स आ गए, बट व्हाट्स अबाउट एक्सरसाइज? अगर आपकी बॉडी, आपका एंडोक्राइन सिस्टम, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सिस्टम अगर उस पर्टिकुलर लेवल पर काम नहीं कर रहे हैं, या आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपके हैप्पी हार्मोन्स नहीं सीक्रेट हो रहे हैं, तो हाउ यू फील, आप हमेशा ये डलनेस की तरफ जाएंगे. तो ये कुछ चीजों को मैं यहाँ ले रही हूँ. और इवन आज आप देख रहे हैं कि एकेडमिक परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए द पीपल आर रेडी टू परफॉर्म. वो बोलते हैं कि हमारे बच्चे को आप कुछ एक्टिविटी कराइए, क्योंकि जब ये एक्टिव होंगे, खेलेंगे, कुछ टाइम वहां लगाएंगे, तो ये कंपैरिजन करते हैं और फिर अपने आप को पाते हैं कि भाई इनका ये डाइट भी अच्छी लेना शुरू करते हैं. जब ये थकते हैं तो इनके स्लीपिंग ऑर्डर भी थोड़े सही होते हैं, और देन वी कम द गुड एकेडमिक पॉइंट्स आल्सो. And we never forget, it is a valuable gift of the nature. So this is continuously, sorry, what is this, then during corona period क्या हुआ कि लाइफ विदाउट स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी, जरा सा इमेजिन करके देखें, जरा सा. आप स्टार्टिंग के लॉकडाउन के 3 months जो थे, अगर ये खेल ना होते
भले ही वो इंडोर थे, भले ही वो छोटी सी छत पे थे, भले ही वो छोटे से बेड पर थे, भले ही वो छोटे से लॉन में थे, अगर ये स्पोर्ट्स ना होते तो ये लॉकडाउन का पीरियड, तो स्पेशली जहां बच्चे थे, ये कैसे गुजरता, ये हमें सोच भी नहीं सकते हम। तो स्पोर्ट्स का मतलब केवल एक अरेंज, एक सिस्टमेटिक, एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की बात नहीं मैं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर एक्टिव रिक्रिएशन की बात कर रही हूँ, जो कि हम स्पोर्ट्स के थ्रू हमने अपने आप को पूरा करने की कोशिश करी। तो जस्ट इमेजिन लाइफ विदाउट स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी, तो हमारा क्या हाल होता, और हमारा हमसे ज्यादा औरों का क्या हाल होता, जो सोसाइटी में जिन्होंने फिजिकल एक्टिविटी की तरफ कभी सोचा ही नहीं और उसको एकदम हमेशा नेग्लेक्ट रखा। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा सीन निकल के आया। इसके बाद वी थिंक हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, क्या मिलेगा, डॉक्टर तो हैं, इवन आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ये हमेशा बोलते रहते हैं, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, इतना सब कुछ है, डॉक्टर किस काम आएंगे, ये अगर मैं मन है मेरा डाइट खाने का तो मैं तो खाऊंगा, डॉक्टर किस काम आएंगे, दवाई किस काम आएगी। तो हम मतलब हमारी थिंकिंग देखिए क्या कहाँ किस लेवल तक पहुंच चुकी थी। तो हमें ये कहना चाहिए कि कम से कम वो लोग भी थोड़ा सा जागे कि आज दो ट्रेंड वहां पर बने कि अगर मनपसंद फैशन आपको फॉलो करना है तो भी आपको फिट रहना है, क्योंकि आपको तभी वो ड्रेस अच्छी, या मनपसंद खाना है तब आपको फिट रहना है, क्योंकि आप इतने गोलगप्पे खा लिए, कल हम एक्टिविटी करेंगे। जैसे कि अभी किसी ने बोला भी था कि भाई टैबलेट फॉर्म में आप फिजिकल एक्टिविटीज को ले रहे हैं, तो मैं वहां पर भी एक मैं पॉजिटिविटी दे, कम से कम लेना शुरू किया ना, लेना शुरू किया, ये ज्यादा जरूरी था। धीरे धीरे जब उनको खुद उसके सिकनेस समझ में आएगी तो हो सकता है उन चीजों से वो धीरे धीरे खुद भी दूर होंगे। तो अगर हमें अपनी जनरेशन को थोड़ा सेफ रखना है तो हो क्या रहा था, आप देखिए, जब हम वेट करते थे कि हमें डॉक्टर रिकमेंड करेगा तब हम फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, तब हम वॉकिंग स्टार्ट करेंगे, योगा स्टार्ट करेंगे और या हम ये सब कर लेंगे। लेकिन आप हम भूल गए, हमारे साथ हमारी एक फ्यूचर जनरेशन भी साथ चल रही है, और वो हमको क्या देखती है, वो हमको जिस रूप में देखती है वो भी उसी रूप में फॉलो करते हैं। और आप ये सोचते हैं वो जाके रनिंग कर ले, वो जाके एक्टिविटी कर ले और हम तो तब करेंगे। तो अगर हमने ये अपना चेंज लाया, अगर आज के टाइम पर वो आपको और हमें रेगुलर एक्टिविटी करते देख रहे हैं, तो कम से कम उनके जहन में कहीं ना कहीं हुआ कि ये स्टार्टिंग से ही इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीरियड को मैं तो बहुत याद रखूंगी। And great need to peace as a foundation, as a literacy। और जैसा सर ने बोला, डॉक्टर राकेश ने बोला, कल्चर की बात है, 76 से टर्म चल रहा है, रशिया कब से ये टर्म लेकर बैठी हुई है, कल्चर की बात हो रही है। लेकिन मैं तो यहाँ ये बोलूंगी, कल्चर अपने आप कल्चर कब बनेगा, जब ये हमारी लाइफ स्टाइल में आएगा। लाइफ स्टाइल में कब आएगा, जब हम इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, और जब हम इसकी एक फाउंडेशन के तौर पर रखेंगे। कल ही मैं कोई एक प्लान की बात कर रही थी, उस प्लान में जब हम ये कहते हैं कि हम अभी भी हमारी एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन में फिजिकल एक्टिविटीज तो हो रही होंगी, बट विदाउट फिजिकल एजुकेशन टीचर हो रही हैं। फिजिकल प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन में आज भी फिजिकल एजुकेशन टीचर की कोई जगह नहीं है। वहां एक प्रिंसिपल, 2 और 3 सब्जेक्ट टीचर होंगे और वो सब कुछ कराएंगे। तो जब हमने ग्राउंड लेवल पे अपनी इंपॉर्टेंस को सबसे कम कर लिया, और जो है भी वो कितना कराएंगे, वो कितना सही कराएंगे, ये बहुत सोचने वाली बात है हमारे लिए। तो फिजिकल एजुकेशन को हम हायर लेवल पे अगर केवल सोचते रह गए तो हम ऊपर की बात करेंगे, हम अपने फाउंडेशन को कभी भी इसको एकदम स्ट्रेंथफुल नहीं बना पाएंगे, स्पेशली पॉजिटिव सीन से। एंड जब हम, और इसके साथ बहुत सारे पॉइंट थे, जैसे अगर आप बात करें डाइट की, हमने बहुत बात करी, हम आयुर्वेदा की तरफ मुड़े, हमने अपने उन रूट्स की बात करी। तो जो कहीं ना कहीं आज अगर मैं यहाँ कह सकती हूँ कि फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री को भी हमें दोबारा देखना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री वेस्टर्न से आ सकती है, बट फिजिकल एक्टिविटी की हिस्ट्री कहीं ना कहीं इंडियन रूट्स में ही है, और इसको आप और हम ही को कुछ करना पड़ेगा, और कोई कुछ नहीं करेगा। क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वेस्टर्न हिस्ट्री, आज उसी के वीडियो बनाकर, आज उसी की बुक्स बनाकर छाप रहे हैं, क्योंकि हमने वहीं तक पढ़ा। हम 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी तक गए, इसके पहले क्या कुछ नहीं था? क्या लोग अपने आप को फिट, व्हाट इज द एम ऑफ द फिजिकल एजुकेशन? वी नेवर फॉरगेट दिस। हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, बट एम क्या है? वी नेवर फॉरगेट दिस। ऐसे ही स्पोर्ट्स की तरफ भी आप देखें, क्योंकि हमने, अब जब हम पढ़ते हैं इंडियन कल्चर में, जब हम आते हैं तब हम देखते हैं कि हमने महाभारत, हम रामायण जी, ऐसे होता था, ऐसे होता था, वेदाश्रम होते थे, वहां पढ़ते थे। तो क्या वो फिजिकल एजुकेशन? हो सकता है शारीरिक शिक्षा शब्द ना रहा हो, फिजिकल एजुकेशन टर्म ना रहा हो, लेकिन कुछ तो था जिसकी जड़ भी इंडिया में ही थी। और वो हमें ये कोरोना पीरियड ने कैसे याद दिलाया, जब हम वो संस्कृत सुंदर सुंदर मंत्र याद आए और हमने कहना शुरू किया, सर्वे भवन्तु सुखिना,
सर्वे संतु निरामया। तो हम कैसे भूले? अगर हम भूले भी तो ये फिजिकल एजुकेशन टीचर को कहीं ना कहीं रिवाइव करने की जरूरत है कि हम अपनी हिस्ट्री की तरफ भी जाएं। क्या वो वेस्टर्न के रूट्स में ही है या कहीं और थी? ठीक, जब ओलंपिया भी 776 बीसी पर है तो उससे पहले भी तो लाइफ थी ना, तो वो तो कहीं ना कहीं इंडिया से रिलेट कर रहे हैं सब लोग। तो ये इसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा सोचने का मौका मिला और बहुत डेलिबरेटली इसके ऊपर डिस्कशंस भी हुए। वेल, ये मेरी तरफ से मैंने ड्यूरिंग कोरोना पीरियड को कुछ इस टाइप से देखा, जिसमें मैंने न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी और वैक्सीन को एक छोटा सा रूप देके इसलिए छोड़ दिया कि बहुत सारे लोगों ने उसको कवर भी किया है। नाउ द पोस्ट कोरोना पीरियड, दिस इज अ वेरी बिग थिंग टू अस। मुझे नहीं पता ये कोरोना पीरियड कब खत्म हो रहा है, खत्म भी होगा कि नहीं होगा, बट स्टार्टिंग हो चुकी है। क्या स्टार्टिंग हो चुकी है? सीधी बात करें, एक एजुकेशन पॉलिसी में जो हमने ठीक है वो, लेकिन आया और आना शुरू हुआ, उसके ऊपर रिएक्शंस आ रहे हैं, उसके ऊपर सजेशंस आ रहे हैं, उसके ऊपर बहुत सारी अच्छी चीजें आ रही हैं, इम्प्लीकेशंस भी आ रहे हैं, रिकमेंडेशंस आ रही हैं। लेकिन इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को ये हमने फील करने की कोशिश करी, और इंडिया इज द ग्रेट इन दिस मैनर कि हमने स्पोर्ट्स फॉर ऑल और यूनेस्को चार्टर सबकी चीज को इतने सालों बाद ही सही कम से कम सोचा तो सही। क्या सोचा? अगर हम देखते हैं, अगर 78 की बात करते हैं तो यूनेस्को चार्टर को हम देखते हैं, अगर वो आज पूरा हो रहा होता तो 2015 में यूनेस्को चार्टर की डेफिनेशन सेम वहीं से स्टार्ट ना हुई होती। उसमें ये कहा था, इज द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल, ऑफ द सिटीजन, ऑल द सिटीजन्स। और आज 2015 में जब वो रिवाइज हुआ तो भी स्टार्टिंग वहीं से थी। इसका मतलब हम इतने सालों से फेलियर ही हैं। फेलियर इन द सेंस कुछ परसेंटेज हमने बढ़ाई होगी, फिर कुछ परसेंटेज बढ़ी होगी, पर अभी तक उसने अपने एम को या अपने ऑब्जेक्टिव्स को कहीं ना कहीं पूरी तरह से नहीं पा पाया, तभी तो उसमें नेक्स्ट स्टैंडर्ड नहीं बन पाया। तो यूनेस्को चार्टर की अगर आप बात करें, तब भी आप अगर स्पोर्ट्स फॉर ऑल जैसी पॉलिसीज आई उनकी बात भी कर लें, और आप 2005 में जब स्पोर्ट्स पॉलिसी आई, स्पेशली हरियाणा गवर्नमेंट की मैंने कुछ पढ़ी थी, तो वहां पर जब इन्होंने जब पॉलिसी में चेंज करने की कोशिश करी थी, तो आपने उसके बाद देखिए रिजल्ट में भी आपने फर्क देखा होगा, बट आउटकम में देखा आपने, आउटकम क्या, स्पोर्ट्स में मेडल्स तो देखे, बट फिजिकल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना चीजें आगे बढ़ी ये हमने अभी नहीं देखा है। तो इसको भी हमें देखने की जरूरत है। यानी कहीं ना कहीं मैं धीरे धीरे इसको हाई स्टैंडर्ड की तरफ ले जा रही हूँ। अदरवाइज क्या होगा, अनहेल्दी सिक पर्संस तो सिक सोसाइटी। और अगर ऐसा है तो फिर सिक सोसाइटी के लिए केवल डॉक्टर्स के होने की जरूरत ही है क्या? डॉक्टर से कहीं पहले, यहाँ पर यही मैं बात मेन कहने वाली हूँ कि डॉक्टर से पहले हम हैं, हमारा रोल क्या है। तो हमें रोल मॉडल भी रहना पड़ेगा, और बीइंग अ फिजिकल एजुकेशन के जितने भी सेंटर्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, वहां पर फिजिकल एजुकेशन को इस टाइप से प्रेजेंट करना पड़ेगा अपने आप को। चाहे वो बहुत सारी कमियां हैं, टीचर्स नहीं है, सिलेबस नहीं है, सामान नहीं है, ग्राउंड नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो है क्या उसको भी हम उतना प्रॉपरली यूज या यूटिलाइजेशन कर रहे हैं? इसको हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा। तो अदरवाइज सोसाइटी ऐसी ही बनती रहेगी। और सोसाइटी की डिमांड, एक अनहेल्दी सोसाइटी जब आप देखते हैं तो उसकी एक ही डिमांड रहती है, ओहो हमारे यहाँ हॉस्पिटल होने चाहिए, हमारे यहाँ एम्स खुलना चाहिए, हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिटी होना चाहिए। क्या कभी हम में से कोई ये डिमांड करते कि हमारे यहाँ ग्राउंड्स हो? आप कहेंगे कि हमारे यहाँ स्टेडियम है, बट हमें भूलना नहीं है, स्टेडियम फॉर होम। स्टेडियम में अब सामने एक सुंदर सा एक बोर्ड लगा रहता है, अलाउ ओनली फॉर स्पोर्ट्स पर्संस। एक आप यूनिफॉर्म पर्टिकुलर किट में आएंगे तभी आपको अलाउ होगा, यानी कि वहां भी आप नहीं है। बीइंग अ जनरल मैन, you are being a common man, you are not there. There is a place for the sports persons. तो हम केवल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए नहीं है फिजिकल एजुकेशनिस्ट, हम फॉर ऑल थे। तो हमने अपने आप को कहाँ पर कन्फाइन कर लिया है, ये भी ध्यान देना है। तो हमारा जो बजटरी, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसके ऊपर मैं आगे आपके साथ आज बात करने वाली हूँ। देन हाइपोकाइनेटिक डिसीज ऐसे ही बढ़ती रहेंगी। अगर हमने पोस्ट कोरोना पीरियड में क्या, अगर हमने आज इसको सुधारा होता तो हमारा ये हाइपोकाइनेटिक डिसीज तो 63 का टर्मिनोलॉजी आज इतना तेजी से ना चल रही होती, और बल्कि बढ़ गई, ओबेसिटी के फॉर्म में बढ़ गई। या जो अच्छे कंट्रीज जिनको आप कहते हैं उनके यहाँ भी यही प्रॉब्लम बहुत है, उनके यहाँ भी ओबेसिटी बहुत है। तो ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। अल्टीमेटली यहाँ से मैं लेके जा रही हूँ आपको एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम, या थोड़ा सा, बहुत ज्यादा तो नहीं क्योंकि इतना टाइम नहीं है, कि एजुकेशन कैन नॉट बी लॉन्गर कंसिडर्ड मेनली अ वास्ट ऑफ सी। केवल एक मेंटल एक्रोबैटिक के लिए एजुकेशन नहीं होनी चाहिए।
एजुकेशन अगर होनी चाहिए तो डेवलपिंग एन इंडिविजुअल हु इज अ फिजिकली फिट, इमोशनली बैलेंस्ड एंड सोशली वेल एडजस्टेड। और इसमें अगर इकोनॉमिकली कहीं मिसिंग हो रहा है ना, तो आप देखिए इन्हीं में इकोनॉमिकली है वो। अगर कोई सोशली एडजस्टेड है, अगर कोई फिजिकली फिट है, तो उसके कितने सारे पैसे, कितनी सारी चीजें, फाइनेंस उसका खुद ही सेव होता है। में अगर एजुकेशन की इस डेफिनेशन को या एजुकेशन के इस ऑब्जेक्टिव को अगर हम याद रखें, तो मुझे लगता है कि फिजिकल एजुकेशन को तो बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। वो तो खुद ही ब्लेंड ऑफ सब्जेक्ट्स है, ब्लेंड ऑफ नॉलेज है, डिफरेंट पैराडाइम से मिलकर हमारा है। तो हमें तो कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, बट हमें अपने आप को निकालने की जरूरत कहीं पर है। तो पॉलिसी बट इन प्रैक्टिस बातें तो बहुत अच्छी अच्छी हैं, मैं भी बहुत अच्छा बोल के चली जाऊंगी, आप भी चले जाएंगे, बट जहां पर हम ये कह दें, जिस कंट्री में एक प्रधानमंत्री को खड़े होकर ये कहना पड़े कि स्वस्थ रहिए, उससे ज्यादा नीचे की बात कोई नहीं हो सकती। क्योंकि हम वो सिटीजन हैं जिन्हें स्वस्थ रहना भी गवर्नमेंट सिखाएगी। हम इतने लालची हैं कि हमें स्वस्थ रहना भी गवर्नमेंट सिखाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हमें मिल जाएगा। अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही, यहीं से अगर हमने बात करी खेलो इंडिया और फिट इंडिया की बात, तो कम से कम हमें थैंकफुल होना चाहिए कि इतने सालों बाद सही कम से कम ये पॉलिसीज आई तो सही। क्योंकि अब आपकी बात को धीरे धीरे सुना जा रहा है। जब एक गवर्नमेंट का स्टैंप लगती है तो लोग सुनने को थोड़ा बहुत तो तैयार उनको रहना पड़ेगा, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और इसमें सबसे पहले आती है, सबसे छोटी यूनिट आती है वी। इफ आई एम हेल्दी देन यू आर हेल्दी। मैं भी स्वस्थ, आप भी स्वस्थ, तो मैं अगर हम सब बोलेंगे तो आप बताइए कहाँ प्रॉब्लम रह जाएगी। मैं सब में है। और जब यहाँ से शुरू हुआ तो फिर हम फैमिली की तरफ भी ध्यान देंगे। जब फैमिली की तरफ हम अच्छे से ध्यान देंगे, स्पेशली लेडीज के लिए यहाँ पर बात बीइंग अ फीमेल आल्सो, कि अभी आपने देखा कि फीमेल अपने ऊपर जितना ध्यान, वो बहुत अच्छा फैमिली सर्व करती हैं, सब कुछ कर रही हैं, बट और अच्छा कर सकती हैं अगर वो अपने आप को हेल्दी और फिट रखती हैं। तो पॉलिसी में कहीं ऐसी चीजें आनी चाहिए कि जो केवल स्कूल गोइंग के लिए नहीं होना चाहिए, जो स्कूल गोइंग जा रहे हैं, जो जा चुके, उनके लिए भी कहीं ना कहीं हमें प्लेस रखना पड़ेगा। दैट्स व्हाई द फिट इंडिया मूवमेंट हैज कम। और ये इसीलिए सक्सेस की तरफ भी बढ़ेगा, केवल इसलिए नहीं। दूसरी चीज हम यहाँ करें, इंडियन कल्चर, अगर मैं यहीं से स्टार्टिंग करूं तो ये एक गुड टाइम होगा जहां हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम तो दुनिया को रास्ता दिखाते थे। अगर हमने योग जैसी चीज दुनिया को दी, तो हमने चैरियट से लेके बहुत सारी चीजें दुनिया को दी हैं। तो अगर रेसेस थे, स्पोर्ट्स करते थे, इंडिजीनियस स्पोर्ट्स थे, छोटे छोटे स्पोर्ट्स थे, तो वो चीजें कहाँ गुम हुई, तो उनको हमें ही लाना पड़ेगा। आज मोस्टली पीपल आपसे जब मिलते हैं तो ये कहते हैं प्लीज मेरे बच्चे का किसी तरह से वीडियो या मोबाइल या कंप्यूटर ये थोड़ा कम करा दो, इनको एक्टिविटी मिल जाए। तो उनको किसी को लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके लिए तो मार्केट ओपन हो रहा है, वो घर से ही शुरू कर सकते थे। यानी कि खुद फिट रहिए, अपनी ग्रुप में एक्सरसाइज करने की जो हैबिट है ये हमको प्लान बना के देने होंगे। यानी कि हमारी एक्टिविटी ये बढ़ गई है, तो हमारे पास बहुत सारा मार्केट अवेलेबल है। आगे एजुकेशन पॉलिसी फिजिकल एजुकेशन बेस्ड जितनी होने जा रही है या जितनी होनी चाहिए, ये नहीं है, सब डिबेट हो सकती है। अभी डॉक्टर रोहेल ने उसको शायद कवर किया था, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें उसमें ऑलरेडी बोली, रिकमेंडेशन की बात करी, राकेश सर ने बात करी, वो सारी चीजें वहां जाएंगी। बट एजुकेशन पॉलिसी मेकर्स के लिए, और स्पेशली एजुकेशन पॉलिसी मेकर में वो सब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन कितना है, क्योंकि जब तक हम एक होके नहीं, और एक पे सोचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पर ये तो सोचा जाए कि फिजिकल एजुकेशन वी हैव सिंगल वन आई थिंक सो, जिनकी कोई काउंसिल नहीं होती है, अगर होगी भी तो उसमें तुम और मैं और ये सब रहेंगे। और जो 3 इयर्स का कोर्स, कोई 4 इयर्स का कोर्स, कोई 2 ईयर का कोर्स, कोई MA, कोई MSc, कोई MPEd, कोई MA, आज भी हम उसको डिफरेंशिएट नहीं करते, क्योंकि यूजीसी ने तो बहुत क्लियर कट दे दिया हमें। 2018 की अगर गाइडलाइन उठा के देखें हायर एजुकेशन सिस्टम की, तो एक टीचर उन्होंने बोला ही नहीं कि ये चाहिए, उन्होंने तो कहा सिंपल पीजी चाहिए। पीजी चाहिए, वो भी रेलेवेंट सब्जेक्ट में हो जाए तो भी चलेगा, आप पढ़िए उसको तो उसमें आपको मिलेगा। तो यानी कि ये अब लड़ाई झगड़े और ये मैं जो कोर्स चला रहा हूँ, आप जो चला रहे हैं वो ज्यादा अच्छा है, उसका टाइम ही नहीं है। नाउ द टाइम जहां हम ये सारे कह सके, गिव वन टाइप ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द साइड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मे बी वो 3 इयर्स हो, 4 इयर्स हो, 5 इयर्स हो, जो आपको करना है वो करिए उसकी, क्योंकि हर किसी के कुछ ना कुछ कमियां और अच्छाइयां रह ही जाएंगी। कोई 3 साल में अच्छा है, कोई 4 साल का अच्छा है, कोई उसमें कमी है, कोई उसी में। तो यहाँ बैठने वाली बात ये है। तो फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स पॉलिसीज को ऐसा करके कुछ देना जो
प्राइमरी से स्टार्ट होते हुए चले, प्राइमरी में बिल्कुल खत्म है। और जबकि सबसे ज्यादा बच्चा, अगर आज आप छोटे बच्चे से पूछे सबसे ज्यादा उसे क्या पसंद है? खेलना। पापा थके हुए आ रहे हैं, बच्चा चाह रहा है खेलना। मम्मी थकी हुई आ रही है, बच्चा क्या चाह रहा है? खेलना। और हम लोग उसको मिस करते हैं क्योंकि हमने अपने सिटीजन्स को ये मान लिया कि स्पोर्ट्स और फिजिकल जो है ये इनका काम है, ये उनका काम नहीं है। तो ये हमने गैप किया है, तो इसको भी आगे हमें देखना होना चाहिए। देन हेल्थ पॉलिसी, ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। व्हाई? हेल्थ पॉलिसी में डॉक्टर त्रेहन ने एक रिपोर्ट दी थी 3 से 4 साल पहले, और उन्होंने बड़ा सर पकड़ के कहा कि 66 या 63% शायद उन्होंने लिखा था कि ये पैसा तो बजट का टोटल, मतलब जो हेल्थ बजट मिलता है वो केवल हमारे डॉक्टर्स के उसके लिए हो जाता है, सैलरी और ये सब के लिए, दवाई वगैरह ये सब। हमारे पास तो हॉस्पिटल और इन सब के लिए या स्पेशलिटी के लिए कुछ बचता ही नहीं। मैं कितना बड़ा ये, मतलब क्या कहना चाहिए इसको, कि हम लोग हेल्थ में भी 66% बजट लेकर और की डिमांड कर रहे हैं, जिसमें 0% ग्राउंड्स के लिए होता है। क्या हेल्थ, बीमार आदमी की तो हेल्थ आपकी बात कर रहे हैं, और बीमारी कम पड़े तो? प्रॉब्लम तो यहीं से शुरू हुई कि हम पहले बीमार पड़े, फिर हम उन हॉस्पिटल का यूज करेंगे और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाएंगे। और हम लोग कौन थे? हम लोग वो थे कि जो आपको या सोसाइटी को कम से कम बीमार पड़ने के चांसेस दे सकते थे। हम उनको कम से कम एक ऐसा फैमिली के लिए, बच्चों के माध्यम से बच्चों को ही वो दे सकते थे कि जो आगे जाके जब जाएगा अपने घर में तो खुद को भी फिट रखेगा, ना कि अपने मार्क्स लेने के लिए फिट रखेगा। हमने सिस्टम इस टाइप से नहीं रखा होगा। तो अब यहाँ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अब आप हेल्थ और जीडीपी को जरा देखिए, जो देश जितना स्वस्थ और जो देश जितना कम बीमार पड़े, तो सबसे कम बीमार पड़ने के लिए तो क्या हम स्पोर्ट्स पर्सन बीमार नहीं पड़ेंगे क्या? या आप नहीं पड़ते? ये लोग हमें कहेंगे या आपको इंजरी नहीं होती? बिल्कुल होती है, बट हमारे चांसेस ठीक होने के, रिकवर होने के, क्योंकि मेंटल टफनेस, इमोशनल बैलेंस, हमारे अंदर ये टीम स्पिरिट इतनी कूट के भरी होती है कि हमारे पास चांसेस ज्यादा हैं। तो ये हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा रिकॉल करना पड़ेगा कि हेल्थ पॉलिसीज में आप हॉस्पिटल के लिए, आप दवाइयों के लिए, आप सबके लिए आप रखिए, लेकिन उससे पहले जो इस चीज को, यानी कि प्रिकॉशन इज बेटर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये लाइन को भी हमें कहीं ना कहीं याद रखना पड़ेगा। सॉरी पूनम, मुझे लग रहा है थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मैं इसको तुरंत वो कर रही हूँ। एंड द बिग बाजार, वी आर रेडी, वी आर हैप्पी कि अब बिग बाजार का टाइम है। क्या बिग बाजार है? हमारे लिए गुड मार्केटिंग ऑफ एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स, गुड फैशन डिजाइनिंग इज देयर, गुड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की बात कर लेंगे हम, गुड कमेंट्री एंड इन सब सारे बहुत सारे एरियाज हमारे पास आने वाले हैं, यूट्यूब चैनल्स भरे हुए हैं। बट क्या हम इक्विप्ड हैं जिनका असली ये काम होना चाहिए? क्योंकि हमने अपने स्पेशलाइजेशन को, अपने सिलेबस को अभी तक कहीं भी रिफॉर्म नहीं करा, हमने उसको रेडी करने की शुरुआत नहीं कर रहे हैं। तो फिर आप देखिए, जितने भी जिम हैं वो बड़े बड़े लोगों के खुलेंगे और 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 हजार में आपके और हमारे स्टूडेंट जाके वहां पे जॉब कर लेंगे, और जो ज्यादा पैसे मांगेगा उसको साइड कर दिया जाएगा, कम पैसे वाले को रख लिया जाएगा। तो वो क्या सिखाएगा फिर उस सोसाइटी को? वेल, this is a question mark to all of us. Family and society foundation, moral duty. हमें कहीं ना कहीं वो moral education हमारी खत्म हो गई। नैतिक शिक्षा, नंबर मिलते थे, ए पाया, बी पाया, सी पाया, सब खत्म। चलिए, ये नहीं, ये तो मॉरल, ये तो एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर हम कम से कम अपने स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट जो स्पोर्ट्स पर्सन की बात मैं बार बार नहीं कर रही हूँ, स्पोर्ट्स पर्सन इटसेल्फ है, वो तो है ही है। तो हमें ये कहना पड़ेगा कि इट इज अवर प्राइम और मॉरल ड्यूटी टू कीप देम फिट। हमें अपने आप को फिट रखना है, तभी हम अपनी फैमिली को और अपनी सोसाइटी को फिट रखने में हेल्प करेंगे। और स्पेशली वी आर द टीचर, तो टीचर की तो ड्यूटी और ज्यादा बढ़ गई। एंड वास्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की जरूरत पड़ने वाली है आगे, प्रोफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ने वाली है। मैंने एक वर्ड बोला है, प्रोफिशिएंट, कैपेबल, नॉट ह्यूमन रिसोर्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहीं से आई, कुकुर मुद्दे की तरह हमने इतने स्टूडेंट दिए और इतनी जगह सब खुला पड़ा है, सब जानते हैं, किसी के यहाँ पर, अच्छा मेरे यहाँ भी हो सकता है, आपके यहाँ भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन क्या हम ऐसा ट्रेंड पर्सन दे रहे हैं? क्या फिजिकल एजुकेशन टीचर पढ़ने के लिए, बनने के लिए क्या सबको जरूरी है हम पढ़ाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर क्राइटेरिया बहुत टाइट होना चाहिए। सच में ये एक सर्विस है जो सर्व कर सकता हो। जैसे कोचिंग लाइन एक सर्विंग है बहुत बड़ी, जैसे डॉक्टर लाइन एक सर्विंग है, तो वहीं उन्हीं के लिए जगह होनी चाहिए। पढ़े सब, बट टीचर बनने के लिए एक स्पेशल क्वालिटी की, बिल्कुल जैसे मैंने सुना है कि पॉलिसी में ऐसा आने वाला है कि टीचर बनना ही सबसे टफ हो जाएगा, बिकॉज आईएएस कौन बना रहा है? टीचर ही बना रहा है।
IAS की ट्रेनिंग कौन करा रहा है? टीचर ही करा रहा है। तो अगर टीचर का रुतबा सबसे ऊंचा था तो उसको वो वापस याद करना पड़ेगा और एक ड्यूटी के तौर पे हमें लेना पड़ेगा कि वास्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की जरूरत पड़ेगी, प्रोफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी और भी बहुत कुछ। मैंने इसको केवल छोटा सा यहाँ पर रूप दिया है बोलने के लिए, इसी एक अकेले पॉइंट पर बहुत सारे आप टॉपिक बना सकते हैं। देन पीस एज अ लाइफ स्टाइल एज ओल्ड रूल्स। जिस दिन ये हम कर लेंगे कि जैसे कहते हैं ना, फॉरेनर्स को आप देखते ही कहते हैं, जब हम किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो हम लोग चाय का प्याला बैठ ही ढूंढते हैं और वो ग्राउंड जूते पहन के ग्राउंड ढूंढता है, यहाँ दौड़ने भागने की जगह कहीं हो जाए या रोड पे ही वो दौड़ के आ जाएगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। हमारे ब्लड में फिटनेस होते हुए भी हमने उसको कहीं धिक्कार रखा है। तो जिस दिन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एज अ लाइफ स्टाइल ट्रीट होने लगेगा हमारी सोसाइटी में, उस दिन शायद सारा कुछ, कौन कोरोना कैसा कोरोना, आपने कहा भी कि जो लोग हेल्दी हैं उनको हो सकता है मेरे को अंदर हो, लेकिन मैं उसके साथ ज्यादा अच्छे से टैकल कर पा रही हूँ। तो यही चीजें हैं कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी, जिसकी है। तो अब इसके पीछे मैं नहीं जा रही हूँ दोबारा। तो दिस इज द थिंग। मैंने इसमें कुछ पॉइंट हिंदी के लिए भी रखे थे कि करूंगी, लेकिन होते होते कि हमने ये माना कि इसमें हमारे बहुत सारे लोग थे व्यस्त, सबको कोरोना पीरियड में किसने संभाला? कोई ना कोई छोटे, कोई ना कोई रिक्रिएशन गेम बनते चले गए और लोग खेलते चले गए। बहुत वीडियो आए, कोई बच्चा किधर जंप करके किधर कर रहा है, कोई छोटे बच्चे कर रहे हैं, बड़े लोग कर रहे हैं, और ये सब स्पेशली अर्ली 3 मंथ्स में जो रहा। अभी तो ये हम लोग के अंदर प्रेरणा भी देके गया है कि हमें प्रतिरोधात्मक अपनी इम्यूनिटी क्षमता को अगर बढ़ा के रखना है तो हमें कहीं ना कहीं स्वस्थ रहना है। और इसके लिए खेल और एक्टिविटीज या केवल मेडल लेने के लिए नहीं थी, ये कहीं ना कहीं हमें हेल्दी रखने के लिए। तो इससे होगा क्या, हमारी अपनी हेल्थ रेट इंक्रीज होगी। हेल्थ रेट इंक्रीज होने के लिए सीधे फिजिकल एजुकेशन की तरफ लोगों का मुंह जाएगा। दूसरा, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगी, यानी हेल्थ सिस्टम की तरफ जाएगी। अब वहाँ हेल्थ सिस्टम में भी अगर हम कहीं पर अपना क्राइटेरिया ऐसा बना लेंगे कि केवल हॉस्पिटल, डॉक्टर्स और दवाइयों के लिए बजट का पूरा पैसा ना जाए, कहीं उससे पहले भी रुके। तीसरा, जब बीमार कम होंगे तो हम क्यों ना आर्थिक और अपनी जितनी भी हमारी इवन जितनी भी इमोशनल, आपकी सोशल या आपकी इकोनॉमिकल कंडीशंस इंप्रूव आप करेंगे, और उसके बाद हमारा जीडीपी भी बढ़ना नेचुरल है। इसके बाद हम क्या महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने इन जो हमारे फिजिकल एजुकेशन के एम्स ऑब्जेक्टिव्स थे उनको भी हम, और इवन एजुकेशन के एम ऑब्जेक्टिव्स को भी हम, क्योंकि एजुकेशन का एक बेस्ट एम जो मुझे लगता है, मैं तो एक ही एम मानती हूँ, सर्व बेस्ट, जहां हम अपना अच्छा दे सकें, वही एजुकेशन है। अदरवाइज हमारी एजुकेशन में कहीं ना कहीं कमी है अगर हम दाएं बाएं और चीटिंग और इन सब की चीजें सोचते हैं। और अब जो ये अवसर आ रहे हैं, तो बीइंग अ फिजिकल एजुकेशन पॉलिसी मेकर्स, हमें इन संसाधनों को अपने बढ़ाकर बहुत समझदारी से यूज भी करना होगा। हमारे जो डायरेक्टर्स बैठे हैं, हमारे जो वीसीज हैं या हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको भी ये चैलेंज लेकर एक बहुत गोल्डन चांस है कि हम अपने यहाँ स्पोर्ट्स कल्चर, स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन, इवन स्पोर्ट्स बिहेवियर की बात हम अब करेंगे। जब हमारे बिहेव में आ जाएगा तो अपने आप कल्चर, सारी चीजें बनती चली जाएंगी। और लास्टली, केवल युवा कहने से काम नहीं चलेगा, हेल्दी युवा होना चाहिए, फिट युवा होना चाहिए, जो कि बेटर फ्यूचर जनरेशन दे सके, अपने ओल्ड पीपल की अच्छे से केयर कर सके और दूसरों के लिए भी एग्जाम्पल सेट कर सके। तो चुनौतियां बढ़ेंगी तो संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे और हमारे अवसर भी बढ़ेंगे, संभावनाएं भी बढ़ेंगी। फिर वो जो मेडल की बात लोग करते हैं वो भी कहीं बहुत ज्यादा दूर नहीं रह जाएंगे। दिस इज माय लास्ट एंड द कंक्लूजन इज, योर पोजीशन, पावर, स्टेटस, एक्विजिशंस tend to lose, सब कुछ खत्म हो जाएगा if we are not blessed with energetic health. So it is our moral duty to keep them or our family to fit. So it is not an end. It is not an end. It is an starting. Thank you so much. Thank you very much, ma'am. निश्चित तौर पर विचारणीय वक्तव्य महोदय आपका. It was so very excellent. Ma'am, I have picked a question from the viewers, some of the viewers. बहुत संक्षेप में आप इसके बारे में थोड़ा सा बता दें व्यूअर्स की इच्छा के अनुरूप। मैम मुझे हाँ मैम, मैं क्वेश्चन में बता रही हूँ आपको कि मैम एट विद एल्डरली एज, जैसे आप अभी भी साइकिलिंग करती हैं और आप स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक्टिव रहती हैं, तो जो एल्डरली लोग होते हैं उनके लिए कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में क्या स्कोप है, लाइक हाउ वी कैन पार्टिसिपेट, थोड़ा इसके ऊपर संक्षेप में आप मुझे बता दें। इन आवर एज, in our yes ma'am. Oh great. Yes, yes, I also are waiting. Well, this is very good and क्योंकि कहीं ना कहीं ह्यूमन में कंपटीशन स्टार्टिंग से ही है,
इवन सर्वाइवल फिटेस्ट की बात हम करते हैं, यानी हम compete तो करते ही रहते हैं, लेकिन अगर हमें इस लेवल पे कंपटीशन मिलने लगता है, क्योंकि मास्टर्स की बात आप देख रहे हैं कि बहुत सारे गेम ने मास्टर्स अपने यहाँ स्टार्ट करा, बाहर भी जा रहे हैं लोग खेलने, इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि इसमें अभी हम लोग बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। केवल कुछ एजेंसी टाइप की चीजें एक मास्टर लेवल पे गेम ऑर्गेनाइज करा देती हैं और उस पर अपना पैसा लगा के लोग चले जाते हैं। तो मुझे लगता है ये चेंज होना चाहिए सिनेरियो। इसमें क्या होने लगे, अगर जो एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स या फेडरेशंस हैं, अगर वो मास्टर्स लेवल पर फेडरेशन के थ्रू स्पोर्ट्स होने लगे, कुछ ने स्टार्ट भी किया है, तो शायद आप ये समझ लीजिए ये गोल्डन एरा ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां कहीं फिनिशिंग नहीं है। फिर आप हर दिन आप अपने आप को बेटर टू बेटर करते चले जाएंगे। और लाइक वी पीपल, इवन पूनम यू आल्सो, आप भी अपने टाइम में बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हो, तो आपको और हमें जो कमी रह जाती है अपने आप, हम अपने बच्चों के मीडियम से वो पूरा करना चाहते हैं, लेकिन जब हम अपने बच्चों के सामने खुद करेंगे तो उनके लिए भी एग्जाम्पल होगा। एंड दैट वाज अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच। Thank you very much, ma'am. Indeed, very nice lecture, very nice interaction with you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. So, as our second last speaker, we have Dr. Shyam Narayan Singh ji with us. Sir, screen पे मुझे दिख पा रहे हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत और अभिनंदन इस वर्चुअल मंच पर। सर का एक संक्षिप्त में मैं सभी व्यूअर्स को परिचय करवा दूं। वो HOD हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एट सनातन धर्म पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, इंडिया में। He has vast experience as a physical educationist, academician, member of various sports councils across India, including chess, yoga, etc. He is president UP chapter of CAFE. More than this, the kind of work he has done for physical education as an academician is commendable. If ever a simple Hindi-speaking physical education student, sir, we have a physical education at a school, at a college, physical MA in physical education. And whenever my students, because most of them they are Hindi, from Hindi background, so whenever they need any sort of notes or whenever they want to prepare for their NET, JRF, or for any other examination, so सबसे बेस्ट चीज होती है एसएन सर का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वो बता दीजिए उनकी कितनी सारी किताबें। पर्सनली आई फील सर इट्स अ ग्रेट जॉब because the thing you do in Hindi, it's really a great contribution in physical education. I personally have seen we have YouTube, sir has YouTube channels, videos in simple languages. We have slide shares from you, sir. Slide share for e-learning content and his rich knowledge and understanding. It's commendable and it's great job, sir. And you are a constant source of motivation to us all. I welcome you one more time, sir. And now over to you for your presentation. Sir, please. Thank you, ma'am. Thank you once again for inviting me in this international webinar. For respected Director Higher Education, Dr. Vandana Sharma, and the convener, even the principal of this college, Professor Dinesh Chand ji, and respected by senior eminent speakers, just have listened the wonderful presentation by Professor Achana Chahalman. Even I have listened our seniors, Dr. Ruhal Saab, our boss. Really, it's a wonderful topic in this pandemic, contemporary global scenario in physical education, yoga and sports. Means शारीरिक शिक्षा, योग तथा खेलों में समकालीन वैश्विक परिदृश्य। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक शांति पाठ जरूर करना चाहूंगा इसमें स्टार्ट करने से पहले। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Because we are facing a pandemic of this COVID-19,
myself, Dr. Yasin Singh, Madam, Dr. Poonam Bhandari, Madam, has already given my introduction. I'm also a president of Uttar Pradesh chapter of Physical Education Foundation of India. This is joint organization with this Government Degree College Meerut and PAFI. My topic is the problem faced by the physical education teachers which are there doing their job in private schools. So I want to share my PPT. Okay. Difficulties or problems facing by private sector physical education teacher in this contemporary scenario. Because even I have conducted action research also. So I have collected data with respect to this qualitative and quantitative data. So I'll start from simple to complex. What type of problem they are facing, means our physical education teacher, those who are doing their jobs in private sectors. So COVID-19 has forced schools, colleges and universities across India and the world indeed to suspend physical classrooms and shift to online classes. आप देख रहे होंगे कि हम लोग फेस कर रहे हैं अभी, और बाकी विषय तो चल जाएगा। मैं आगे बताऊंगा कि now the risk of having physical contact or proximity with the students is associated with the transmission of the highly infectious virus COVID-19. अब देखेंगे आप कि पूरे भारत में प्रत्येक जिले के अंदर इसकी स्थिति बढ़ते जा रही है, और मतलब ये इस तरीके से मैं कहूँगा कि ऐसा राक्षस प्रवृत्ति का ये वायरस है, और अगर आप बाहर निकलेंगे तो कुछ पता नहीं है कब वो कीचड़ का एक बूंद आप में लग जाएगा। तो जिसने हमारे इस एजुकेशन रिलेटेड जो एरियाज हैं उसको ऐसा अफेक्टेड कर रखा है, while faculty grapple with new ways of managing this sudden transition to online education, students are left clinging on to their mobile phones and computer screen. अब देख रहे होंगे हर घर के, इवन आई एम एनसीसी ऑफिसर, स्थिति ये हो गई है कि घरों में किसी के पास मोबाइल नहीं है, अगर मोबाइल है तो नेटवर्क नहीं आ रहा है। मतलब बड़ी विकट स्थिति है जिसको हम जो टीचर्स हैं वो झेल रहे हैं, और उसमें भी फिजिकल एजुकेशन टीचर, क्योंकि आप देखेंगे वाकई में हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर जो प्राइवेट स्कूल्स में जॉब कर रहे हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, और एक ये बर्निंग टॉपिक है। अभी तक मैंने देखा कहीं भी किसी भी अखबार में इसके बारे में कुछ नहीं निकला है। उनकी स्थिति वाकई में बहुत दयनीय स्थिति है, जो जिनका परिवार उसी जॉब पे चल रहा था। सभी प्राइवेट स्कूल्स ने, मैं आगे का दिखाऊंगा कि जो मैंने डाटा कलेक्शन किया उसमें क्या है। मैंने रैंडमली 100 जो फिजिकल टीचर्स हैं उन पर मैंने कुछ छोटा सा एक्शन रिसर्च किया है। अब एक थोड़ा सा ये भाई शाहरुख फारूकी फ्रॉम न्यू दिल्ली, ऑनलाइन एजुकेशन फॉर टीचर्स का एडवांटेजेस और इनका डिसएडवांटेजेस इन्होंने बताए, जिसमें मैंने कुछ पॉइंट आउट किया है। इट अलाउज इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑनलाइन टूल्स। बिल्कुल ठीक है, इट्स ओके। इनोवेटिव मेथड्स of teaching with the help of technology and online tools है ये, बिल्कुल exactly. Allow reaching out to large number of students across geographies. मतलब एक जगह से क्लास चल रही है, कितने लोग भी देख सकते हैं।
बट एज फार एज फिजिकल एजुकेशन इज कंसर्न, वो यहाँ पर बहुत ही स्थिति, क्योंकि आवर एजुकेशन इज टोटली डिपेंड ऑन फिजिकल एक्टिविटीज, और एक चैलेंज है। हम जितने भी मेरे एमिनेंट स्पीकर्स भी जो बोल चुके हैं, और जितने भी हमारे पॉलिसी मेकर विद रिस्पेक्ट टू दिस फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेज, उनको सोचना पड़ेगा कि एक यही सब्जेक्ट है। मैं आगे और दिखाऊंगा आपको एक इंडोनेशिया के अंदर क्या न्यूज़ निकली थी, स्पेशली यूजफुल फॉर डिस्टेंस लर्निंग। बिल्कुल डिस्टेंस लर्निंग इसमें यूज हो रहा है। कुछ डिसएडवांटेज है, ऑनलाइन टीचिंग टेक्स टाइम्स एंड प्रैक्टिस, एग्जैक्टली देयर इज अ लिटिल कंसेंशन ऑन हाउ स्टूडेंट कैन बी इवैल्यूएटेड इन फेयर मैनर। कैसे इवोल्यूशन किया जाएगा स्टूडेंट्स का फेयर मैनर में, कहीं नहीं हो पा रहा। Inability to have a face-to-face connect with the students and facilitate free conversations, discussion, and mentoring, keen to undergo their face-to-face practicum one at school. This means that bodies are still missing. यहाँ भी body missing है यहाँ पर, even more than before. Online classes पर ये दिक्कत है जो हमें फेस कर रहे हैं। अब as far as physical education is concerned, it is education we deal with the physical activity. We already know about this, through which we have to develop overall development of an individual. डॉक्टर वुल साहब ने भी इस पे बोला, डॉक्टर राकेश तोमर जी ने भी इस पे बोला, काफी कुछ इसको इंटरलिंक किया गया। तो चाहे वो कॉग्निटिव, चाहे फिजिकल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, हमारा फिजिकल, मेंटल, सोशल डेवलपमेंट, सो ये एजुकेशन जो कि फिजिकल एक्टिविटीज पे बेस्ड है। आज की वर्तमान परिस्थिति के अंदर जब फिजिकल एक्टिविटीज ही नहीं हो रही है, मतलब बेस का मतलब नींव, वो नींव, मैं स्कूल की बात कर रहा हूं अभी मैं, क्योंकि लोग पर्सनली इंडिविजुअली तो कर रहे हैं। जब बात आ रही है कि स्कूल के अंदर फिजिकल एजुकेशन की, तो वहां थोड़ी सी यहाँ दिक्कत है। अब आगे देखेंगे। नाउ इन दिस कंटेम्पररी सिनेरियो during this COVID-19, there is a question mark on physical activity at schools and colleges. So it's a main challenge. ये challenge है बिल्कुल कि कैसे फिजिकल एजुकेशन आगे बढ़ेगा। देखेंगे फिजिकल एजुकेशन, द फॉरगॉटन सब्जेक्ट इन द टाइम ऑफ पैंडेमिक। ये इट्स अ ट्रुथ, स्थिति है। ये बाई रेनाटा मेलाटी पुत्री फ्रॉम इंडोनेशिया का एक आर्टिकल था, उसका मैंने शीर्षक उठाया सीधे कि फॉरगॉटन सब्जेक्ट इन द टाइम ऑफ पैंडेमिक। अब बात यह आती है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हमें करिकुलम, जो भी हमारी पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, दे हैव टू प्रिपेयर अ करिकुलम विद रिस्पेक्ट टू दिस पैंडेमिक सिचुएशन कि कैसे चलेगा। इवन yesterday I got a mail to check the evaluation of answer sheet PDF file, तो वो ठीक है, इट्स ओके, वो ऑनलाइन हो जाएगा। बट एज फार एज आवर फिजिकल एजुकेशन इज कंसर्न, फिजिकल एक्टिविटीज कहाँ, बिकॉज आवर सब्जेक्ट इज प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट। Now about private sector physical education teachers, मैंने अपने लेक्चर को बहुत शॉर्टकट किया है क्योंकि टाइम मैंने देख लिया, 3 बजे तक का टाइम था। तो an action research containing quantitative and qualitative data, 43 physical education teacher completed a questionnaire, एक सेल्फ मेड मैंने क्वेश्चनर बनाया, क्योंकि वाकई में स्थिति है, लोग बोल नहीं रहे हैं। आप किसी प्राइवेट फिजिकल एजुकेशन टीचर से अगर बात तो आप देखेंगे वाकई में कई लोग तो शर्म के कारण नहीं बोल पा रहे, कई लोग अपनी स्थिति नहीं बता पा रहे। और मैंने लगभग 57 टीचर्स का मैंने इंटरव्यू लिया। मैंने द रिजल्ट इंडिकेटेड दैट मेजर डिफिकल्टीज फेस्ड वर गैप ऑफ मंथ फ्रॉम जॉब मींस नो सैलरी, क्योंकि स्कूल्स कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है या जो मैनेजमेंट है, वो कहते हैं कि भाई हम तो ऑनलाइन बच्चों को खिलवा देंगे। तो उस फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को गैप दिया जा रहा है, मतलब कोई सैलरी नहीं,
नंबर सेकंड पॉइंट, लो सैलरी इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट टीचर्स, जो अन्य विषय के टीचर हैं उनसे सैलरी कम है। ये मैं इस हिंदुस्तान के प्रत्येक शहर की बात कर रहा हूं, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। और क्या उनको ड्यूटी लगाई जा रही है? ओवर टाइम ऑन सेम सैलरी, ओवर टाइम कराया जा रहा है। दूसरी क्या ड्यूटी? डू अ टेलीफोन कॉल और डू अ व्हाट्सएप फॉर डिमांडिंग फीस, क्योंकि आज की स्थिति में फीस का कलेक्शन स्कूल वालों के लिए एक बड़ा बड़ा हर्डल है। तो फिजिकल टीचर्स की ठीक है, इट्स ए वर्क फॉर अ कॉलेज, स्कूल और कॉलेज। दूसरी चीज, वर्क एज ए सिक्योरिटी गार्ड। जब देखा जा रहा है कि अगर किसी शिक्षक की स्थिति अच्छी नहीं है तो उसको एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब टू मच स्ट्रिक्ट विद रिस्पेक्ट टू जॉब। एक अगर टीचर से बात की जा रही है, जो प्राइवेट स्कूल टीचर है फिजिकल एजुकेशन का, वाकई में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है उस टीचर के ऊपर कि कब मुझे निकाल दिया जाएगा, कब मेरी सैलरी कम करी जाएगी। क्योंकि स्थिति मैं कह रहा हूँ ना, ऑलमोस्ट फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के साथ ज़्यादा है कुछ। अब आप देखेंगे कि एक तरफ पूरा हिंदुस्तान अपनी कार्डियो रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी को डेवलप करने में लगा हुआ है। कार्डियो रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी मींस इट्स एफिशिएंसी ऑफ हार्ट एंड लंग्स टू एफिशिएंटली एडजस्ट विद द एक्टिविटी और एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। अब थकान की स्थिति में भी अगर हमारे फेफड़े और हमारा हृदय अपना सामंजस्य एक क्रिया के साथ या अभ्यास का बना लेता है, तो एक तरफ तो हम वहां जा रहे हैं कि ऐसी एक्टिविटी की जाए जिसके अंदर कार्डियोवास्कुलर हमारा एंडोरेंस इंप्रूव हो, प्राणायाम कराया जा रहा है, और दूसरी तरफ एक ऐसी स्थिति फिजिकल टीचर के साथ जो कि देखा जाए साइंटिफिकली डील वो इस चीज को वही कर सकता है। तो बी ए प्रेसिडेंट ऑफ पैफी उत्तर प्रदेश, मैंने एक सर्वे सा किया है और मैं यहाँ पर एक छोटी सी कहानी और बताना चाहूँगा कि है क्या कि दूसरे सब्जेक्ट्स दोज वर गुड इन बायोलॉजी, मैनेजमेंट उनको कह रही है कि आप पढ़ाइए फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि थ्योरेटिकल पढ़ाना है, प्रैक्टिकल अप्रोच बंदी हो रखा है। तो मैं यहाँ कुछ कहानी के रूप बता रहा हूँ मैं कि एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल के बाहर एक चाय की दुकान थी और चाय की दुकान में 3-4 डॉक्टर्स, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स बैठे हुए थे और उनके सामने से एक लंगड़ता हुआ एक व्यक्ति जा रहा था। तो उनमें से एक डॉक्टर बोलता है कि शायद इसके एंकल में चोट लग गई है, एंकल में जो टखना बोलते हैं हम। दूसरा बोलता नहीं नहीं नहीं, इसके कहीं शिन पेन हो रहा है, जो हमारी टिबिया बोन है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है इसको। तीसरा बोलता ना ना ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि नी की इंजरी है इसको, घुटने में कहीं चोट लगी। मतलब सब बैठ के ही सोच रहे हैं, अब बता रहे हैं वहां पर। तो जो चाय वाला था बोला डॉक्टर साहब लोग आप क्यों एजम्पशन क्यों लगा रहे हैं बैठे बैठे, ये सामने से तो जा रहा है आपके, आप उसको बुला के पूछ लीजिए ना भाई तेरे को दिक्कत क्या है। तो उसको बुलाया चाय वाले ने पूछा कि भाई ये डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि तेरा टखने में चोट लगी, एंकल में चोट लगी, ये कह रहे हैं आपके ये सामने की जो हड्डी है शिन बोन उसमें चोट लग गई, तीसरे साहब कह रहे हैं कि तुम्हारे घुटने में चोट लग गई है, भाई आप बता दो आपको कहाँ चोट लगी हुई है। तो वो छूटते ही एक बात बोलता है कि चाहे टखना, चाहे घुटना, चाहे एंकल, जो हमारे सामने की हड्डी है, ये इनके बाप की टूट जाए, मेरे तो चप्पल टूटी हुई थी इसलिए मैं लंगड़ के चल रहा था। तो सोचिए, मतलब जो मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बैठे बैठे सोच रहा है कि कैसे मैं करा सकता हूं इसको, जबकि ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ हमें अपडेशन करना पड़ेगा अपने करिकुलम के अंदर। इवन मैंने जैसा बताया कि
हमारी एनसीसी क्लासेस भी चल रही हैं, उसके अंदर बहुत अपग्रेडेशन किया जा रहा है कि कैसे फिजिकली क्लास कराई जाए, क्योंकि वहां पर भी सेम वही फिजिकल कंडीशंस आ रही हैं, यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटीज आ रही हैं। तो कंक्लूजन मेरा है, ड्यू टू द कोविड-19 private physical education teachers are being marginalized from their workplaces, particularly private schools, due to the limitation of the effectiveness of their teaching delivery during the pandemic. क्योंकि वहां पर तो फिजिकल एक्टिविटी करानी है, they are either being reassigned at the school, सिक्योरिटी फोर्स में लगा दिया, और कंप्लीटली डिस्मिस विद ऑफ स्कूल जॉब्स, और सैलरी कम कर दी। तो एक तरफ फिर वही चीज, भारत सरकार इस पहल की तरफ बढ़ रही है, कैसे भी व्यक्ति को हाइपोकाइनेटिक ना बनने दिया जाए। फिट इंडिया मूवमेंट आपने देखा होगा, अभी फ्रीडम रन फिट इंडिया मूवमेंट एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई गई। तो वही एज ए फिजिकल एजुकेशनल एक्सपर्ट्स को हमें सोचना पड़ेगा कि क्या किया जाए, कि इनका करिकुलम किस प्रकार से तैयार किया जाए कि ये जो हम परेशानियां, जो डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स फेस कर रहे हैं जो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर हैं, वो इससे बच सकें और वो इंडल्ज हो जाएं, कि जिससे कि जिस तरीके से पहले इस पैंडेमिक सेशन से पहले हमारी एक्टिविटीज़ फिजिकल एजुकेशन की जुड़ी जो थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल क्लासेस चल रही थी वो चल सके। तो मैं, क्योंकि टाइम की बाध्यता, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मैंने एक जो छोटा सा सर्वे किया उसमें देखा, और रेंडमली मैंने 100 फिजिकल एजुकेशन टीचर से बात करी, क्योंकि सबके फ़ोन नंबर्स हैं, वो भी ऑनलाइन ही हुआ, लगभग इंटरव्यूज़ हुए। उसमें देखा मेरे सामने कि ये स्थितियां आ रखी हैं, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई, कोई भी एक फिजिकल एजुकेशन टीचर ऐसा नहीं बचा कि जिसके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सो थैंक यू वेरी मच। If you are having any question, you can ask. Yes, sir. Thank you very much, sir. बेहद सार गर्भित उद्बोधन आपका रहा, and specifically poor conditions and the conditions of physical education teachers at private sector you raised. Sir, what do you think? Who has the accountability? जो एक condition है हमारे जो physical शारीरिक शिक्षक हैं, especially in the private sector, इनकी जो एक condition है, क्योंकि हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि pandemic में तो everybody is talking about being fit and being physically fitness की बात हो रही है, immunity की बात हो रही है, योग की बात हो रही है, और एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि शारीरिक शिक्षकों के लिए तो बहुत सारे न्यू एवेन्यूज खुल गए हैं, और दूसरी तरफ जो आपने पहलू हम सबके सामने रखा, इट्स रियली बहुत ज्यादा सोचनीय है और विचारणीय भी है। सर, आपको क्या लगता है कि who is accountable for who has the accountability for this condition and how this thing can be, and हो सकता है कि हम इसी प्रकार से जो हमारे जो शारीरिक शिक्षक जो दोस्त हैं हमारे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल में, इनको किस प्रकार से हम दूसरे कामों में लगाएं, दूसरी तरीके से किस तरह से अपना जीविका का अर्जन कर सकते हैं और अपनी कंडीशंस को और बेहतर बनाने में कामयाब हो सकते हैं। सर, what is your stake at this? Thank you for asking this question. मेरे दिमाग में चल रहा था कि ये प्रश्न जरूर आएगा, ऐसा प्रश्न आएगा, और मैं इसी पे वर्क भी कर रहा हूँ मैं, और क्योंकि मैं काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ, कि ये स्थिति वाकई में आपने देखा, मैंने इंडोनेशिया के अंदर दिखाया कि फॉरगटन सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन। तो मेन है जो हमारा करिकुलम है, क्योंकि ये स्थिति अभी नहीं लग रही कि रुक जाएगी, ये स्थिति जैसा चल रहा है ये लंबी चलेगी स्थिति, और लंबी चलेगी, कुछ पता नहीं आगे का कि कब तक चलेगी। तो हमें अपने करिकुलम के अंदर कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, और मैं बोला हूँ ड्रास्टिकली चेंज करना पड़ेगा हमें, तभी एक बच्चे को हम उस फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से फिजिकल एजुकेशन का ज्ञान देंगे हम, क्योंकि इन आवर फिजिकल एजुकेशन देयर आर सो मेनी interdisciplinary subjects are here, like exercise and sports physiology, biomechanics, health education, our nutritional science,
9 एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, तो कई विषय हैं। अब ये विषय सभी उस फिजिकल एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। मैं तो छोटा सा एग्जांपल लूंगा कि अगर एक खिलाड़ी को तैयार करना है हमें, सपोज आप देखते हैं कि इंडियन टीम जाती है खेलने के लिए बाहर, उनके संग एक साइकोलॉजिस्ट रहता है, मनोवैज्ञानिक रहता है साथ में, एक न्यूट्रिशनल साइंस का व्यक्ति उनके साथ रहता है, एक उनका डॉक्टर रहता है, हेल्थ से जुड़ा हुआ डॉक्टर रहता है, एक ट्रेनर रहता है। तो आप देखेंगे कि उस एक्टिविटी से जुड़ी हुई सभी चीज, इंटरडिसिप्लिनरी चीज वहां पर लगी हुई है। तो अब हमें इस प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर, जो कंटेम्पररी सिनेरियो हमारा चल रहा है, इसके अंदर हमें उस करिकुलम को ऐसा डिजाइन करना पड़ेगा, इसको सोचते हुए, क्योंकि एक ये विषय ऐसा है कि जिसके अंदर फिजिकल कांटेक्ट होना है, और उस फिजिकल कांटेक्ट को कैसे रोका जाए। कुछ मैंने पॉइंट्स तैयार किए हैं कि पहली बात कि अगर, क्योंकि जैसा लग रहा है कि स्कूल्स खुलेंगे, स्कूल्स खुलते हैं तो बच्चा जब स्कूल में आएगा तो वो क्या होगा, फिजिकल एजुकेशन के टर्नआउट में ही आएगा, जिसको यूनिफॉर्म चेंज करने की जरूरत ना पड़े। नंबर 1 चीज, कुछ काफी चीजें होंगी इसके अंदर, और स्टूडेंट आएगा कहाँ आएगा, वो स्पेस कौन सी जगह होगी, और उनके जो बिलोंगिंग्स होंगे वो उनको कहाँ छोड़ के जाएंगे आप, बच्चा कहाँ हाथ धोएगा। तो ये काफी कुछ ऐसी चीजें होंगी, क्योंकि सब जगह देख रहे होंगे आप, नीट का एग्जाम हो लिया, एनडीए का एग्जाम हो गया, अभी नेट का एग्जाम भी होने वाला है, बट उसमें वहां पर देखो आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है। तो कुछ हमें ऐसा करके, क्योंकि ये सब्जेक्ट उसी से जुड़ा हुआ है, और अगर देखेंगे, अगर हम इस पेंडेमिक, इस कोविड-19 से निजात पानी है, तो टू बिकम अ फिजिकली फिट, आपकी अपनी इम्यून पावर को डेवलप करना पड़ेगा, आपको एंटीऑक्सीडेंट अपने भोजन के अंदर डाइट्स में लेने पड़ेंगे, जिससे कि जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो कम हो जाए। तो ये चीज है, हमको मेन सीधी सीधी बात है, हमारा जो करिकुलम है वो इस तरीके से अब डिजाइन होना चाहिए, मेन इन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए, जिससे कि आगे हमारा फिजिकल एजुकेशन सुचारू रूप से चल सके। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, साधुवाद के पास में आप इतने सार्वजनिक उद्बोधन के लिए। और नाउ कमिंग क्लोज टू द कंक्लूडिंग पार्ट, and now we have Dr. Satel Singh with us for his presentation. With his presentation, very brief introduction about him. Assistant Professor, Saraswati Degree College, Hathras, Uttar Pradesh, India. He happens to be my classmate and my best friend. An excellent national level sports person and a scholar as well, with 5 books and 16 published research papers at his credit. He was awarded Best Teacher Award at the district level, and he's in NCC also. And during his NCC training, he was awarded with prestigious DG badge. But more than anything else, he is a great motivator. His association with his students and friends is far beyond being excellent. His constant guidance and accessibility for his students does not make him only just a good teacher, but a great human as well. A true physical educationist in all his capabilities. I one more time welcome you, Dr. Satel, and now over to you for your presentation. Dr. Satel. Thank you, Dr. Poonam, for a wonderful introduction. Before starting my presentation, I would like to extend my sincere thanks to Dr. Dinesh Chand, convener as well as principal of Shahid Mangal Pandey Government Girls PG College, Meerut, Dr. Lata Kumar Madam as a coordinator, and Dr. Poonam Bhandari as organizing secretary of this particular webinar, for inviting me as a speaker and sharing platform with my learned and intellectual seniors as well as juniors, with the collaboration of course, PAFI. I congratulate the organizers for organizing such a spectacular international webinar with registration of more than 900 participants from across the world and also all corners of our nation. So now coming back to my topic and my presentation, my topic is physical education and sports in present scenario. Could you see the presentation, Dr. Poonam? Hello? Sir. Could you see the Yes, presentation? yes. Okay. Ji.
So first I'll be sharing my presentation will be in three parts. First part will be the history and development of physical education and sports in India. Then the challenges of physical education and sports in India, and further I'll be giving some suggestions to improve upon. So let's see what is the journey, how our journey has started, the physical education and sports in India. Before independence, ex-army men were employed in schools and colleges as physical training instructors. But the organized scientific physical education came in India in 1920 when Mr. H.C. Buck founded the YMCA, Young Men's Christian Association College of Physical Education at Madras. So ex-army men were replaced by physical education teachers then. Later, to make indigenous activities attractive, HVP Hanuman Vyayam Prasarak Mandal at Amravati was founded. Kabaddi, Kho-Kho, Lezium, Malkham type of activities were carried there. Then Christian College of Physical Education was established at Lucknow in 1932. There the events were athletics, swimming, basketball and all sort of ball games. They offered diploma and certificate courses in physical education. Later, Government College of Physical Education at Hyderabad in 1931 was established, whose first principal was Mr. Fred Vellure. Here also it offered diploma and certificate course in physical education. Then Training Institute for Physical Education, Kandivali, Mumbai was established in 1938. It was just like YMCA, on the pattern of YMCA, whose first principal was Professor P.M. Joseph. Then in our Uttar Pradesh, Government Training College of Physical Education was established at Rampur in 1945. It was only for boys earlier. Then Government Girls Training College of Physical Education was established at Allahabad in 1955, where 50 seats were for men and 25 seats were for women. Then physical education after independence. After independence, we had many committees and schemes regarding physical education and sports. Some of them I have just quoted in my presentation. One was Tara Chand Committee in 1948. It was the first central government physical education committee, which made several recommendations for physical education, sports, as well as recreation. As a result, in our curriculum, there is a subject physical education in the school level. Then Central Advisory Board of Physical Education and Recreation was established in 1950. It gives advice to the government regarding development of physical education, and as a result, in 1951, first Asian Games were held at New Delhi. After Asian Games, it was felt that coaching is a very important part in the sports. And before Asian Games, our Indian coaches were not properly undergone through a scientific training. Only the previous or the national players or international players of our country were giving the coaching. So Rajkumari Sports Coaching Scheme, it was established in 1953. Name was kept after Health Minister Rajkumari. After Asian Games, coaching of players were felt seriously, so this coaching institute was, this scheme was started. Then All India Council of Sports was established in 1954. It acted link between government and national federations, offered financial assistance to other federations also. Under AICS, state and district federations were formed. Then came LCPE, Lakshmibai College of Physical Education, which was established in 1957 at Gwalior, which offered 3-year bachelor's degree, BP, and 2 years of master's degree as Master of Physical Education. Later, college got the recognition of national level and name changed to Lakshmibai National College of Physical Education. MPhil and PhD was also started here. In 1995, it got the status of deemed university and named Lakshmibai National Institute of Physical Education. The National Physical Fitness Program was also started in 1959. It was established by Central Education Ministry. Aim was to involve general people to participate in sports and fitness program, but I think it was not functionally carried on properly. Then Kaul and Kapoor Committee was established in 1960.
Its aim was to evaluate the performance of India in Rome Olympics in 1960. After Olympics, they took the surveys on the developing countries about their physical education programs, sports, and the facilities and the infrastructures also. Then they gave some suggestions to our government. Then here are some of the suggestions which was given by Kaul and Kapoor committee. Physical education should also be taught as other subjects in schools and colleges. Then in every institute there must be a department of physical education. Sports club must be established in all over India. Sports scholarship should be given to the sports person, and reorganized of all the committees of sportswear should be done. Later on, Netaji Subhash National Institute of Sports at Patiala, 1961, it was established, and its aim was to prepare high standard coach. Later on, in 1982, Sports Authority of India was formed, and NIS was established at Bangalore, Kolkata, and Gandhinagar also. SAI is the highest authority of sports today also. Its headquarters at Nehru Stadium, New Delhi. By seeing history, we came to know about various committees and schemes for physical education sports. But work is more on papers and not functionally implemented, I feel. As a result, we lag behind still today. Now let us see some of the challenges of physical education and sports in present scenario. First, the challenge is nomenclature. Nomenclature is physical training instructor still exists in school as well as in college. So-called famous word is called PTI. They don't call physical training instructor also, they just call PTI. Physical training instructor was actually designation was given to the ex-army people before independence, and their work was not to teach anything. Their work was to carry on the military drills and parade type of activities and mass demonstrations. But the nomenclature still exists in schools, and you will be surprised to know it is also in college. I have been working in Rajasthan for last 8 years there, and my designation was also PTI there. Though I was getting the UGC scale, but the designation was PTI, and I came to know it is still remains in today's scenario also. It is same physical training instructors exist. So now UGC has given the guidelines, has given the scale also, assistant professor, associate professor, and professor. But the state government, they have not yet changed the nomenclature of it. Other challenges: sports performance are considered as physical education teachers in many institutes. Only performance, if a player has performed well, he is considered to be physical education teacher. They think that they can also teach all the subjects of physical education. Then goal of education cannot be accomplished by physical education, people think, and still they feel like this. Physical education does not have same academic prestige and importance as other subjects. We are still lacking behind, and we have to prove ourselves that we are also equivalent to other subjects. Physical education, anyone can teach physical education, and it does not require any professional training. This is what people think about us. And physical education subject is not considered to be a subject which could be included for IAS and PCS exam. Dr. Poonam will ask this question to Dr. Ruhul sir also about regarding this. Though our PM and sports minister all talk about the importance of physical education and sports, but even in new education policy 2020, this subject is not at all considered relevant to be included for IAS and PCS level exams. Though the students of physical education has proved to be an excellent leaders and administrators in defense, education, corporates, etc., but still we have to prove ourselves equivalent to other subjects. Then some universities have started physical education as a compulsory subject to be passed in graduation level, but without any practicals. They think that only the theory part is sufficient for them. They just have to pass the exam. No need to take any practicals for this. And some universities have started physical education as an elective subject at graduation level,
but not at PG level. This is a big lacuna. The people, the students, why they will come to take physical education as an elective subject? Even if they are taking the subject at the graduation level, then what about the PG level? They have to leave, they have to be only up to the graduation level, because in the master's degree, they don't have physical education as subject. I think only few universities they are offering at the level of master's degree. I think CCS University is one of them. But in general, when we see in our university, at Agra University, we don't have physical education at PG level. So students have to be only graduate, at the graduate level, they have to satisfy themselves. Then let's see what is the scene for the BP courses. The BP course is of 4 years at LNIP, and 3 years also it is running simultaneously. But the condition is, a person who is going for the 3 years BP course, they have to go for 2-year BPEd course also. Now see the fun in this. After studying 3 years bachelor of degree, the syllabus of 3 years bachelor degree, if you will just go through that, it is more than the 2 years BPEd course, which is mandatory for them to be done. Now I don't know who makes the policy about this, that after studying 3-year BP, again you have to go for the 2-year BP, and the same syllabus you have to read. So there is I don't understand who has made this policy. Then what about the performance of India in Olympics? It is still a great challenge for us. Now see the data, we have only 28 medals in our credit, whereas Michael Phelps of USA alone has a credit of 28 medals alone. Then we have no plans at root level to prepare athletes and players for Olympics. This is one of the challenge. We want medals. We expect so many medals at international levels, but at the root level, we don't have any such program for which our country have planned something for that. Then one of the challenges is placement. Placement of sports person is not at all satisfactory in our nation. Even after getting medals for the nation at international level, what placement they are getting? They are hardly getting a third grade officer or B grade officer. Nobody is considering them to be fit for first grade officer. So these are the challenges of physical education. We have to work upon it. Now, after some challenges, I would like to give some suggestions which to improve physical education and sports in present scenario. The first and the foremost is the nomenclature of physical training instructor should be changed. Now, how it can be changed is the CBSE and the ICS board and the state board or state government, they should give in writing to all the schools and also in the colleges level, university level, it should be mentioned that the nomenclature of physical training instructor, what is the definition of physical training instructor, and what is the definition of physical training, physical education teacher. So they should be compelled that they should improve upon, they should change the nomenclature of the post. Then research in the field of physical education and sports should be encouraged more. This is one of the lacuna. Now research, we talk a lot about the research in the field of physical education, but who will go for the research? Only at the university level, the teachers, they can go for the research. And what about the people, the teachers like us who are serving in colleges? We are not having this subject at the master's level. So how can we undergo for the research? How can we improve the research? We can only teach them till the graduation level. It is not at all in the master's degree. So when in the previous slides, I have also chalked out that it should be brought up to the master's degree, like other subject. Then physical education subject should be given equal importance as other subject. Once this importance has been given, equal importance has been given like other subjects, then that will justify our dignity.
that yes, the students also, they will also consider us, yes, this subject is also as relevant as other subjects. The physical education should be included at PG level, like MA, MCon and MSc also. I strongly recommend this. Then other recommendation is physical education subject should be included in PCS and IS exam like other subjects. Then only we can say that yes, we are equivalent to other subjects, because the IS people and the PCS people, they are actually the policy makers of our India. And once they have made a concept about the physical education, that physical education is a secondary subject, type of subject. Last speaker has said that it's a co-curricular type of subject, then they will not understand the importance of it. Our sir from PAFI, he have very rightly quoted that चप्पल टूटी हुई है and they are judging कि उसके पैर में चोट लग रही होगी. They are sitting in the office and making the decisions. It is just like that. And the next point is unified syllabus should be followed globally. I am using the word globally, and not only in India, but globally in the worldwide it should be followed. Unified syllabus. Then of course the recruitment of teachers in institute should be according to the strength of the student. You all must have experienced that in a big school only 1 or 2 physical education teachers are there. I don't know what sort of work they have been given. They are called as discipline in charge also, and I don't know what all things are being given to all the teachers. Whereas there are 4 to 5 maths teachers, science teachers, but only 1 or 2 physical education teachers have been employed there. So the recruitment of teachers in institute should be according to the strength of the students. Then the very important part is every sports and game should be given equal importance. Like one speaker, I forgot who just quoted about it. I think Tomar sir, he quoted about it that VCI's budget, when we compare to our Indians' budget, is far more than the Indian budget. So that means our India is more focused on cricket, whereas our national game is not cricket. And it is, I am very surprised to know in the newspaper I have learned about one survey, that one survey was taken into the school. When the students were asked about the national game, they were giving the answer. More than 70% of students, they gave the answer as cricket, not as hockey. So because it is more popular than hockey. So these are some of the suggestions. It is purely my personal suggestions, which I want it should be implemented for the development of physical education and sports. There must be proper plan at root level to prepare athletes and players for Olympic and other international levels, international events. Proper plan at root level, when I say, means from the age of 5 to 6 or 7 years of age, the student should be planned that we should identify the talent, that in which type of activity particular person he can do well in future if trained properly. So this type of planning we should do at the grassroots level. Then medalists who are international level, medalists should get placement at class 1 officer in different departments. Or say the medalist, if depend upon the performance, if he is getting medal at the Olympic level, then we can understand what sort of training he has undergone. And after getting the medal at Olympic level, still he is not placed as class 1 officer. This does not justify his talent. So medalists at international level should be get placement as class 1 officer. These are my suggestions, and there could be many more suggestions in this, but time is limited, so I am limiting my presentation here. Thank you, Dr. Poonam. You can ask me question if any. Thank you, Dr. Sudhin. Very informative presentation we had with you. There is a viewer of one of viewers of ours, Dr. Ravi Budoria, and he just want to know, sir, what do you mean by unified global syllabi of physical education
how will it fit in our system? Okay. Now, I would like to quote one example in the what way we can globalize the curriculum of physical education. At the world level, we are having federations of all the games. Okay. Suppose example, football federation is there. So I just want to know that worldwide, is there any changes in the rule regulations of playing football? No. It's a set of rules and regulation which have been formed, which have been reformed and formed, and all the countries, they follow the same rules and regulations of that game. So why not for the physical education such type of association or one committee or can be made like this? They should frame the curriculum in such a way, taking into the consideration of all the countries, and they should frame one unified curriculum of physical education and sports, which should be followed by everyone. It will be justified. Okay, thank you very much, Dr. Sudhin. Thank you one more time. Thank you, Dr. Hello. Poonam. Hello. Now the source of inspiration Dr. and motivation. Poonam. Okay, sir, welcome back. Sorry sorry to disturb you. Sorry. अभी जो बात कर रहे थे, मैं बीच बीच में सुन रहा था। यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे काम खत्म किया है। तो अभी जो एक बात कर रहे हैं ना, ग्लोबल करिकुलम की बात कर रहे थे। ये जो हम बात करते हैं करिकुलम की या एजुकेशन की, एजुकेशन हमारे देश में कंकरेंट लिस्ट में है और वो स्टेट जुरिडिक्शंस के अंदर आता है। और हम सिलेबस जो है हमारे, वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर करते हैं। हमारे पास यूनिफाइड सिस्टम तो हमारे पास यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी नहीं है, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट, वो हमारे स्टेट के जुरिडिक्शंस में आता है। मेरा यहाँ पे उसी के साथ एडिशन ये है कि अगर हम उसको स्टेट वाइज कम से कम यूनिफाइड करें, एक सिंपल करिकुलम करें, हम उसको ग्लोबल नहीं कर सकते। जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया फेडरेशन का, फुटबॉल का, फुटबॉल या कोई भी स्पोर्ट्स हमारा इंटरनेशनल बॉडी के थ्रू चलता है, लेकिन एजुकेशन एकेडमिक जो साइड है वो हमारी किसी भी इंटरनेशनल बॉडी के अंदर नहीं आती है। हम इवन नेशनल बॉडी के अंदर भी नहीं आते हैं। हमारा जो स्टेट जुरिडिक्शंस के अंदर आता है तो हमको स्टेट के नॉर्म्स भी फॉलो करने पड़ेंगे। और दूसरी चीज़, हम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो डिफर की बात कर रहे हैं, हमको वहाँ की जो रीजनल जो कल्चर है या रीजनल लैंग्वेजेस हैं या रीजनल स्पोर्ट्स हैं, उनको भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अपने करिकुलम के अंदर। तो उसको यूनिफाइड हम किस बेस पे कर पाएंगे, कैसे बेस पे कर पाएंगे, वो थोड़ा सा मेरे को क्लियर नहीं हो रहा है। सत्येंद्र जी थोड़ा सा सर मैं जोड़ना चाहूंगा। हम एक बेसिक स्ट्रक्चर को यूनिफाइड कर सकते हैं और उसके साथ वी कैन ऐड अपॉन कि आप अपने लोकल चीज को उसमें वी कैन ऐड अपॉन इट। जैसे इंडियन कंडीशंस के हिसाब से वी कैन ऐड अपॉन इट। जैसे कि गेम्स, हम लोग और गेम्स भी आपने देखा है तो दे हैव इम्प्रोवाइज देयर गेम। जैसे बास्केटबॉल का दे हैव इम्प्रोवाइज नेटबॉल आल्सो। तो वी कैन इम्प्रोवाइज अकॉर्डिंग टू अवर स्टेट या हमारा जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, हमारे जो इंडिजिनियस एक्टिविटीज है, वी कैन ऐड अपॉन इट लाइक दिस। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक करिकुलम हमारा एक सिंगल होना चाहिए, यूनिफाइड होना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ बायोमैकेनिक्स जो है, वी आर स्टडिंग बायोमैकेनिक्स एट द मास्टर्स डिग्री, whereas foreign country I have come to know that in the bachelor's first year they are having biomechanics and kinesiology type of subjects. तो इस तरह से थोड़ा सा जो है होना चाहिए। मैं जो बात कर लूँ, मैंने भी कई फॉरेन स्टडीज के मैंने करिकुलम्स को देखा है और चेक किया है। जो हम बात कर रहे हैं वहाँ पर तो क्या है, वहाँ पर डिग्रियाँ भी मास्टर्स इन किनेसियोलॉजी है या मास्टर्स इन बायोमैकेनिक्स है या मास्टर्स ऑफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी है, वो सिंगल सब्जेक्ट की मास्टर्स हैं। इस तरह से नहीं है जिस तरह से हमारे यहाँ हो रहा है। जो हमारे यहाँ के नोमेनक्लेचर्स हैं वो सिंगल नोमेनक्लेचर दे दिया और उसी के अंदर हमारे सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो हमको अपने कंट्री के बारे में सोचना पड़ेगा कि उसके लिए फिर हमको जॉब प्रोस्पेक्ट्स भी देखने पड़ेंगे। तो हमको ये उस तरह से बातें करनी पड़ेंगी कि हम हमारे उसके लिए वो जो प्रोडक्ट आएगा वो जाएगा कहाँ। अभी देश में एक कल्चर आया है रिसेंटली कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टार्ट करी है, अभी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी। तो वो यूनिवर्सिटीज के अंदर में कोर्सेज कौन से रन कर रहे हैं? दे आर रनिंग फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज।
मैं यहाँ ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारा यूनिवर्सिटी खोलने का, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने का या फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी खोलने का क्या पर्पज है? LNIP में और नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में क्या डिफरेंस है? कोर्सेज क्या डिफरेंस है उसमें, दोनों में? हमारा वहाँ स्पोर्ट्स कहाँ है? तो और दूसरी बात जो कह रहे हैं कि हमें MA, MCOM और MSc 3 कोर्स आपने मास्टर्स डिग्री के जो कोर्स किए, उनमें फिजिकल एजुकेशन किस तरह से हम इन्वॉल्व कर सकते हैं? मास्टर डिग्री अगर हम करना चाहेंगे तो वेदर इट विल बी इन साइंस स्ट्रीम और इट विल बी इन आर्ट्स स्ट्रीम और इट विल बी इन कॉमर्स स्ट्रीम, वो फैकल्टी अलग हो गई। तो फैकल्टी के हिसाब से हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा सब्जेक्ट किस फैकल्टी में जाएगा। कहीं पर ये चल रहा है आर्ट्स फैकल्टी में, कहीं पे चल रहा है ये साइंस फैकल्टी में, कहीं पे चल रहा है ये आपका एजुकेशन फैकल्टी में। तो अलग अलग जो कोर्सेज के नाम आ रहे हैं, उन कोर्सेज को हम पहले अपने घर को तो सुधारें, हम नेशनल की इंटरनेशनल पे तो दब जाएंगे। हम ही नहीं कर रहे कुछ। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर भी पूनम जी को मालूम है, इन्हीं के कॉलेज में MA चल रहा है। पूनम जी इज रनिंग MA इन फिजिकल एजुकेशन। आप MSc की भी बात कर रहे हैं, आप MCOM की भी बात कर रहे हैं, कितना ये फिजिबल होगा? हम कहीं तो लाइन खींचे अपनी। प्लीज मेरा ये इतना सा सबमिशन है कि हम एक लाइन दें लोगों को। हमारा ये जिम्मेदारी बनती है कि हम कंक्रीट करें और इन चीजों पे हम थोड़ा सा फोकस करें कि हम फैलाएं नहीं सब चीज को। IAS IPS के जो UPSC में आज तक हमारा सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं हुआ, वो इसीलिए हुआ कि हमारे सब्जेक्ट की आइडेंटिटी ही नहीं है। कैसे वो UGC नेट की लिस्ट में आया मेरे को नहीं मालूम, पर UGC की नेट में भी वो लिस्ट में काफी बाद में आया। हालांकि आज वो नेट हो रहा है उसमें फिजिकल एजुकेशन में। लेकिन उस जैसा राकेश जी ने भी कहा था कि हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है, एक ही आदमी वही फिजिकल एजुकेशन करा रहा है, वही स्पोर्ट्स करा रहा है, वही क्लासरूम टीचिंग कर रहा है, वही प्रैक्टिकल करा रहा है, वही कॉलेज की टीम बना रहा है। तो हमको स्पेशलाइज रूप में, हम जैसे अभी नई पॉलिसी आई थी, मैंने कहा था हम लोगों की ये जिम्मेदारी बढ़ गई है कि हमको जो अब करिकुलम आगे डेवलप करना है उस तरह से करना है कि उसमें स्पेशलाइजेशन आना चाहिए। स्पेशलाइजेशन हर फील्ड में आ चुका है, माइक्रो स्पेशलाइजेशन आ गए हैं। तो हमको फिजिकल एजुकेशन का स्पेशलाइजेशन अलग रखना है, हमको खिचड़ी नहीं बनानी। हमको PG में भी, आपको नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम कितने आप लोगों ने कितने पेपर पढ़े। मास्टर डिग्री में 16 पेपर मैंने पढ़े हैं। क्या मतलब है मास्टर डिग्री में 16 पेपर पढ़ने का? मतलब whereas in other arts faculty only one subject, history, political science, sociology, economics। आर्ट्स फैकल्टी के अंदर लैंग्वेजेस में भी अलग अलग लैंग्वेजेस के अलग, हमने लैंग्वेज भी पढ़ी है, हमने दूसरे कोर्सेज भी पढ़े, हमने सोशियोलॉजी भी पढ़ी, हमने साइकोलॉजी भी पढ़ी, हमने बायोमैकेनिक्स भी पढ़ी, हमने फिजियोलॉजी भी पढ़ी। हमने क्या पढ़ा है, क्या आता है हमको? तो मेरा ये कहना है, मैं इसलिए झाझरिया जी से भी बात कर रहा था कि फिजिकल एजुकेशन LNIP से शुरू होता है और वहाँ LNIP जाकर खत्म हो जाता है। उनका रोल ज्यादा अहम प्ले करेगा अभी इस नई पॉलिसी के अंदर। आज जो हम फ्रेम करके करिकुलम देंगे वही करिकुलम आने वाले 40 साल और चलेगा। फिर 2040 तक का प्रोजेक्ट है ये MEP। तो मेरा ये सबमिशन है कि हम इस तरह से लोगों को ना भटकाएं, हम उनको एक कंक्रीट लाइन दें जिससे कि आगे आने वाले जो जनरेशन है उसके लिए एक कंक्रीट करिकुलम आए। थैंक यू वेरी मच। मैंने कुछ ज्यादा बोला हो तो आई एम सॉरी। Dr. Poonam, Yes, ma'am. Go ahead. Dr. Poonam, I want to say something. Yes, ma'am. First of all, जी Dr. मैडम अर्चना जी नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर सत्येंद्र जी वेरी गुड, आपने कम से कम कुछ चीजों को अपने स्टाइल में कहने की वो करा, आपने प्लेटफॉर्म लिया उसके लिए। और दिस द राइट प्लेस तो मैं नहीं कह पाऊंगी क्योंकि अपना टॉपिक कहीं और है, लेकिन क्योंकि जब ये उठाए तो आपने जो उठाया ये मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली चीज, क्योंकि बहुत ये भी सुंदर तरीके से उठाया इन्होंने, ठीक है। मैंने दूसरी उसमें चीज, एडिशन डाला। जी जी, दूसरी चीज आपने जो कुछ पॉइंट सबके मन में रहते थे, क्योंकि मैंने भी शायद वहीं पर कहीं छोड़ा था कि हम लोग कहीं पर भी एक नहीं है, हमारे PG भी डिफरेंट हैं। आपने IAS PCS वाली बात करी, आपने सबका बिल्कुल ठीक कहा,
आपने जो ग्लोबल वाली बात करी वो भी मोर और लेस सेट करके चीजें आती हैं, होती हैं, क्योंकि भाई पहले तो ग्लोबल बास्केट कोई सोचता ही नहीं था, आज ग्लोबल बास्केट तो सोच रहे हैं ना लोग। लेकिन जी, यहाँ जी। पर 3 चीजें जो सर ने भी कही, उनके साथ मैं अगर इसको कंक्लूड करना चाहूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कहीं ना कहीं जब आपने इसको एज अ सब्जेक्ट कंसीडर करा, तो सब्जेक्ट इस बच्चे का हक बनता है कि वो, मैं केवल बहुत कम शब्दों में कहना चाह रही हूँ, तो हो सकता है कुछ चीजें कम भी रह जाए, ठीक है। तो वहां पर आप देख रहे हैं जब आपने कंपलसरी सब्जेक्ट या ऑप्शनल पेपर के रूप में इसको ले आए ग्रेजुएशन लेवल पर, तो क्या ये बच्चे का हक नहीं है कि वो उससे रिलेटेड पीजी करे? इस बैकग्राउंड के साथ एमए या सब कुछ शुरू हुआ, और जो जी, पहले होता था बीच में जी। वो एमपीएड हुआ। दूसरी चीज, एनसीटी का रोल फिजिकल एजुकेशन के लिए क्या होना चाहिए था, वो आज तक क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर आज भी आप पॉलिसी को उठाकर देखेंगे तो वहां पर इंटीग्रेटेड 4 बीएड की बात, एमएड की बात करता है, और एनी अदर इक्विवेलेंट सब्जेक्ट की बात करता है, या अदर प्रिस्क्राइब्ड सब्जेक्ट। फिजिकल एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट एज ए कोर्स लिया ही नहीं जा रहा है, मतलब बोलने में, लिखने में है कि 8 नंबर पे वो है, 7 नंबर पे वो है। तीसरी चीज, जब हम अपने बच्चे को क्यों कन्फाइन करें कि एक एजुकेशन बैकग्राउंड का बच्चा एमए बीए ऑप्शनल पेपर पढ़ा, उसके पास 2 लाइन बन गई, वो बीएड जा सकता है, वो एमए कर सकता है, ठीक। हमारा बच्चा क्यों एमपीएड करे ओनली? अगर उसके बिल्कुल, पास बिल्कुल। जरूरत है, अपने सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करने का टाइम है। इसको जी, मैं जी। ऐसे नीट करती हूँ जहां पर मैं मतलब कोई सब्जेक्ट या कोई भी डिग्री खराब और बुरी नहीं है। मैंने सुबह ही बोला कि हमारी जरूरत है, ये तो हमें ही लड़ना है कि वन टाइप ऑफ कोर्स, वन नेशन, वन कोर्स, वन करिकुलम। और ये केवल फिजिकल एजुकेशन की बात नहीं है। अगर बच्चा केरला में पढ़ रहा है और उसको ट्रांसफर होता है या वो जाता है, तो वो कहीं पर भी ट्रांसफर हो, उसको, हाँ, उसमें एड ऑन कोर्सेज रहने चाहिए, बास्केट अप्रोच कोर्सेज रहने चाहिए, जो उस रीजनल क्वालिटी को डेवलप करते हुए उसमें आए, ठीक है ना। ये भी सब लोग जानते हैं, इसके ऊपर भी काम चल रहा है। लेकिन मैं यहाँ कुछ और ऐड करना चाहती हूँ जो ज्यादा मुझे जरूरी लग रहा था। मैम वीडियो अपना ऑन कर लेते मैडम। अच्छा, वो फिर वीडियो पे ज्यादा ध्यान जाता है। तो फिर मैं यहाँ ये भी ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा भाई, आगे जाके आपका यूट्यूब पे चलेगा, तो मैं ये कि आप खुद एक नहीं है, आप एमबीबीएस मींस एमबीबीएस, बीई मींस बी, बीटेक मींस बीटेक, उनके बिल्कुल, सिलेबस भी बिल्कुल। एक है ना, उनके सिलेबस भी एक नहीं है। तो हम तो सिलेबस से स्टार्ट करें और नीड पर जाएं। तो जब ये हम लोग, भाई आपको ये जो एजुकेशन पॉलिसी आई, ये तो 2018 में इसका ड्राफ्ट आया, आज भी ये ड्राफ्ट ही आया है। 31 अगस्त तक सबसे सजेशन मांगे गए, आप में से और हम में से कितने लोग सजेशन भेजते हैं? कोई भी हो वो, है ना। और उसके बाद एलएनआईपी के लिए जब ये बात आ रही है, तो नॉट एलएनआईपी, इट इज नॉट, क्योंकि एलएनआईपी के कितने लोग सिलेबस फ्रेमिंग में थे, आप जरा ये उठा के देखिए, एनसीटी में कितने लोग एलएनआईपी के थे। लास्ट एक मीटिंग हुई एनसीटी में, वहां पर भी मैंने ये चीज फील करी थी कि हमें ही अपने सब्जेक्ट को ये नहीं देखना है कि एलएनआईपी दे देगा तो अच्छा है, और सत्येंद्र का कॉलेज है, वो अगर एक कोई ड्राफ्ट देगा तो वो अच्छा नहीं दे सकेगा। यहाँ पर हर लेवल पर लोगों को मिलने की जरूरत है, जिसके लिए काउंसिल की जरूरत होनी चाहिए, जो कि अपनी चीजों को ज्यादा यूनिफॉर्म तरीके से, और जो ज्यादा अच्छा फिजिकल के लिए उसकी बात कर सकेगा। तो चाहे जब हमने 2018 की गाइडलाइन यूजीसी की सिलेक्शन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ते हैं, मैं उसको रीड आउट करती हूँ आपके सामने, उसमें साफ साफ यही लिखा है कि 55% के साथ पीजी होना चाहिए। देयर इज नो नेम ऑफ द डिग्री, एमए, एमपीएड, 1 ईयर, 2 ईयर, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि इतनी फ्रीडम आपको है अभी तक जैसे और कोर्सेज में, तो आप उसका बेनिफिट उठाते हुए, अभी एक एग्जाम्पल लोगों ने ले लिया कि स्पेशलाइजेशन बिल्कुल सही है, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, बट क्या वो कुछ ही जगह होना चाहिए? ये बहुत बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज आने जा रहा है कि एक जगह पर एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन शुरू हो गया, पोस्ट निकली, उसके लोग वहां पर जो पढ़ रहे हैं वो भरेंगे। इवन राजस्थान ने उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया, क्योंकि वहीं के लोग राजस्थान गए और उन्होंने इनकॉर्पोरेट करा दिया, बिल्कुल सही है। दूसरी जगह क्यों नहीं होना चाहिए? कल वहां का बच्चा पढ़ा हुआ, चाहे वो कहीं का भी, मेरठ का पढ़े, हरियाणा का पढ़े, बनारस का पढ़े, कहीं का भी, वो बच्चा तो वहां पर एडवर्टीजमेंट ही फिल नहीं कर पाएगा, जबकि उसके बाद नेट और एमपीएड सब होगा। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, आप अच्छे नहीं हो, हम दोनों बुरे हैं, लेकिन हमें फिजिकल की तरफ ताकना पड़ेगा। तो कोचिंग, और अभी तो लाइन हमारी स्पोर्ट्स और फिजिकल में डिफरेंस हम करने लगे हैं।
कोचिंग अलग वो हो सकता है, लेकिन फिजियोलॉजी और स्पोर्ट दोनों अलग नहीं हो सकते। कोचिंग और टीचिंग अलग हो सकती थी, ठीक। तो ये बहुत छोटा प्लेटफॉर्म रहेगा, बहुत छोटा सा बात रहेगी इस प्लेटफॉर्म पे कहने के लिए ये, क्योंकि टॉपिक ही नहीं है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं कंक्लूड करती हूँ कुछ क्वेश्चन मार्क्स के साथ। थैंक यू सो मच। और पूनम आप जल्दी ही दूसरा कॉन्फ्रेंस, पूनम आप जल्दी दूसरा कराओ इस टॉपिक पर। थैंक यू सो मच, क्योंकि वी आर गोइंग अवे। थैंक यू मैम। और इसी तरह की चर्चा विषयों की चर्चा हो सके, यही शायद एक पर्पज होता है इस तरह के वेबिनार को आयोजित करने का, सेमिनार को, पैनल डिस्कशन का, सिंपोजियम का। एकमात्र यही उद्देश्य होता है, हम सब यहाँ पे इसी चर्चा के लिए आए हैं। इन्हीं चर्चाओं से नए, आगे सर ने शुरू में बताया था ना कि मक्खन बनता है, यही सब आगे जाके इनकी विषयों की, इन टॉपिक्स की सुगंधी दूर दूर तक फैलेगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। बट टाइम कॉन्स्टेंट वो बहुत बड़ा इशू होता है। इट वॉज सो वेरी नाइस सेशन मैम, अगेन वेरी इंटरैक्टिव। और अब समय सीमा को हम ऑलरेडी उसको पार कर चुके हैं, और मेरे जो प्रिंसिपल सर हैं उनको बहुत ही एक उनका कमिटमेंट था, बट वेरी लॉट्स ऑफ पेशेंस ही इज सिटिंग विद अस। सो let me invite him for his presidential address. He is a source of inspiration and motivation behind this event. Let me call our respected principal sir, Professor Dr. Dinesh Chandji, for his presidential address. A very humble, dignified, religious gentleman, always wearing a warm smile. When I told him, sir, I wish to organize such an event, he was all yes about everything. जस्ट सिर्फ एक बात, हाँ गो हेड करो इस चीज को। तो इस तरह का मोटिवेशन फ्रॉम द हेड ऑफ द स्कूल ये बहुत कम देखने को मिलता है, एंड आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू माय प्रिंसिपल फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच सर। और अब मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय प्राचार्य महोदय। इससे पहले कि सर को मैं फिर से एक बार माहुचारी सर उनको आमंत्रित करूँ, उनके बारे में थोड़ी सी कुछ चीजें बता दूँ। उनका भी जो एक्सपीरियंस है, बिफोर बीइंग एन एकेडमिशियन, उनका जिस प्रकार का काम है वो भी बहुत वास्ट है। एक्सपीरियंस इज वेरी वेरीड, अलग अलग क्षेत्रों में। बिफोर ज्वाइनिंग हायर एजुकेशन इन उत्तर प्रदेश सर्विसेज को ज्वाइन करने से पहले he has served as bank branch manager for 3 years. 28 years of teaching experience है सर का, और 36 research published research papers at his credit. 7 research scholars को सर ने PhD में गाइड कर लिया है। सर आपका एक बार पुनः अभिनंदन, स्वागत इस वर्चुअल मंच पर। मैं आपको सादर आमंत्रित कर रही हूँ आपके अध्यक्षीय भाषण के लिए। सर प्लीज। सभी को today's international webinar organized by Shahid Mangal Pandey Government Girls PG College, Madhapur, Meerut. Dr. Vandana Sharma, Director of Higher Education, Prayagraj. Coordinator Dr. Lata Kumar, and very energetic Organizing Secretary Dr. Poonam Bhandari. इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी अतिथियों का विशेष रूप से जो हमारे ग्लोबली डॉक्टर राकेश तोमर जी हैं और डॉक्टर शेट्टी, उनका मैं साधुवाद और धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस वेबिनार को ज्वाइन किया और अपने वैल्यूएबल सजेशंस, अपने विचारों को हमसे साझा किया। जब इस टॉपिक का निर्धारण हो रहा था तो मैंने डॉक्टर पूनम भंडारी से कहा कि सर अनम्यूट कीजिए। यस, am I audible? यस सर। जी सर, जी सर। इससे बात हुई तो पूनम भंडारी ने कहा कि हाँ सर, आपका मिल गया है ये सजेशन और ये, तो मैं तैयार हो जाती हूँ। मैंने कहा इसका टॉपिक थोड़ा सा वजनदार बनाइए, थोड़ा सा इसको हैवी बनाइए। तो उन्होंने एक इस पर होमवर्क किया और एक अच्छा टॉपिक लाइन, कंटेम्परेरी ग्लोबल सिनेरियो इन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड योगा। मेरा यहाँ यही एक सबमिशन है। मैं स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स हूँ, कॉमर्स का विद्यार्थी रहा हूँ,
लेकिन आपका एक सब्जेक्ट जो फिजिकल एजुकेशन है वो तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग प्राइमरी एजुकेशन लेकर हाई एजुकेशन तक रहा है, और 29 साल का मेरा हाई एजुकेशन का एक्सपीरियंस हो रहा है। मैंने देखा है कि एजुकेशन की जो पर्सनालिटीज हैं वो अपने में यूनिक हैं। उनको अपने विषय पे तो पकड़ होती है, लेकिन अन्य विषयों में भी, क्योंकि उनके विषय में और विषय भी शामिल होते हैं। जो इस समय कोविड-19 का दौर रहा है, उसमें इस इंटरनेशनल वेबिनार का और भी महत्व हो जाता है। यदि हमें इस महामारी से, कोविड-19 से बाहर निकलना है, तो हमें अपने को चुस्त दुरुस्त रखना होगा। पता नहीं कैसे ऐसा हुआ होगा कि 2-3 साल पहले 2017 में खेलो इंडिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लाए। 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट उन्होंने रखा पूरे देश के सामने। पता नहीं उनको एहसास हो रहा था कि कुछ ऐसी स्थिति आएगी जिसमें हम 5-6 महीने 6-7 महीने के लिए बिल्कुल लॉक हो जाएंगे अपने घरों में। तो ऐसे इस फिजिकल एजुकेशन का और स्पोर्ट्स का, योगा का महत्व और अधिक हो जाता है, जिसमें हमारे सभी एमिनेंट स्पीकर्स ने अपनी बात रखी। उसमें विशेष रूप से हमारे सीसी यूनिवर्सिटी के रोहित साहब, हमारी पूरी फैकल्टी से, सभी से हमारे एक निवेदन पर वो हमारे महाविद्यालय में पधारते हैं। बहुत अच्छा लगा, उन्होंने अपना समय निकाला। वो रास्ते में भी थे, आगरा जा रहे थे, आगरा से लौट रहे थे, पता नहीं, लेकिन उन्होंने अपना समय निकाला। राकेश तोमर जी जो हैं, और उन्होंने हमारे देश की तुलना, भारतवर्ष की तुलना अन्य देशों से, श्रद्धेय राठौर जी ने भी तुलना की। वस्तुतः हमारा देश बहुत बड़ा देश है। हमारे एक बड़े शहर के बराबर देश है। क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन हो चुका है, उसमें यदि हम प्रॉपर न्यूट्रिशन की बात करें, प्रॉपर फिजिकल एजुकेशन की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, तो बेमानी होगा। लेकिन फिर भी एक हमारा प्रयास है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, नई एजुकेशन पॉलिसी जो NEP आई है, उसका ड्राफ्ट हमारे सामने आया है। उसमें हम प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हाई एजुकेशन तक इस फिजिकल एजुकेशन को एक उच्च स्थान दें। और ऐसा करिकुलम में हो भी गया है कि हम कंपल्सरी इसको पढ़ते हैं, उनको क्वालिफाई करना पड़ता है। तब वो उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते तब तक डिग्री भी नहीं मिलती। तो ये प्रयास नीति निर्धारक लोगों की तरफ से किया गया है। लेकिन फिर भी जब तक हम सभी जागरूक नहीं होंगे अपने हेल्थ के प्रति, और सनातन धर्म में तो योगा का मुख्य स्थान है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस योग को एक योग दिवस के रूप में इंटेंशनली इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर से इसको पहचान दिलाई। तभी हम इस मंच के माध्यम से इस विषय पर विस्तार रूप से विमर्श कर रहे हैं। और एक समय भी हो गया है, हम लोग 12 बजे से बैठे हैं और 4 बज रहे हैं। और गर्भित विचार आप सब लोगों के आए इस मंच पर। मैं शहीद मंगल पांडे गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी के बिहाफ पर आप सभी को, मैडम अर्चना चहल जी को, सत्येंद्र सिंह जी हैं जो दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, उनके विचार सुने मैंने। डॉक्टर SN सिंह साहब भी हमारे बड़े परिचित हैं। जब भी हमारा फिजिकल एजुकेशन का कोई इवेंट होता है कॉलेज में, तो वो उनके दर्शन होते हैं। तो सभी लोग बड़े, दो ही बात फेस टू फेस हुआ और बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसा मंच
इस ऐसे बर्निंग टॉपिक पर जो उस समय इस कोविड-19 के दौर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर हमारा ये वेबिनार आयोजित की गई। मैं डॉक्टर पूनम भंडारी को विशेष रूप से, डॉक्टर लता कुमार को विशेष रूप से साधुवाद दूंगा कि उन्होंने एक ऐसा मंच तैयार किया, इस पर विचार विमर्श हुआ। पूरी टीम को, जो ऑर्गेनाइज कमेटी के मेंबर्स हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो इस वेबिनार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को साधुवाद, धन्यवाद और अभिवादन। और इसी बात को यहीं मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा कि यदि जान है तो जहान है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी कहा कि यदि हम स्वस्थ हैं, आनंद से रहते हैं, तो और सब चीज़ें तो मिलती चली जाएंगी। ये जो जितनी भी हमारे करिकुलम में कुछ एडिंग होना है या कुछ हम लोग अभी अपडेट नहीं हो पा रहे हैं, कुछ हमें ऐसा कुछ करना है, ये सब कुछ हो जाएगा जब हम स्वस्थ रहेंगे। हम इस कोविड-19 की जो महामारी है, इससे बाहर निकलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी स्पीकर्स को धन्यवाद और साधुवाद। धन्यवाद। Thank you very much, sir. Now, so this way we come to the concluding part of this online event. Indeed, it went out very nicely. We got to listen to well-known speakers from physical education fraternity. Fruitful session, and definitely the views expressed and discussed would carry forward the very sole theme of the subject physical education and sports as a discipline across the world. I sincerely thank all the speakers for accepting my invitation and sparing their time for this event. It was a great pleasure to have you all here. I thank my principal for motivating me, and to do this, it was all his constant support. I thank my seniors and friends at the college, the organizing team, especially Dr. Lata Kumarji, Dr. Smarlata Kadam, Dr. Parul, Dr. Ranjan for their togetherness. I thank Dr. Amar Jyoti. I can see Dr. Vikas also here. Throughout, he was here, Dr. Avesh ji, for being with me today. Sincere gratitude to Dr. Soten, my friend, for his unconditional support and motivation. And last but not the least, I am deeply thankful to my son Aniket for all his technical expertise and support. God bless you, son. One more time, thank you one and all. Thank you very much.